चल रहा? मुझे लिंक शेयर कर दे हीरा के साथ, हीरा हर किसी का लिंक शेयर कर दो. हर किसी के साथ. पाकिस्तान अफगानिस्तान. नहीं भाई. Yes. No, we're not. Yes, we're here yes. to test. When you're about to get famous for this, I will leave. I will substitute you guys. I will replace you all. क्या हुआ? ये iPad निकाल दो उसमें से. इसको वो है. ये हमने वर्ल्ड कप भी रखा है. यार ये क्रिस्टल बॉल है जो हमें बताएगा मैच में जीतेगा. ठीक. Okay, someone. ये क्रिस्टल बॉल नजर ही नहीं आ रहा वैसे. डिले. Okay. We're on this camera. होना चाहिए by the way. हाँ. Prediction ball. Prediction ball. हाँ prediction ball. और फिर हम बीच में से कोई इसमें से रख लेंगे नीचे पे. Watch us live. We don't have the link. Why would they watch us live? YouTube. If you don't want to watch the match. Get live commentary on the match from your hosts Amna Hamza and Shreya Andra. ये आ जाएगी सेल, छोड़ दे. नहीं सेल नहीं मैं कर रहा हूँ. मैं ऐसे वो कर रहा हूँ कि मुझे बता दें कि कब हम होस्टिंग शुरू कर दूँ. मैं शुरू करें. On Pakistan. इनका फटा किस मैच में हुआ था? वर्ल्ड कप वाला ही था. चैंपियंस ट्रॉफी मैच था. चैंपियंस ट्रॉफी T20 था. नहीं वनडे. वनडे था ना? आई थिंक वनडे था. नहीं जो इमाद जिसने हाँ वो वनडे था. वो वर्ल्ड कप नहीं था. वर्ल्ड कप का मैच फंसा हुआ था 2019 की बात कर. नहीं 2018 की बात. 19 पाकिस्तान अफगानिस्तान 2019 में कुछ हुआ था. फड्डा पड़ गया था. इंग्लैंड में हुआ था मुझे इतना याद है. हाँ. इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ. वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ. हाँ लेकिन हमें मैच तो कुछ दे तो दो ना. टॉस दे दो या And also which camera am I? Yes. This one? Also the link. Got it. Shaji. राइट ऊपर राइट. the other side. your other हाँ ऊपर. Yes you got that. Inside? Clip bar. अच्छा आपने मोस्टली उसकी तरफ बात करनी है उस साइड पे. तो मैं ऐसा भी करूँगा. ये पता नहीं कौन सा फिर how I make $60,000 a month. वाह. पूछो उससे. You don't want to know. Okay. ऊपर वाले को कर लो खाली. यार पता है इसमें पोर्टेबल माउस लग सकता था. EFG होता है ना वो काम. हाँ. ये तो Are we हाईलाइट. live right now? Yeah. But no one is watching. No, but we have to start the match review ना, तो हम 15 मिनट का तो कम से कम करें. Just go on the main watch now. ऊपर जो बटन है सेंटर में. ये 2000 के नीचे जो बटन है नीचे. हाँ ये वाला. Chinese. Okay. So this is my camera? Yes? Yeah. Hello everyone. Welcome to PCFC Pakistan Cricket Fan Channel. I'm your host Hamza and today I'm joined with Amna Zafar, who is watching and playing cricket since she was in her mother's womb, and Hira Ali, who doesn't know her bats from her balls and her outfielders from her leg gully. And we have Sharyar Jami, who was lost to us during the fall of Dhaka, but we were able to retrieve him. How are you, Jami?
hell? Yes. Oh, Okay. that was problematic on so many levels. Who cares? The internet is problematic. And hope the sound is great. Pehli baat, before we begin, a moment of silence for the Indian cricket team. बस ठीक है बहुत मजा Okay, what was that? Okay, guys, latest update. What's been going on? Super Fours Asia Cup के शुरू हो गए हैं. Pakistan defeated India and then Sri Lanka defeated India and India for all intents and purposes. अब पहाड़ गिरने पड़ेंगे और बारिशें होनी पड़ेंगी और दुनिया में इधर से उधर चीजें नहीं होनी नहीं पड़ेंगी अगर उनका आज क्वालिफाई करना. पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी हार जाता है फिर श्रीलंका से भी हार जाता है तो फिर उनका कोई चांस बनता है. So what were your? Did you guys watch the game last night? Yeah, I did. What were your thoughts on the Indian performance? Yeah, Rohit Sharma was really mean to Arshdeep in the last over. Like when he was trying. Did you guys notice? Like even when he turned even in the back. last Pakistan match when Arshdeep was trying to set the field in the last over, because Pakistan वाला भी 7 from 6 ही वाला over ही था. तो वो पहले रोहित शर्मा उसकी बात नहीं सुन रहा था और उसने खुद फील्ड सेट की है. इस मैच में अर्शदीप आई थिंक took a bit of a stand. He set his own field and Rohit Sharma was a little pissy about that. अपनी टीम के मसले हैं. परफॉर्मेंस वीक थी. Clearly हार गए ओवरऑल हैं. परफॉर्मेंस का कैसा लगा कि इंडिया, डू यू थिंक इंडिया हैज, सो इंडिया का सिर्फ आई थिंक आजकल जो बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है ना, एवर सिंस MS धोनी, उनकी टीम बिल्ट अप ज़्यादा है, लाइक उसमें प्रमोशन और उसमें वो हाइप ज़्यादा है, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस वो लैकिंग है. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट, आमना? I think एक तो they missed Bumrah. I mean, it's as simple as that. The Indian bowling lineup is pretty weak. Also, I think they missed Jadeja. Huda is not able to create that kind of impact that they were creating. Am I not speaking in the mic? मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अभी आ रही? Listen, अभी तो मेरा I have my own mic. You don't need to put. हाँ, लेकिन मैं बोल ही नहीं रहा. Continue. बस इतना ही ओपिनियन था मेरा पाकिस्तान वाले मैच. Hira, what were your thoughts on what the teams were wearing yesterday? Hira is a fashion designer. I feel the team looked absolutely fabulous. I mean, great sportsman spirit. Great sportsman spirit. कल किसका मैच था? Great colors. कल किसका मैच था? India and Afghanistan. No, it was India versus Sri Lanka. So we're skipping you. Shreya, did you watch? Are you sad that Bangladesh hasn't qualified for the Super Bowl? Do you feel any love for Bangladesh? Not really. Not really. Not at all. I feel थोड़ा सा love भी for नहीं होता. मैं बस इस By the way, Hira also has a Bengali connection and Shreya also has a Bengali connection. It's love, bro. Yeah. It's the love. What is? But in any way, we. बट ये बस कहना चाहूँगा इंडिया को हराया. अगर मैं एसोसिएट करता हूँ उससे बस मैं इसलिए भी करता हूँ क्योंकि इंडिया को हराया. बहुत मज़ा आया. बहुत खुशी हुई कि इंडिया हारी. I was a bit sad for the young bowler जो था Arshdeep. The last over, brilliant. spot Bro, on- he was pretty spot on fabulous ball. in the last Okay, over. so Lekin Arshdeep the last over bowled was an a bit excellent too last over. And even that ball, man, if Punt had like actually got. Achha, by the way, why was Dinesh Karthik not playing and Punt was playing? Again, there's been a lot of debate. Punt, again, Punt. whatever. He's been in excellent form, and they've been asking कि अगर आपने कोई हुडा बॉय उनका हुडा को अगर आपने खिला रहे हो और उसे ओवर नहीं खिला रहे तो आपको बेहतर है कि आप दिनेश कार्तिक को खिला लो. ठीक है, इंडिया में डिबेट हो रही है बट व्हाट. और मैं चेक करता हूँ एक चीज़ के हर चीज़ इंडियन पर्सपेक्टिव से ना ऑनलाइन आ रही थी कि वो पूरा इंडिया श्रीलंका मैच हुआ, उसमें किसी ने ये बात नहीं की कि वाह श्रीलंका ने ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी अच्छी लगाई, एंड पे फिनिश मैच को इतना अच्छा किया. हर कोई बस ना इंडिया को ही देख बस रहे थे. इंडियन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मीडिया ज्यादातर इंडियन है तो हर जगह इंडियन पर्सपेक्टिव से बात हो रही है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव चैनल्स लाइक दिस कि हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव भी लेकर आ सकें और बाकी But dude, let's talk about the Sri Lankans. The crazy bloody game in front, like with Bangladesh earlier in the first round, and now I this. think it excellent. Like again, the Sri Lankan team, a lot of youngsters, a lot of cricketers who are very talented. Or after the defeat to Afghanistan, which the team Pakistan will be playing against today, after the defeat to Afghanistan, they were really able to. Like, they got out on 100 runs, and they got those runs were chased down in 10 overs by Afghanistan. So started off very low in this tournament. But this Sri Lankan team also reminds me of the the unpredictable Pakistani team that we used to have, जो पहले tournament में जाके मार खाती थी, and then they would just rise and just win the entire thing. I wouldn't be surprised if Sri Lanka gives Pakistan a hard time in the next game. Yes. And Hira, what are your thoughts on like the young Sri Lankan team that's coming up? I'm wishing them good luck. Very cool, very cool.
Feels. It's also, by the way, this tournament is being hosted by Sri Lanka in UAE. Sri Lanka में originally ये एशिया कप होना था और एशिया कप हुआ नहीं वहाँ पे. But coming back to India, just one point that I wanted to make. I think जहाँ पे Indian टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है, that is their bowling lineup. Yep. Right? They have none of their bowlers seem like स्ट्राइक बॉलर्स. दे डू नॉट डर नहीं लगता किसी बॉलर से. इवन उनका जो लेफ्ट आर्म जिसने कल अर्शदीप नहीं लेफ्ट है जो सिखना लेफ्टी वो है, बहुत अच्छी यॉर्कर्स कराई उसने, एंड ओवर बहुत अच्छा करा है. बट अगेन आई फील ही विल बी फाउंड आउट बिकॉज नन ऑफ दीज प्लेयर्स हैव दैट 145 प्लस डिलीवरी. इनका बुमराह इज समवन दैट दे आर आई थिंक मिसिंग immensely. And he needs to come Even back. though, जो तुम कह रहे हो, Pandya was one bowler who hit the 145 mark. Yeah. Hardik But that was his fastest and ball. one और उसमें वो छक्का भी पड़ा. और I think उसने पूरी अपनी जिंदगी की जान लगा दी थी उस ओवर में कि मैंने ढीला नहीं कराना. वरना usually even Pandya bowls in the 130s, late 130s, but 135 और 140 के बीच में कराते हैं. Coming back to today's game. पाकिस्तान प्लेज अफगानिस्तान, और वो जो हम कह रहे थे कि पहाड़ ज़मीन में चले जाएं और दरिया ऊपर चले जाएं इंडिया का क्वालिफाई करने के लिए. इफ़ पाकिस्तान विंस टुडे, इंडिया एंड अफगानिस्तान बोथ आर out of the tournament. So firstly I would like to begin by asking you guys, what are your thoughts on today's game? कुछ भी हो सकता है, but I feel like the Pakistan cricket team is pretty strong. They're in a good headspace. They're coming from like a big win against India. I think they'll be comfortable. I don't know. I feel like the Afghani fast bowlers might surprise us today. Afghani fast bowlers might surprise us today. Sharyar? I had a feeling that maybe the Afghani batsmen might give us a tough time. Why? Because एक तो experience, and because we lack the experience with our bowlers, and they lack the experience with the batsmen. So I feel that might be a challenging part for our bowlers. Their batsmen. Afghani batting is actually something that I'm also concerned about because I think they can put on a big total. A few of their batsmen have played in the PSL. Hazratullah Zai or something, Zai कुछ इस तरह करके नाम है. He is a left-handed batsman. He hasn't been in the best of form, but when that guy starts hitting the ball, it is absolutely amazing. Hira, Afghani carpets बड़े मशहूर हैं. What are your thoughts? I mean, let me watch the game and learn, bhai. Like, you don't have to be... बहन, लेकिन ये तो बताओ कि अफगानी कारपेट्स आपको लगता है बड़े हाई वैल्यूएबल गुड्स होते हैं. आपने कभी अफगानी कारपेट्स देखे हैं? कैसे लगते हैं आपको अफगानी कारपेट्स? Absolutely beautiful. Yes, like the culture, like the Afghani cricket team. I feel like it's amazing. I'm just joking. I hope there is no offense. Please do not take me too seriously. So, if you were आमना, आपको हम डालते हैं कोच के जूतों में, जो मोहम्मद यूसुफ के जूते हैं, तो बू बड़ी आ रही होगी, लेकिन 2 मिनट के लिए घुस जाएं. ठीक है? आप मोहम्मद यूसुफ की जुराबें उतारी, उनसे बड़ी बू आ रही थी, उनके जूते पड़े हुए थे, आप उनके जूतों में आपने पैर डाल दिए और आपके पैर से बू आएगी. लेकिन अब आपको जूते पहनने से फ़ायदा क्या हुआ कि जी अब आप डिसाइड कर सकती हैं कि आज क्या लाइनअप खेलेगी. आप सेम लाइनअप के साथ जाएंगे, बट कंसिडरिंग कि अफगानिस्तान है और 2 में से आपको सिर्फ एक मैच जीतना है क्वालिफाई करने के लिए, आप लाइनअप चेंज करेंगे और करेंगी तो क्या करेंगी. दूसरी चीज़, ये मैच हो रहा है शारजा की पिच पे. दुबई वाली पिच तेज़ है, शारजा की थोड़ी स्लो. क्योंकि लास्ट हमारा जो मैच हुआ है हांगकॉन्ग के खिलाफ, जिसमें बड़ा कह रहे थे ओए रन नहीं हो रहे, जो पाकिस्तान बड़े आराम से जीत गया था. आखिर में 190 कुछ मारा था और 30-40 रन पे उनको आउट कर दिया था हमने. तो आप चेंजेस करेंगे कोई टीम में? नहीं यार, विनिंग साइड है, विनिंग साइड क्यों छेड़नी है? बिल्कुल भी नहीं. कोई चेंज नहीं करेंगे आप. यू आर सैटिस्फाइड? हिरा, वुड यू मेक I have एनी a चेंज? question. How long is this match going to be once it starts? So it is a 3-hour game, usually 1.5 hour per innings. और अब उन्होंने क्या किया कि मैचेस अगर लंबे हो रहे हैं तो उन्होंने नया रूल रखा है, अगर अपना टाइम ओवर टाइम जा रहे होते हो तो आखिरी ओवरों में फील्डर एक्स्ट्रा अंदर हो जाते हैं, तो पेनल्टी भी होती है, तो टीम मैच जल्दी. तो कहीं जानना तूने? No, I'm just like... मतलब वो सोच रही है उसने कितनी देर बैठना है.
फंस गई है। बस देख रही हूँ कि अच्छा फिट ही है. फिटी जब ये दफा हिरा जब आई थी तो आखिरी 20 मिनट शायद रह गए थे। No, but I started watching it when I was at home. I was watching it with my. शरियार जामी आप टीम में चेंजेस करते हैं? No, I think we're good. We're pretty settled at. हम पाकिस्तानी लाइनअप दिख लगा सकते हैं पीछे, इधर स्क्रीन पर आ सकती है अगर आप चाहें तो। हम पाकिस्तान की लाइनअप अगर हम देख सकें, और मैं उस टाइम पर अपने उस पर भी लगा देता हूँ, प्लेइंग 11 पे अगर हम जाएं यहाँ पे। सो प्लेइंग 11 आई थिंक वो ये नहीं चेंज किया। आई थिंक अभी टॉस होना है कि हो गया है? 6:30 बजे नहीं होता टॉस? आई थिंक टॉस हो गया होगा। Pakistan have won the toss and elected to bowl first, and also one more thing, chase करते हुए सक्सेस रेट ज़्यादा है इस टूर्नामेंट में, दुबई में स्पेशली ज़्यादा है, बट शारजा में भी आई थिंक बेनिफिट होएगा इस चीज़ का। और लेडीज एंड जेंटलमैन अब हमारे आ रहे हैं स्पेशल गेस्ट, और वो चले साइड से गए, साइड पर हो और गया। साइड से साइड पर हो गए। ये हमारा स्पेशल गेस्ट बाद में आएंगे, ये मोहम्मद यूसुफ, इनको अपना उस्ताद कहते हैं। इंतजामुल हक इनके सामने अपने हाथ जोड़ते हैं। बाबर आजम इनके साथ एक कमरे में नहीं बैठते, कहते कि इंसल्ट है इतने छोटे प्लेयर की इतने बड़े बंदे के साथ बैठने में। वो अभी हमारे साथ आएंगे लेकिन बाद में। पाकिस्तान ने बॉलिंग पहले कर रहे हैं, यू वुड से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 इज हसनैन, रऊफ, नसीम शाह, सो इट्स द सेम 11। आसिफ अली, शादाब, खुशदिल, रिजवान, यस रिजवान इज आल्सो प्लेइंग, रिजवान का इंजरी स्केयर था, तो पाकिस्तान इज प्लेइंग द सेम 11। बाबर आजम ने कहा we think there might be some due later on, so probably better to chase. The mood is good in the camp and we are trying to continue the momentum. मैं भी यही कह रही थी। Okay. मैंने भी यही कहा था। जो अभी तक टॉस जीत के हमने डिसीजन जो लिया अभी तक अच्छा लिया है। So पहला वाला थोड़ा सा था। अच्छा, toss दोनों हारे थे उसमें। कैप्टन्स ने अच्छा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों यूएई में बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं। Yeah. दोनों ने बाद में ड्यू की बात की, अभी तक ड्यू इतनी सीरियस नहीं हुई, लेकिन दोनों कैप्टन्स ने आज कहा है कि ह्यूमिडिटी की वजह से आज ड्यू पड़ सकती है। सो अगेन पाकिस्तान इज एट एन एडवांटेज टुडे अगेन। Again, yeah. डू यू थिंक कि इस तरह की कंडीशंस में मैच कराना डज इट बिकम अ लिटिल अनफेयर ऑन द टीम दैट इज बैटिंग फर्स्ट? I mean, I think it's unfair on everyone. मैच देखना इस गर्मी में बड़ा मुश्किल होता है, खेलना लेट अलोन दो वो तो एक अलग ही बात है, उसमें but professionals एटलीस्ट है सारे। रिजल्ट्स भी अभी आप इसमें देखें, अभी तक आई थिंक टूर्नामेंट में अगर 7 मैचेस हुए हैं कि 8 मैचेस हुए हैं, तो सिर्फ एक मैच ऐसा हुआ है जो आई थिंक पाकिस्तान का ही मैच है जिन्होंने हांगकांग को हराया, जो टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है, वरना टीम बैटिंग सेकंड सारे मैचेस जीती है, तो एक सर्टेन एडवांटेज है। डू यू थिंक इट टेक्स अवे फ्रॉम द गेम अ लिटिल बिट? Yeah, I suppose because 50% मैच तो टॉस पर हो जाता है ना। Because अभी मतलब वो एडवांटेज कम है, because ड्यू कम है जनरली एट दिस पॉइंट इन टाइम, ड्यू विद टाइम ज़्यादा हो जाती है गोइंग क्लोजर इनटू अक्टूबर नवंबर। तो अभी आई थिंक उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, शायद उसका आधा पड़ रहा है लेकिन पड़ता तो है। अभी विल सी विद टाइम कि आगे क्या बनता है। मैंने इनिशियल वाले मैचेस कम फॉलो किए, सो आई डोंट नो इज इट द ओनली वन दैट पाकिस्तान हांगकांग वाज द ओनली वन द टीम बैटिंग सेकंड। आई थिंक सो, यस। That's unfortunate, right? So बट आई फील कि जो मैचेस में अगेन आई जस्ट थिंक कि ड्यू इतनी नहीं हुई, इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जितने भी मैचेस जो पाकिस्तान इंडिया के दोनों मैचेस थे, पाकिस्तान श्रीलंका था, इवन अफगानिस्तान श्रीलंका जो सुपर 4 का पहला मैच हुआ है, दोज आर ऑल वेरी क्लोज गेम्स, right? So I think it's also, I think something that teams that are losing might use as a defense, but इतनी ड्यू नहीं पड़ी। आज दोनों कैप्टन ने ड्यू की बात ज़रूर की है, आज शायद फैक्टर हो सकता है, बट ड्यू उस तरह आपने नहीं देखा कि वो बॉल सुखा रहे हैं या अंपायर के पास जाके कंप्लेन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बट गर्मी भी बड़ी है ना, थिंक अबाउट इट फ्रॉम लाइक, मतलब अगर आप इसको सिर्फ मैच को सोचो रिजवान के पर्सपेक्टिव से, फॉर इंस्टेंस नहीं, पर गर्मी तो हमने दोनों टीमों के लिए है, लेकिन इट्स लाइक यू एग्जॉस्टेड द फॉर्मेट टू सच एन एक्सटेंट, राइट? विद पाकिस्तान इफ यू लुक एट इट जस्ट फ्रॉम लाइक रिजवान्स पर्सपेक्टिव, वो पहले 20 ओवर खड़ा होकर विकेट कीपिंग कर रहा है, फिर वो ओपन करने आ रहा है, तो उससे ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट आपका पड़ता है। द प्लेयर्स वर क्रैम्पिंग अप, गिर रहे थे, इंजरी से प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं, और इसके बाद आके आपने फॉरेन वर्ल्ड कप खेलना है, तो ये टूर्नामेंट जब आप कर रहे होते हो, और अभी ये सारे लोग एक कमर्शियल लीग खेल कर आ रहे हैं, I think over-exhaustion of players generally बहुत ज़्यादा हो गई है। the circuit has become a concern. I agree, but I feel it is a discussion for another longer time. maybe मैच के दौरान वो ज़्यादा कर सकते हैं। Looking at this match right now, अभी जो खेलने जा रहे हैं,
You wouldn't make any changes to the Pakistan 11. Amna, Shahryar, would you make any changes? अच्छा, एक और चीज़ जिसमें मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा. How important is today's match for Babar Azam? He has been someone who hasn't been scoring runs. We know he is a great player. आज मोहम्मद रिजवान नंबर 1 हो गया है उसमें रैंकिंग में T20 की, और आई थिंक बाबर नीचे जा चुका है, नंबर 2 पे जा चुका है. तो हाउ, शहरियार से पहले मैं पूछूंगा, शहरियार बाबर के लिए आज कितना ज़रूरी होएगा रन्स करना? I mean, definitely after that 1,000-day streak that he had been going on, of him being at number 1, coming down to number 2 is definitely an impact that anybody would take. Being it is your own teammate, being it is the same person you open with, that might be completely different and something we may not understand how Babar Azam might feel on that. But being Pakistan's captain, being right now the best batsman in the world, He definitely is. It is his duty to, you know, take a stand not only with the team but as a batsman and Lead from the achieve front. that, lead from the front and achieve that, you know, jo usko naam diya He needs gaya to hai. fulfill the expectations. Definitely. So I agree with, but do you, Amna, it's the same question to you, but I will, do you think it is inevitable that Babar will score? Yeah, I think Babar Azam not scoring this tournament is a blessing in disguise for Pakistan. और ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई. उसका अच्छा? मतलब उसकी वजह ये है कि going into the World Cup, यार आपका मिडिल ऑर्डर टेस्ट हो गया. आपने सारी जो एक्सपेरिमेंटेशन करनी थी वो हो गई. वरना you've been so reliant on that Babar Rizwan Fakhr situation that it just becomes that your middle order wasn't really getting enough time on the pitch. And the middle order also, with the loss of Shoaib Malik and Mohammad Hafiz, now Was lacks a little serious experience. yeah. Yeah, inexperience. So, अच्छा है उनको 2-3 दफ़ा मौका मिला है और it's really good. उसके अलावा another batsman, शान शाहिद का एक ट्वीट आया था. देखा आप लोगों ने ट्वीट वो? शान शाहिद the actor, yes. शान शाहिद दी एक्टर, और कौन शान शाहिद भाई? मेरा तो शान शान मसूद मसूद की वगैरह बात नहीं नहीं भाई. शान शाहिद सिर्फ क्या नाम लेते हैं, मूवियों में खच नहीं मारते, सिर्फ सिनेमा में खच नहीं मारते. वो आई थिंक ट्विटर पे भी बड़ी खच मारी उन्होंने. बट चले मैं आप लोगों से ओपिनियन पूछता हूँ. मैं आपको बताता हूँ ट्वीट क्या थी. उन्होंने कहा जी कि फ़खर जमान ने 16 रन किए 14 बॉलों पर और आप नेशनल टीम के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं. आपकी औकात है नेशनल टीम के लिए क्रिकेट खेलने की? I don't think ये ट्वीट थी उनकी. एक सेकंड, ट्वीट हम निकाल लेते हैं प्लीज़. ज़रा ये ट्वीट रखें और यहाँ पे लगाएं, और हमारा पिक्चर इन पिक्चर हो सकता है शान शाहिद. मैं ट्वीट कहाँ पे ढूंढूं उसकी? यार ये सुनने को आया कि शान का नाम जी शान है. शान Back on शाहिद. that. हमारी स्क्रीन पे ट्वीट नज़र आ रही है मुस्तफा? अभी नहीं आ रही, भी हम ढूंढ रहे हैं ट्वीट. अच्छा जी, ये आर्टिकल मिल गया है. थोड़ा सा इंटरनेट आज स्लो हुआ हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता हम स्ट्रीम कर रहे हैं ना, इंटरनेट सारा वहाँ लगा. चल रहा है. तो फ़खर 16 balls 15 runs, only 2 balls from the middle of the bat. Are you supposed to be playing national cricket? Wow. 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 ये शान शाहिद साहब जिन्होंने कोई 25 साल हो गए इनको अच्छी मूवी निकाले हुए, ये हमारे नेशनल एक ऐसा बंदा जिसने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में सेंचुरी मारी थी और इंडिया को हराया था, कंसिस्टेंटली अच्छी बैटिंग कर रहा है, डोमेस्टिक में अच्छा खेल रहा है, उसके बारे में ये बातें कर रहे हैं. तो मैं आप लोग क्योंकि ज़्यादा क्या नाम लेते हैं ज़रा बैलेंस्ड व्यू रखते हैं, तो मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि आप शान बड़ा लेजेंड है पाकिस्तान का. अगर हर किसी को आप लेजेंड बनाना शुरू कर दें तो आप बताएं. देखिए फ़खर के बारे में, फ़खर is a great batsman. Like we were talking about Babar. Babar inevitably will perform. That's not a bad. Like Babar is आप like a शान की world ट्वीट पे class. बात करें ना, आप बाबर फ़खर में लगी. आप इस शान की ट्वीट से एग्री करती हैं, डिसएग्री करती हैं, और आपका जो ओपिनियन है उसकी वजह क्या है? नहीं, मैं डिसएग्री करती हूँ फ़खर का. ये मैं एक बात जरूर तो बोलूँगी. शान ने गलत कहा. लेकिन एक बात ये है कि फ़खर ज़मान का ज़रा it did feel like he didn't have his head in the game, not because of the batting, but what happened at the end of that match. वो जो चौका छोड़ा है, फिर वो कैच ड्रॉप हुआ है, उससे पहले जो मिसफील्ड थी, बिल्कुल तो ठीक है. वो थोड़ा सा ये मुझे महसूस हुआ था कि मे बी ही हैज स्टफ बिल्कुल ऑन ठीक हिज है. माइंड. तो फ़खर ज़मान हैड अ बैड डे. Yeah, he was having a bad day. That's about it. फ़खर ज़मान हैड अ बैड Yeah. डे. नेशनल एंथम के लिए खड़ा है. फ़खर ज़मान हैड अ बैड डे, बट
नेशनल क्रिकेट टीम वाओ वाली फेज में कह रहा हूँ, आपको लगता है कि फ़खर शान की बात से एग्री करती हैं कि फ़खर जमान डिजर्व ही नहीं करता पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना? नेशनल एंथम हो रहा है। सवाल गोल कर दिया। कोई वजह तो होएगी क्या? वो तो ठीक है। और दूसरी चीज़, नेशनल एंथम हो रहा है इसलिए हम खड़े में परेशान नहीं होना। हाँ, आप परेशान हो रहे होंगे कि आप हमें वेस्ट हाई तक देख रहे हैं लोग, यहाँ तक यहाँ तक नजर यहाँ तक आप मुझे क्यों देख रहे हैं? अच्छा खैर आप बैठ जाओ। बेफिक्र अच्छा, तो एक का नाम शान है, एक का नाम फ़खर है। तो शान को अपनी बात पे शान हुआ है कि मैंने इतनी बात की, और फ़खर को फ़खर हुआ होना है कि शान शाहिद ने मेरे बारे में ये नहीं ये अनफेयर है थोड़ा सा, ये अनफेयर कहना क्रिटिसिज्म था, बहुत ज़्यादा अनफेयर क्रिटिसिज्म था। ही वाज हैविंग अ बैड डे हो जाता है। आई थिंक शान वाज आल्सो हैविंग अ बैड डे, जो उनके वो लग गया, उनको अपना काम से काम रखना चाहिए, मेरा मशवरा ये। शरियार, व्हाट डू यू थिंक शान हैज़ एनी बिजनेस टॉकिंग अबाउट? No, fool's world. Fool's words. Fool's words, right? Agree. I think someone who hasn't been watching cricket, जिसने ना क्रिकेट देखी ना समझी ना किसी को कुछ पता है, वही इस तरह की अक्लमंद बात कर सकता है। फ़खर ज़मान का, who is one of the most talented batsmen that we've had for a long time, and he has consistently proven himself on the biggest stages multiple times, right? So it's extremely unfair. And Shan, with all due respect, मजाक कर रहा था पहले पहले प्लीज़ थोड़ी क्रिकेट समझ लो, थोड़ा देख लो कि होती कैसे है गेम, फिर आप प्लीज़ इन चीज़ों पे ना अपने एक्सपर्ट ट्वीट्स करना। Anyway, moving on, guys, national anthems हो रहे हैं, we'll be just wrapping it up, and then we will begin our watch along. Amna, what's your prediction in terms of first innings? सर, अभी मैं winner loser नहीं पूछ रहा। पाकिस्तान बैटिंग कर रही है, बॉलिंग कर रही है, अफगानिस्तान बैटिंग कर रही है, क्या टोटल अफगानिस्तान करेगी? I think Pakistan might be able to contain them under 160. Under 160, so you're saying 155, 160, Yeah. right? Hira, what's your prediction? और शान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? No, thank you. Okay. And prediction for how many runs Afghanistan are going to score? I feel like a bit more than 150. That which is 150, 155 आप कह रही हैं, 5 runs का? Yeah. Yeah, okay. 157. 157, 157, 157. Do you want to give an exact number? I think मेरी prediction थोड़ी 163. 163, 157. 167. 167, तो अंडर 170 सारों की प्रिडिक्शन हुई है फॉर अफगानिस्तान टू पुट अप What is your टोटल। prediction? माय प्रिडिक्शन इज दैट वी विल बी सीइंग यू राइट लाइव इन द वॉच अलोंग राइट आफ्टर दिस। हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन अ बिट। बंद कर दो स्क्रीन, मैंने कुछ लेना है। पॉज कर दो। Is anyone watching? Yeah. Oh wow, sorry Three guys. people, 1, 2, me, 3. I'm sorry You were watching? for the views.
कुछ इस किस्म की चीजें ले आए साथ रख Hello, ladies and gentlemen, and welcome to the watch along. That was a big edge. That close. looked like an edge. That looked like out. I hope they took the. I don't think they did. I hope they took the review. They did? No, they did They did not. That looked like it hit the I bat. don't know why they didn't take a review of it. Very important wicket थी ये. That is really surprising that they did not take the review. Come on, guys, let's see the replay on this. And that is completely lopsided how, at least visually, it looked like it took a big deflection. हाँ नसीम looked pretty sure. Naseem looked pretty sure, but can. All right, no. Close to the edge, but नहीं तो गुजर चुका है. हमें Straight line wouldn't have been out, but good is- call by Babar. good call by Babar, but that visually looked like, because we didn't see it live, on the replay it looked like it deviated, the ball moved outside. Maybe that was just swing. So guys, welcome to the watch along. We are watching Pakistan versus Afghanistan live from the Asia Cup. If Pakistan win today, they guarantee themselves a place in the final along with Sri Lanka, and Afghanistan and India will be eliminated. India yesterday lost to Sri Lanka and have lost both their matches in the Super 4 so far. If Pakistan wins this match, the next two Super 4 matches will be dead rubbers. And guys, in this section, the watch along, I won't be asking questions. Oh. बेचारा नसीम is like appealing on everything. काफी down the leg side थी. I think that was still a full hit. Like again, it might not have been. Yeah, that did not swing enough for me. Yes, still down the leg side. If that had come in just a little, because it was such a full ball. Yeah. Thank you so much, Aryar. Really, really appreciate it. I'm just gonna be. Hazratullah Zazai, I think, is one player that Look I've out for. seen PSL starts. He's kind of a rhythm kind of a player. एक तो इसका rhythm बन जाए अभी एशिया कप में इसका rhythm काफी off हुआ हुआ है. Yeah, I think Afghanistan का batting lineup अच्छा खासा strong है, and they can give any team like a good they can give anyone a good run for their money. But you can't take away from how strong Pakistan's bowling lineup is, and this is what has become very, very evident throughout this Asia Cup series. मतलब even though हमारे top three for this lineup is insane. Bench strength नहीं होती, bench strength नहीं होती. बॉलिंग में तो है. निकल के जो है ना ये आ रहे हैं लोग सारे. That's true. And so again, a lot of credit to PSL. A lot of credit to PSL, a lot of credit to. Oh, good shot. That's a good shot. I think it might Okay. not go Nahin, I all think the way. they'll It might be not able go to cut all it the off. way. Yeah, Yes, he will be able good to cut it fielding. off. But they will run at least 2, if not 3. Oh, good one. I think they ran 3 runs. Babar Azam chasing that down. Yeah, Babar Azam has always been excellent on the chase. Yeah. चाहे वो cricket हो या बच्चियाँ हो. Joking. I don't know about the girls. I really don't know about the girls. I'm joking. अच्छा तो कल ये बात हो रही थी बाबर आजम की बच्चियों की? नहीं मैच के दौरान इंडिया के बाकी टीमों में इतनी वेरिएशन नहीं नज़र आती बॉलिंग के अंदर. Yeah. Whereas our bowlers might not have a lot of pace variation, but they have a lot of जहाँ वो Skill set? skill set and जिस तरह कल उनका जो सेकंड लास्ट ओवर कौन करा रहा था? बुमराह. Bumrah नहीं, Bumrah है. Bhuvaneshwar. भुवनेश्वर कुमार. Bhuvaneshwar Kumar. उसकी Bumrah भी out. एक ही पॉइंट पे बार-बार बॉल आ रही थी. उसने 2 वाइडे शायद 3 वाइडे भी कराई थी. And Indians rate him very Yeah, highly. but that's also strategy, for- ना? That was bad strategy. मतलब आप उस वक्त आप बॉल ही वो डाल रहे हो, you're playing it safe. Yeah. वो बैट्समैन को पता चल गया कि अब आपने बॉल इधर ही डालनी है. नहीं, outside the off stump Yorkers कराने की कोशिश कर कर रहा रहा था. But again, Indians rate him very highly, Bumrah. But For Indian standards, yeah. I don't know if Indians are again. That's. But for Indian bowling standard, right? Yeah, Like, I do not know why and what standards are they judging their bowlers by, but Indian bowling desperately needs that was a good ball. like it has never been great. By the way. yeah. इंडियन बॉलिंग जहाँ तक मैंने क्रिकेट जहाँ पे वो श्रीशांत होता था वो जो लंबे बाल वाला. पर पीछे नहीं, क्या तुम होता था पुराने वालों को प्रसाद वाली की प्रसाद बात और है. प्रसाद के श्रीनाथ. श्रीनाथ
ये तुम लोगों को नहीं पता होगा, प्रसाद और श्रीनाथ होते थे 90s में जब वसीम अकरम और वकार होते थे हमारे यहाँ पे, और they were never, they didn't even come close, obviously वकार और obviously उसके they स्टैंडर्ड के didn't तो hold a candle to but someone like a Zahir Khan was decent. I think he served Irfan Pathan. Irfan Pathan for a very For a short period. period of time. Yeah. Irfan Pathan was actually pretty unplayable. unplayable. I remember Irfan Pathan also had a hat trick against Pakistan Yeah. in one of these test match cricket. I think शुरू में आते ही इसने कराची में टेस्ट मैच हुआ था, 3 विकेटें उसने लेकिन की देखो थी. पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है ऑफ लाइक अमेजिंग बॉलर्स, मतलब हम भूल जाते हैं वसीम वकार के ज़माने में अब्दुल रज़ाक भी था, अजहर महमूद भी था, उसके बाद हाँ आकिब जावेद था, पहले आकिब थे, जावेद उसे भी था. उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा बॉलर्स उस टाइम पर रहे हैं. मोहम्मद अरशद समीन, खान, नवीदुल हसन राना, ये सारे हाँ बाद में मोहम्मद आमिर, उमर गुल, मोहम्मद आसिफ. मोहम्मद I आसिफ mean, if वगैरह. Mohammad Asif had played, या बट वही बात है उनकी, अगेन आई थिंक एक प्रोफेशनलिज्म का मसला काफ़ी देर तक रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, बट एवर सिंस आई थिंक मिसबा को क्रेडिट इस चीज़ का देना चाहिए. प्रोफेशनलिज्म टीम में बहुत ज़्यादा हुई है अंडर हिज. and now to like I guess the to Babar and the management and like I think जब से वो coach culture भी थोड़ा सा गया है ना, and it's more like a team culture as opposed to a coach culture, because पहले it would be a lot about oh unlucky ball हाथ से छूट गई, भी दी जाए. हाँ दे दी जाएगी. Hasnan, I think अच्छा that slipped पाकिस्तानी out of his बॉलर्स hands. then slipped out of his hands, जो भी हुआ. पाकिस्तानी बॉलर्स में ये चीज़ होंगी, एक्स्ट्राज आपकी इस तरह की Yeah. निकलेंगी, shouldn't happen but होंगी, but it is still forgiven as long as you're bowling 140 plus Were they consistently. going like do you remember the Wasim Akram no balls? Wasim Akram कोई रन नहीं देते थे लेकिन no balls होती थी because वो एक obviously they're going that extra mile, right? They're putting that extra push into the ball. मोहम्मद आमिर की नो बॉल्स भी याद होंगी. मोहम्मद सारों को. आमिर मोहम्मद आमिर फिर नो बॉल्स कराता था, इतने पैसे कमाए उसने नो बॉल्स पे. चलो let's not go या सलमान बट की गलती है. सलमान बट आई विल नेवर फॉरगिव यू. या आई विल नेवर फॉरगिव यू. बट इन एनी केस पकड़े तो ना जाते. पकड़े नहीं, पकड़े भी गए तो अच्छी बात है. यार इंटरनली सलाह देती है मोहम्मद आसिफ को भी वापस आ जाना आई चाहिए. गेस वो कल्चर भी खत्म हुआ उस पकड़े जाने से ना. अभी ये चक्कर 145 145 was Yeah. crazy. एंड आई थिंक And like we didn't mention man Shoaib Akhtar. Oh my, come on. नहीं, शोएब अख्तर ऑब्वियसली मोहम्मद आसिफ के साथ ही शोएब अख्तर को आप मेंशन करोगे, बट अगेन आई फील शोएब अख्तर सर्व दिस कंट्री एंड सर्व दिस कंट्री, and you should be proud of someone like a national legend like Shoaib Akhtar, but at the same time I wish he took care of himself better. Yeah. I wished he was more of a team player. I wish he would have contributed. उसका injury and Yeah, but I feel like उस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतना डेवलप वो स्किल सेट ही नहीं हुआ था हेल्थ, वरना फील्डिंग नहीं आती थी यार उस वक्त. हमें वो हम लोग ज़मानों की बात कर रहे हम ना हैं. उस टाइम पे यूनुस खान टाइप प्लेयर्स भी थे जो अपनी फील्डिंग, अपनी बॉडी, अपने हर चीज़ का ख्याल रखते हैं. एंड पीपल लाइक शोएब मलिक एंड मोहम्मद हफीज हैव एक्चुअली प्रूवन दैट इफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इवन मिसबा, someone Longevity of career. who is debuting in his late 30s goes on to क्या नाम But लेते like हैं. Shoaib Akhtar was also a beast man. He was like वो जो स्पीड पे बॉल करा रहा था उसका नहीं वो ठीक था, impact उसके भी. गोडों शोडों पे बहुत ज़्यादा चीज़ें, बट आई स्टिल फील एंड फ्रॉम व्हाट Oh shot. निकल गई है. 6 from what we've heard, and this opener has been playing Rahmanullah, I think नाम है इसका, Rahmanullah. He has been playing really well. He has been in form out of both these openers. So excellent pickup shot and all the way for 6. अब इसका पिछला मैच दिखा रहे थे 85 from 44 I think इसका चल रहा था. So that's a big score and that's a large strike. Runs and fast runs. Yeah. And Afghani fans can be a little charged up comparatively. Pakistan, Afghanistan ka, we're talking about that incident the other day as well. जो I feel Oh, चिका good try यार, good ट्राई तो चलो अच्छी थी, पीछे आ गई बॉल, पीछे बहुत चली गई पीछे ब्रो. था, ऊपर था बहुत. नहीं उसमें also the boundaries are much shorter, so the last 6 was 66 meters. This must also be some on this line. So So 2 overs gone, 20 runs from it so far, and such an easy beautiful pickup shot. क्या कह रहे हैं जामिन? क्या thoughts हैं जी? पहले 2 ओवर गुजर गए. यार पहला ओवर अच्छा कराया था, दूसरे में 2 छक्के पड़ गए, तो #cricket ऐसे ही होता है. नथिंग टू वरी अबाउट, इतनी जल्दी परेशान होने की कोई बात नहीं. आफ्टर 5 ओवर्स आई थिंक एनालिसिस करेंगे कि क्या पहुंचे, बट Power player.
It's नहीं वो कुछ नहीं होता, वो अगला भी खेलने आए, मारेंगे। yeah I mean even if you look at the India match जो पाकिस्तान इंडिया का था, पहले 6 ओवर में इंडिया काफ़ी स्पीड पे आई थी। We had about 56 था मेरे ख्याल से 5 ओवर के बाद, 6 ओवर के बाद, आई डोंट रिमेंबर। एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ अक्सर ये होता है कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को इन्फॉर्म करती है पाकिस्तान। तो हजरतुल्लाह जज़ाए का बड़ा अच्छा मौका है आज फॉर्म पकड़ने का फिर से, क्योंकि अक्सर कोहली होता को है भी हमने फॉर्म हाँ वापस नहीं दिए। हमारा अक्सर होता है, वो कमेंटेटर बता रहा होता है पिछले 15 मैचेस में सिर्फ इन्होंने 10 रन की एवरेज से किए हैं, और वो हुए में पाकिस्तान उसके उस दिन 2 कैच भी ड्रॉप करेगी और फिर प्लेयर को फॉर्म में भी लेकर आएगी। किया है ना हमने, कोहली का भी तो कैच ड्रॉप करके यही किया उनके लिए हमने। बट नहीं, ये भी है, पाकिस्तान प्लेयर्स बनाती भी है। रिमेंबर हेडन, या बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की, आई वुड एग्री। हाउ फार कैन अफगानिस्तान रीच द कंपटीशन? इफ दे लूज टुडे दे आर आउट, सो बेसिकली द क्वेश्चन इज आई मीन इफ दे लूज टुडे इंडिया इज आल्सो आउट। सॉरी इफ दे लूज टुडे इंडिया इज आल्सो, सो पाकिस्तान का अपॉर्चुनिटी है अफगानियों Pakistan अपने loses वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों पे जो ममालिक हैं उनको टूर्नामेंट से बाहर करने की। पाकिस्तान आल्सो लूजिंग अगेंस्ट श्रीलंका। यस, एक तीर से डबल शिकार। और the pitch seems much better than what it was in the Pakistan Hong Kong game. Even इस पे जो अगला मैच हो उस पे बॉल बहुत बेहतर आ रही थी। So that's a good sign. Another problem that Pakistan might have, और आगे जाकर ये शायद एक्सपोज भी हो थोड़ा, इंडिया का भी सारे जो उनके एक्सपर्ट्स और पंडित्स हैं वही बात कर रहे थे, इंडिया का कोई सिक्स्थ बॉलर नहीं है। तो एक बॉलर अगर किसी को मार पिटनी शुरू हो जाए तो कोई छठा बॉलर नहीं है। पाकिस्तान के पास भी टॉप 5, मैं नहीं कह रहा कोई बुरा बॉलर है हमारा, बट हमारे 3 फास्ट बॉलर, फिर शादाब और नवाज। छठा बॉलर अगर कोई करा सकता है तो वो हमारा करवाता है, कौन कराता है? जो हमारा मिडिल ऑर्डर में है, खुशदिल नहीं कराता, इफ्तिखार राइट आर्म ऑफ स्पिन कराता है यूजुअली मैचेस में। बट राइट आर्म ऑफ स्पिन में उसकी कोई लाइक इवन हफीज या फिर इवन शोर मलिक वर टैलेंटेड राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स। इफ्तिखार में वो चीज, ही इज जस्ट समवन हु जस्ट पुट्स दैट बॉल। Yeah, that's why मतलब Ahmad Wasim is like a good pick to have, and but वो Someone who yeah, can bowl and also give you those 20 runs. and also brings in some amount of experience to the team. But he looked a bit unfit to me, like थोड़ा out of shape लग रहा था. Ahmad Wasim के again From his general self also. again, if you listen to the great gossip, so that जो कहा जाता है Ahmad Wasim, oh that's Sure, a that beautiful was shot, beautifully placed. beautiful shot, pace on the ball, and I feel like they're going to do much more than. नहीं what you predicted initially now. So क्रिकेट में पहले 6 ओवर्स के अंदर पावर प्ले होता है। पावर प्ले के अंदर जो उसका रिंग बना होता है ना छोटा वाला, आप उससे बाहर सिर्फ एक प्लेयर रख सकते हो, तो आपका बाउंड्री पे कोई फील्डर नहीं है। तो जब 6 ओवर हो जाएंगे तो बाउंड्री पे फील्डर ज़्यादा हो जाएंगे। Outside दो दो होते हैं, हाँ, दो रख सकते हो, sorry। When did this start happening? Sometime back. ये मेरे बचपन में हमारे सारों के पैदा होने से पहले का हो रहा है। So on the boundary, you're There are only two allowed to people. have 2 people. In the first 6 The overs, first In the power first play कहते हैं पावर प्ले के अंदर। Oh. What do you guys think about Babar coming one down, since Fakar is a nice opener, you know? Babar has always played really nice one down आके. In T20s, मैं अच्छा वनडे में आई एग्री, बट इन T20s I would not change it. I would not change it just because रिजवान और बाबर की एक, But that left hand, right hand combination. I think it's excellent. हाँ, I do agree. Like I do think कि एक तो ये कि अगर पाकिस्तान ने अपनी गेम प्ले स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, जो कि उनको इवेंचुअली अगर इस फॉर्मेट में कंपेटिटिव रहना है, तो वो उनको करनी पड़ेगी कि उन्होंने ऊपर रन तेज स्कोर करने हैं। तो उस पॉइंट पे मे बी अ फखर इज अ बेटर ऑप्शन दैन somebody like, और वो फिर वो you go back to what our old strategy used to be, I suppose, कि अगर कोई एक मतलब वन डाउन पे आके बाबर संभाल सकता है फिर उसके बाद। But Babar की stats में 7 to 15 overs में उसके most runs हैं आज तक. तो यू थिंक वन डाउन में और बेहतर परफॉर्म Yeah. मुझे इससे सिर्फ जो वो एक चीज़ है, आई थिंक द रीजन दे आर सेंडिंग बाबर एंड रिजवान ऑन टॉप, Because their chemistry is also really good in terms of run scoring. आई फील जो लॉजिक है इसके पीछे वो ये है कि ये दोनों विकेट दे ही ना। Yeah. रिजवान कैन प्ले लिटिल बिट एग्रेसिव, और क्या नाम हैं बाबर कैन ऑल्सो उस तरह करके, तो वो पाकिस्तान का वो आई थिंक वो चाहते ही नहीं कि हमें विकेट का प्रेशर आए, कि विकेट्स हम लूज करनी शुरू करें तो फिर वो आगे जाके स्टेज में करें। फखर का हमेशा ये होएगा, ही इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर हु कैन गेट आउट फर्स्ट बॉल फर्स्ट ओवर टाइप हो सकता है।
First ball, Haris Rauf. I have a very strong feeling this is going to be a 200 plus match, 200 plus total. Alright. I don't know. क्योंकि अभी तो पहले 3 ओवर And first ball 151 clicks. wow. Again, it becomes very easy. Line थोड़ी. Even 151 बॉल भी बहुत आसान हो जाती है अगर पैरों पर आ रही हो. हाँ. And that flew. And it's a small ground. और जितनी तेज बॉल आएगी उतनी तेज जाएगी. Yeah. पर बॉल Again नहीं bro. Again check करना 140 plus clicks होंगे और 147. All he needs to do is just find the gaps. And for someone, if you look at his technique, there's not a lot of leg like movement, टांग वगैरह की उस तरह की very Sehwag-esque technique, but for a left-hander, right? He really trusts his balance, his And also his eyesight, ability to place. and hand-eye coordination, right? So it's on just जिन pitches पे swing ज़्यादा होएगा उस पे technique fail कर सकती है, especially the ball going away from the batsman because there is no leg movement. But on pitches like these, it can be a very high scoring technique. And most pitches these days, especially in the shortest format, are like this. Oh. Gone. That's That was a catch drop by And this think is Nasran nahi, kya naam hai Naseem, uska? Naseem. Naseem Shah, and थोड़ी उसके these आगे land हुई है। no, these are the things that I You feel are can't- unforgivable. you can't drop this unforgivable, catch. unforgivable. You guys are again. This wasn't too difficult. This to wasn't a take. difficult catch. It wasn't a difficult catch. He saw it. He complete chance था उसका ये पकड़ने का. And these guys need to be taking इस level में नहीं है 100 drop कर catches a सकता. day. Yeah. As a professional, you can't be dropping these. Yeah, not at this level of the game. He's Right. also mad at him. He obviously. But listen, again, good for Rizwan and Unforgivable. Babar for like अभी उसने पूरा मैच खेलना है तो नहीं वो तो चलो ठीक है डाउन ना but करो. unforgivable, unforgivable. यार कुछ नहीं होता, कर दो माफ. But मैं माफ कैसे करूँ अगर unforgivable है? Makes no sense at all. But you see this, I mean that's what Pakistan can do because they're coming at this pace. एक पॉइंट पर भी अगर वो बॉल हल्की सी भी ऊपर नीचे लग गई है ना तो वो विकेट निकल रही है. नहीं वो तो हल्की ऊपर नीचे मिडिल ऑफ द बैट उसने वो करने की कोशिश की है. Like dude उसने उसको नहीं कराई वो भी तो कराई बाउंसर है 150 ना. पर है वो उधर तक पहुंची है. But again catches win matches. Catches win matches And indeed. Diving catch, difficult catch. वो मैं Oh, bowled him. this is how you do it. bowled him. that was a beauty of That was Beautiful, beautiful ball. You Haris That was crazy, Rauf. guys. भाई को शर्ट पहनाओ. क्राउड वाले भाई को इसको भाई को शर्ट दो. that was a beauty and Yes. I'm glad ये अभी निकल गया वरना जिस सेकंड लड़की आई है दैट वाज अ ब्यूटी है. शर्म नहीं आई तुझे जरा सी भी? से बॉल देखो. वरना नसीम शाह पे भी बड़ा प्रेशर आ जाता अगले ओवर नहीं नसीम शाह जो बैट्समैन क्या नाम लेते हैं दूसरा बैट्समैन का कैच ड्रॉप किया. वो उन्होंने जजाए का कैच ड्रॉप हुआ. ठीक है लेकिन बॉल बहुत खूबसूरत थी. लेट्स नॉट अच्छी बॉल गुड लेंथ रोक लिया है. नो बॉल के लिए चेक हो रहा है. हारिस रऊफ को आदत है नो बॉल कराने बहुत की. पीछे से बॉल करा रहा था अभी तो. हाँ चल 1 फुट पीछे से बॉल करा नहीं वो रहा रुका है ना मैंने इसलिए कहा रुक क्यों रहा है. जल्दी से जा आ गया दूसरा बैट्समैन नहीं है नो बॉल. तो 4-4-1-0 और विकेट. यार मुझे ये बताओ कि अभी हारिस तो बहुत थोड़ा पीछे से करा रहा है. वैसे टेक्निकली ये क्यों करते हैं जब आप थोड़ा मतलब लाइन लेंथ चेंज करने के लिए अगर आप उसी स्पीड पे नेचुरली आपकी बॉल अगर फर्ज करो आगे जा रही है आप एक्शन बॉल उधर से ही छोड़कर हाथ पे आप पीछे कर सकते हो. बैट्समैन के लिए मुश्किल हो सकता है जज करना. तो जब आप बाउंसर करते हो तो आपकी बॉल रिलीज नीचे हो जाता है क्योंकि आपने बॉल का ठप्पा पहले देना होता है. जब आप यॉर्कर या फिर आप फुल टॉस टाइप दे रहे हो तो ऊपर हो जाता है. राइट तो इमेजिन करो कि मैंने ऊपर ही छोड़ी है बॉल हाँ लेकिन थोड़ा पीछे से छोड़ी अब. लेकिन पीछे छोड़ी है तो वो बैट्समैन रिसीव हो गया. बाउंसर बन गई है लेकिन उसको पता नहीं चला. ये चीज़ मुझे शोएब अख्तर ने और शाहिद अफरीदी ने समझाई थी बचपन में. एक टीवी शो देख रहा था क्रिकेट के पे. तो हाँ तो Thank you. तो आज ये वो नॉलेज काम आई है. अच्छा आज आप किसी और को सिखा रहे होंगे जो हमारे व्यूअर्स बैठे हुए हैं घर पे. फिर यार चलो कोई
At this pace आपके पास गलती की गुंजाइश बहुत कम इतने होती है लाइन लेंथ इतनी छोटे उस पे ना बाउंड्री पे, क्योंकि इट्स ऑन एवरेज आई थिंक 60 to 70 meters थ्रू आउट. आई एम नॉट श्योर इट्स अ परफेक्ट ग्राउंड. कैन वी चेक I think के it's 66 शारजा की पिच on the के shorter side. कितना है वो? आई थिंक वी कैन गेट And दो I think स्टैट्स फॉर द 70 कुछ on the other side. game as well. But small boundaries, very small boundaries. वो and our stat guys can also check this for us. एक साउथ अफ्रीका का ग्राउंड है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 400 प्लस वाले हुआ था मैच, जिसपे किसने मारा था? साउथ ऑस्ट्रेलिया ने 400 मारा था और साउथ अफ्रीका ने चेस कर लिया था. दैट वाज आल्सो वेरी स्मॉल. आई थिंक वो सुपर स्पोर्ट पार्क है जिसमें हुआ था. बट So जी हसनैन is back. Hasnan is back for his second over. Went for 16. Second नहीं दिया अभी तक. Went for 16, but Hasnan has an opportunity to bowl to the new batsman. Yeah, good thing they brought him back. But I think there The line was was a someone, bit yes. off. And Fakhr doing the sweeping at the boundary. अच्छा जी अभी भी फखर would be considered one of your better fielders. 65 में दोनों sides पे. 65 all across. All So across. it's a very small ground. कल जो मैच था उसमें 80 प्लस बन रही थी. 86 था longest. एक हाँ 86 बन रही लॉन्गेस्ट है. तो इट्स अ स्मॉल ग्राउंड. बहुत छोटा ग्राउंड है. मुझे बस ये ड्यू कर रहे हैं ये ना हो सेकंड हाफ में पिच और रुकना शुरू हो जाए, फिर बैटिंग चेस करना मुश्किल हो जाएगा. Oh, good I ball. would be very happy to see the back of Zazai. I would be very happy to see the back of Zazai because he is the kind of he's someone who can score runs at a very fast pace. Yeah. वो How's he against spin? Can someone check? उसका spin I versus think spin pace. के खिलाफ इतना अच्छा नहीं होगा. Johannesburg. I think that was also a small ground, smallish ground, right? Small boundaries. Bro, वो तगड़े ही बने. नहीं उस टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब 400 रन होते भी नहीं थे. वो पिच बहुत अच्छी थी और वो ग्राउंड भी छोटा था और वो ऑस्ट्रेलिया अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करी होती ओए यार, डाउन द लेग साइड क्या किया इजी इजी पिक्स. Not a good line. अच्छा एक और चीज़ भी अगेन उन्होंने पूरी उस पे से पिच पे से दुबई से भी उन्होंने यही किया ना उस दिन. अभी यही किया उस दिन उन्होंने. नहीं बट अभी भी मुझे अफसोस इस चीज़ का हो रहा. अच्छा एक और चीज़ मैं जनरली पॉइंट आउट करना चाहूँगा. डू यू थिंक कि ए पाकिस्तान वर्सेस एन इंडिया एंड अ पाकिस्तान वर्सेस एन अफगानिस्तान आर टू डिफरेंट टीम्स? मेरी पूरी इंडियन टीम से पूछो ना पाकिस्तान इंडिया गेम, इट्स जस्ट अनदर गेम, वी आर प्रोफेशनल्स और ब्ला ब्ला ब्ला, व्हिच आई एम श्योर द प्रेशर इज मच हाई बट दे डू नॉट. इंडियन एक वो रहे या नैरेटिव रहा है कि वी टेक इट एज एनी अदर गेम. पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. दे पाकिस्तानी जिस पे पूछो उससे कहो जी अगर हम 100% देते हैं किसी और गेम के लिए हम 120 देते हैं. हम इंडिया से वो कहते हैं कि जी इनको हमने करना है. बट डू यू थिंक दैट ऑल्सो इज ट्रू व्हाइल प्लेइंग अदर गेम्स? पाकिस्तान में वो नज़र नहीं आता कि जी मर देना है या मार देना है. नहीं मेरा नहीं. देखो वो कहते ज़रूर हैं बट मेरा नहीं ख्याल कि वो दैट चेंजेस. आई थिंक वो सिर्फ प्रेशर शायद उन पर ज़्यादा इंक्रीज करता है. ठीक है इन टर्म्स ऑफ मतलब उनका स्किल सेट तो नहीं बेहतर हो रहा उससे. ना ही उनकी मतलब आई गेस या जान शायद मे बी मतलब उतनी ही मार रहे होते हैं. मतलब वो शायद रिजवान वाला इंसिडेंट कि भाई इंजरी के थ्रू भी और दर्द हो रही है फिर भी खेल रहे हैं, वो वाली चीज़ें शायद हो जाती हैं. लेकिन आई डोंट थिंक परफॉर्मेंस को आप परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं होती. और ये शायद एक पुरानी दे ऑल्सो रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस गेम इन अ वेरी डिफरेंट वे. दिस इज अ यंगर टीम, कंपैरेटिवली यंगर टीम compared to like you know an Indian team, right? They see that this is an opportunity to be recognized. उनको पता है ये टीम में बड़ा वो वाला है कि यार हमने bowled him, slow ball, beautifully disguised, ठीक है भाई सारे beautifully छक्के जायज़ हैं. disguised, beautifully सारे के disguised, सारे रन्स जायज़ हैं. beautifully disguised. Like again, Zazai का पता चलता है out of form है. He could not read that one, and जबकि वो पिछली एक दो बॉलों से ट्राई मार रहा था हसनैन. and unfortunately, even though he went for a few runs, Hasnan and beautifully disguised, yeah, beautifully disguised. He got the line right this time. The line right also. Piछली, I think यही वो he was trying to get this, but मसला हो रहा था. सारा जायज़ है.
सारा जाए सब जायज़ जायज़ है. Now let's see के losing 2 wickets in the power play is never easy, but I think Afghanistan is going to go hard throughout. They're not gonna. I think run rate slow down. बिल्कुल होना चाहिए अभी तो आपका तो लगता है होएगा. पावर प्ले अभी खत्म होएगा. मुझे लगता है होएगा थोड़ा सा, but not because of not because ये को है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हो, लाइक वो डिफेंसिव नहीं खेलेंगे. मुझे लगता है काफ़ी सारी टीम्स की नाउ इन T20 स्ट्रैटेजी है कि एंड तक मारी जाओ चाहे जो मर्जी हो. यार वो फिर आपके साथ इंडिया वाला हाल होगा ना, टीम आउट हो मुझे जाएगी. लगता है गलत स्ट्रैटेजी है. मुझे लगता है बिल्कुल गलत बहुत गंदी स्ट्रैटेजी है. किसी एक पॉइंट बेसिकली पे इंडियन somebody टीम needs जिस to फिलॉसफी के साथ खेल रही है, और बहुत सारी टीम्स इस फिलॉसफी अदर देन पाकिस्तान का होता है बाबर और से बेस बिल्ड करनी, फिर एंड पर एक्सेलरेट करना. उनका होता है बॉल 1 से ही यार इंग्लिश टीम Non-stop जिसने हर acceleration. क्या कहते हैं फॉर्मेट के लिए अलग टीम बनाई हुई है, ठीक है, जिनका बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जिनका आखिरी बंदा तक बैट कर सकता है, वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं. नॉट आई थिंक आई डोंट नो इवन इंडिया इज हैविंग अ हार्ड टाइम एग्जीक्यूटिंग दैट स्ट्रैटेजी. Hira, what do you think? What are your thoughts so far on the game and generally? I feel the game is moving fast, Okay. and I mean they've done a good score. Are you finding the game interesting? I mean, yeah, on a basic level. अच्छा जी, so I would also like to tell you that we can see your comments and अगर आप लोग कुछ बताना चाहते हैं, information share करना चाहते हैं, any questions? What's this great space? It is PCFC. I'm not going to say CBM. I'm not going to say CBM. CBM. This is Pakistan Cricket Fan Channel. Yes. PCFC. Going PFDC live. से और inspire हो sorry, गया. sorry, मैंने लिखा हुआ है going live from CBM studio. ये मैंने लिखा हुआ है. Nawaz is here with his first over. Yes. And, काफ़ी ज़्यादा एक और मीम भी चल रही है कौन सी? कि चलो एक नवाज ने तो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम किया. यार लेट्स कीप पॉलिटिक्स आउट ऑफ दिस. Why? नहीं पाकिस्तान में 2-3 चीज़ें तो ये पॉलिटिक्स है, क्रिकेट है, और तीसरी वाकई कोई चीज़ नहीं समझ आती. What do you guys think about that Hong Kong player losing to his अच्छा, आई डिडंट in the match? to Pakistan. Did he get rejected though? सर गुड फॉर दैट. चलो अच्छा कोई अच्छी चीज याद रहे मुझे आज से. बट वो मैच जीत जाता तो कर ले तो. या बट आई जस्ट फील लाइक मैच हार के करना उसने. यार उसने अपना ट्रॉमा मैनेज किया ना, तो अब हर दफा वो उस दिन के बारे में सोचेगा, वो 38 रन्स के बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि मेरी एंगेजमेंट हुई थी इस नहीं, दिन. बट वो ये ना हो कि बीवी घर जाकर उसको कहे, अब उसकी मंगेतर घर जाकर कहे कि भाई वो तो तू मैच हारा था, रो रहा था, तो मैंने कहा ठीक है. उसी का मौके का फायदा मौके उठाया का था. फायदा उठाया. But would you ever have such a public proposal? I would not. Like, You had a public proposal. दोस्त ही थे हेरा साथ. कौन सा? public. That wasn't public. तुमने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी? नहीं, हमने सिर्फ पिक्चर थी. हमने हमारी. वीडियो बनाई थी. नहीं, पिक्चर थी सिर्फ. I don't have the video. ये काफी पहले की बड़ी हुई, ठीक है. और वो काइंड प्रोमो भी था. Cheese doesn't expire. It's अच्छा. not real cheese. Of course it expires. It expires even though There's it an does. expiry date It there, doesn't right? expire like a You cheese should can't expire. keep cheese on room यार look at that ball यार. It has. It is processed. It's great ball. And guys, keep on sending your comments. Top chat की जगह अगर हम उसको वो कर दें, all chat या कोई इस तरह की चीज़ अगर हो सकती है, Live I'm sure chat that's कर दिया possible. हमने. Live chat, क्योंकि बहुत ज़्यादा comments आ रहे हैं. Please comment करे जाएं. मुझे अभी कान में बताया है कि there are 1,300 live viewers at this time. Amazing. Excellent, Amazing. excellent, excellent. That's how you guys are on board. I love you guys. Thank you so much for. तुम्हें कान में कौन झूठ बोल रहा है? मैं खुद अपने आप से बातें कर रहा हूँ. देखो 119 clicks. Nice है. और एक और शोएब अख्तर की मुझे बात याद आती. चलो good Direct पे try. तो that would have been completely. That would be great. And हमारी sponsorship से अभी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है हमारी, हम लोग जेब से पैसे दे के मंगवा ये मंगवा रहे रहे हैं. हैं. अगर आप स्पॉन्सरशिप चाहते हैं तो हमें पिज्जा भेज दिया करें. अभी क्योंकि मैं खाकर अभी ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, डोमिनोज वाले नाराज ना होना. ये गरम करके लाया इतना है देर में ले आया. ब्रो, गरम ही करवा दो. और मुसा गुलामली से कहे कि मुझे कुछ पानी दे दे पीने के लिए. You want my water? ये हेलो हम Where's can my water? this please be warmed Oh up. yeah, I can always leave and come back.
हम तो तुम्हारे सारे 1013 व्यूअर्स चले जाएंगे अगर तुम चले गए तो 1013 और वो नंबर हिल भी नहीं रहा, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है। कॉपी पेस्ट करके नहीं कर सकते? बता दें। So guys, यार we have to talk about the improvement that we've made in our live through stream. live stream तो सेट और बड़ी तेज तेज हर improvement- episode हर के बाद improvement जो हो है रही है और change हो ये हमने keep up किया तो Exponential हमें progress. I wonder what the next thing is going to be. Are we going to be sitting like, you know, in Dubai? नहीं, अगला मैच स्टेडियम से कवर करने जा रहे हैं पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं, आपको दुबई, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया जिधर दिल करता है बिठा देंगे, टेंशन नहीं लेनी। पहुंचा देंगे। मुझे सिर्फ ये है कि अच्छी बात है कि लोग कमेंट्स वगैरह भी कर रहे हैं। हारिस ने कहा आउट, यस हारिस आउट हुआ है सीधी फील्डर। आप आमना की बात सही थी, आफ्टर द पावर प्ले इट हैज़ स्लो डाउन अ बिट, इवन फिफ्थ ओवर में थोड़ा स्लो डाउन हो गया। 5 ओवर्स का पावर प्ले होता है, 6 ओवर्स का पावर प्ले होता है, 6 ओवर्स का होता है, तो छठे ओवर में आखिरी पावर प्ले के ओवर में भी रन नहीं हुए। सो फ्रॉम एन एवरेज ऑफ लेट्स से more than 10 runs and over, it's come back to 8 runs and over. यार the thing is पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि कोई भी अगर आउट हो जाता है और नया बैट्समैन आता है ना, मतलब एक इंडिया की टीम के खिलाफ आप उस वक्त अगली पहली बॉल से ही मार सकते हो। पाकिस्तान आपको 3-4 बॉल लगेगी जरा करने में। और एक settle और होने चीज़ में। मैं लोगों को भी बड़ी क्लियर करता हूँ, हम बहुत ज़्यादा बॉलिंग की तारीफ करें, बॉलर्स हमारे बहुत अच्छे हैं भी, बट with such pace you also need to realize जिस तरह शुरू में ये लोग खेल रहे थे, रन बनाने भी आसान हो जाते हैं अक्सर। सो डू नॉट थिंक कि ये बॉलर्स कभी रन नहीं खाएंगे। नहीं, ये बॉलर्स ज़्यादा रन खाएंगे क्योंकि मतलब पेस का The जो advantage डाउनसाइड Pakistan यही है has ना। that they can always take a wicket, और यूजुअली होता है कि बैट्समैन विकेट देते हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स ऐसे हैं जो बैट्समैन चाहे विकेट दे ना दे, लूज खेले ना खेले, विकेट ले सकते हैं स्टिल। ठीक है गाइस, आई एम गोना जस्ट कम बैक एंड इन द मीनवाइल आई एम गोना हैंड ओवर द माइक टू यू। आई विल आल्सो हैव टू कम विद यू। चलो, you guys figure this out. मेरा तो अकेला कर लाइक Who doesn't know much about इधर आओ। cricket? Got हमजा, हेलो, दिस इज़ हसीब। और अभी खुद जाओ। हमजा की बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि ये वाली पावर प्ले के बाद स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा रोल मुझे लगता है, स्पिनर्स की वजह से भी काफ़ी विकेट स्लो हो चुका हुआ है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्पिनर्स विकेट कंसिडर किया जा रहा है यस पिछले Agreed. 3-4 मैचेस से। एंड एक तो वो भी फैक्टर है, दूसरा फैक्टर ये है कि जी आपके दो बैट्समैन अभी माइक लगा हुआ है मेरा। they're both new batsmen and पाकिस्तानी bowlers का सामना करने के लिए आपको थोड़ा you need to get comfortable at the pitch first, I believe. And if they do get comfortable, then to of course be having that Afghani strength, having that Afghani power. अगर बल्ला पाकिस्तान- घुमा तो फिर घुमा इनका। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लास्ट मैच में जिस तरह से आसिफ अली ने 4 बॉलों पे 4 छक्के मारे थे, 24 Yeah. रन्स चाहिए थे, Yeah. तो व्हाट डू यू थिंक कि आज भी हमारा लाइनअप थोड़ा फॉल करके आसिफ अली पे डिपेंड करने वाला है, या फिर थोड़ी बेहतरी के साथ, सिंस विराट कोहली की फॉर्म चली गई है और वो कल 0 पे आउट हुआ है, तो आज शायद बाबर की फॉर्म वापस आ जाए, बिकॉज इन दोनों का बड़ा उस तरह से चल रहा है कि एक फॉर्म में तो एक फॉर्म में नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक कि अभी लाइनअप फॉल करने वाला है आसिफ अली पे सारा उस तरह से, या फिर आज बाबर और रिजवान थोड़ा विकेट पे स्टे करेंगे? नहीं, आई बिलीव वैसे तो मुझे हर गेम में ऐसा ही लगता है कि स्टार्ट टू एंड तक बाबर और रिजवान ही खेलेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस तरह का हम नहीं देख सकते अभी तक, बट टुडे आई बिलीव जिस तरह वी वर टॉकिंग अबाउट दिस बिफोर द मैच स्टार्टेड दैट बाबर हैज समथिंग टू प्रूव, रिजवान इज इन हिज बेस्ट, इज इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ राइट नाउ। अच्छा, राशिद खान और मोहम्मद नबी का जो इस मैच में रोल है ना, वो आई थिंक इनके सारे बैट्समैन से बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि हमने बात की स्पिनर्स विकेट है, मोहम्मद नबी, राशिद खान, दे एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वेरी गुड। या तो अभी तो लेट्स सी कि जब पाकिस्तान बैट करना स्टार्ट करता है व्हाट हैपेंस। आई थिंक बॉलिंग के लिहाज से नवाज, शादाब, मुझे इनसे बड़ी उम्मीद है, इवन दो अभी इनका स्पेल शुरू ही हुआ है, बट आई रियली थिंक कि इन्होंने इनके बहुत अच्छे विकेट जो हैं गिरा सकते हैं अफगानिस्तान है, के। बट राशिद खान से अफगानी भी बहुत उम्मीद है, एंड ही इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट बॉलर्स टू हैव जॉइन दिस गेम रिसेंटली। ट्रू दैट। सो आई वुड से कि अगर रिजवान और बाबर, जो मैं चाहता हूँ कि
यहाँ छठे ओवर तक, पाँचवें ओवर तक, I hope they stick around. If they do, however, I think they have a strong grip around the match. And if we can limit them to about 160, 170, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, अगर वहाँ तक हम लिमिट That's कर a very सकें nice उनको, shot though. Sorry to cut you, but that was a very nice shot. So let's hope कि वहाँ तक हम लिमिट भी कर लें, and then Rashid Khan is not a big problem for us. So with Hamza leaving, this all setup is very kind of subtle now because it's very hard to keep up with his energy. But I mean, Ji, we That's a have four. had Oh, the wow. इनको पहला चौका पड़ा, I believe. इस spell में yes, Hamza's almost back. बहुत ज़्यादा स्कोर Yeah, हो गया. the energy, however, is kind of low on screen. No, please. माइक की जरूरत है. Ji, so far Shadab is back with his second over. नहीं नहीं ठीक है बॉयज. 8 कितने पे आ रहे हैं? 8 रन पर ही जा रहे हैं. It's nothing to be worried about as long as I was just talking about Rashid Khan and Mohammad Nabi being on the bowling side. यार spinner's wicket. राशिद खान अगेन स्पेशली पाकिस्तानी बैट्समैन मैं जनरली देखता हूँ राशिद खान के पे मसला है. And he's very good with left-handers, so फखर जमान के लिए I think बहुत ज़्यादा मसला मसला होने वाला होएगा है इस तरह से. और बाबर के साथ भी इसका सही कंपटीशन लगता है. आई एम नॉट श्योर अगर देखा था ये पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान हो रहा था या पीएसएल में हो रहा था. आई थिंक पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एक कोई मैच हो रहा था और इनकी काफ़ी मुंहमारी भी हुई है उसमें. और उसने विकेट चौका चुका मारने के बाद बाबर ने चौका मारा फिर उसने विकेट भी ली है. ली है, of course. सो रॉन्ग वन कराई बट बहुत ज़्यादा बाहर कराई. लकली कवर पे है फील्डर बाउंड्री पे. लाइव चैट. अच्छा मुझे पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान से हारेगी तो मुझे लगता है सिर्फ एक कोलैप्स के सूरत में हारती है. यू नो व्हाट आई मीन कि इंस्टेड ऑफ इट बीइंग लाइक ए ओ क्लोज मैच चेस डाउन नहीं हुआ ये वो सर इस तरह की चीज़ नहीं होने वाली. पकड़ ले बाबर रिजवान बैट पकड़ ले उसका भागने ना दे उसको. अक्सर ये पीछे से जख्मियाँ भी डाल देता है. आई थिंक अभी रिजवान की शायद शादी नहीं हुई इसलिए सारों को डाली जा. आई एम नॉट श्योर रिजवान अगर भाई अगर आप सिंगल हैं और आप क्या नाम लेते हैं मैं अपने लिए नहीं कह रहा मैं वैसे कह रहा हूँ आपके लिए कुछ ढूंढेंगे. मैं शादीशुदा हूँ बाय द वे. खैर पिछले मैच को कंसिडर करते हुए मैं अभी जामी से बात कर रहा था कि आप आसिफ अली का जो रोल जो उन्होंने लास्ट टाइम प्ले किया था ऑफ कोर्स 4 छक्के, तो आपको लगता है इस दफ़ा मैच उस स्टेज तक उस तरह से पाकिस्तान के हर मैच में कोशिश होनी चाहिए कि आसिफ अली की बारी आए ना. Yeah. समझ रहे हो एज अ स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए आसिफ अली शुड बी लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज आसिफ अली is just good for hitting sixes, right? Like that's his That's thing, his thing. Yeah. right? And Asif Ali, if you remember, last T20 World Cup में उसने इंडिया के खिलाफ हमें जितवाया मैच छक्के मारे और एक और टीम के खिलाफ भी आखिर में आके अफगानिस्तानी था अफगानिस्तानी था वो वो. अफगानिस्तानी था. हाँ वो हाँ 24 हाँ रन चाहिए. Last या ball, एग्जैक्टली वो वो तो उसने बेचारा जो बॉलर था वो और वो बॉलर भी अगेन उसके बाद नो हम- ऑफेंस हाँ. वो आई थिंक वो बॉलर को टीम से निकाल दिया. उनका कैप्टन भी था वो खेल ही नहीं रहा. वो कैप्टनसी से भी हट गया वो टीम से भी निकल नहीं गया. उनका क्या इनका कैप्टन मोहम्मद नबी है राइट. अब मोहम्मद नबी है. नहीं ये बहुत इट्स बीन अ Very वेरी देर से लॉन्ग टाइम मोहम्मद नबी है. कि मोहम्मद नबी है. उस टूर्नामेंट में मुसा उस चेक टूर्नामेंट में फास्ट बॉलर था कोई. वही उसने ही छक्के खाए थे. वो कैप्टन भी था आई थिंक छक्के भी उसने खाए थे. अच्छा. वो जरा लास्ट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का T20 अगर निकल सके ना तो विल क्लियर ऑन दैट क्योंकि कल भी कोई जेब में रख लें कुछ ओह चैट वो चैट में कुछ लोग कह रहे हैं हे दिल दिल पाकिस्तान हिराली लॉल लोल्स हसीब वी लव योर कमेंट्री.
हसीब आपके बड़े फैन हैं। जाके जाने के बाद थोड़ा I feel like I should now leave and like it's a perfect. Is Shadab Khan just a wrong one Amna merchant? should come back. Amna And like will. you You're gonna four have to are the stay. perfect people to sit and do the commentary. हम अच्छा मैच चल रहा है 65 for 2 and nothing overly exciting interesting, happening तो हम ये सवाल बड़ा अच्छा आया है कोई साहब हैं मुस्तफा जफर साहब इनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते हमें नहीं पता कौन जी, है जी। रैंडम लोग इतने ज़्यादा एक तो हमारे देख रहे होते हैं ना सवाल अच्छा पूछ रहे हैं बारह इस शदाब खान जस्ट ए रॉन्ग वन मर्चेंट कहने का मतलब ये है कि इस शदाब खान ओनली गुड फॉर द रॉन्ग वन शदाब की बहुत अच्छी है बहुत ज़्यादा भी करवाते हैं अगर हमारी स्टार्ट टीम निकाल सके कि शदाब की क्या परसेंटेज है रॉन्ग वन की कंपेयर टू लेग स्पिनर तो हमारी स्टार्ट टीम भी थोड़ी सी हंस रही है उधर आई स्टार्ट थिंक टीम निकाल ले तो मुस्तफा जफर क्या का जवाब कल मैं नहीं इतना सरप्राइज था वैसे यार ये जो भी कर रहे हैं इनके बड़े उन्होंने कल अश्विन के निकाले हुए थे कि 7 से 11 ओवर में जब वो ओवर्स करा रहा होता है तो लेफ्ट हैंडर्स को कितने परसेंटेज वो कैरम बॉल कराता है और कितने परसेंटेज वो ऑफ स्पिन कराता है बहुत प्रिसाइज स्टार्ट्स है इनके पास आई थिंक सॉफ्टवेयर इनके बहुत फिट बने हुए अच्छा हैं आप लोगों को लगता है कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्टैग्नेंट रहना था अगर रविंद्र जडेजा जो है वो टीम में रहता बिकॉज वो एक हाइब्रिड ऑलराउंडर प्लेयर एंड वेरी वेरी गुड विद हिज स्पिन ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑस्पिन Definitely was a big gap within the team that he wasn't there, Jadeja. Jadeja I think is a good off spinner I think Jadeja is also a good fielder बट ऑल्सो द काइंड ऑफ एनर्जी ही ब्रिंग्स इनटू द टीम into the team in fielding but जडेजा का एक चीज़ नोटिस करना नेक्स्ट टाइम जब भी देख रहे हो जडेजा प्रेशर में चोक करता है जडेजा प्रेशर में चोक करता है कुछ प्लेयर्स होते हैं उनका रिकग्नाइज आप कर लेते हो आई वुड ऑलवेज वांट हिम इन द टीम अगेंस्ट मी इन अ प्रेशर मैच बिकॉज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जडेजा को समझ ही नहीं आ रही थी नहीं चौका जडेजा को समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एक रनआउट भी शायद उसने करवाया था हार्दिक का करवाया था रनआउट आई डोंट नो आई समहाउ थिंक कि वो बहुत ज्यादा ना वो जो पुरानी टीम का राइना पार्ट प्ले करता था ना वो करता टीम में आई थिंक ही इज वेरी टैलेंटेड एज अ क्रिकेटर बट आई जस्ट फील ही फेल्स इन उस मैच में भी चेक करो पाकिस्तान इंडिया का जो पहला मैच हुआ था इफ यू सॉ दैट मैच आखिरी ओवर नवाज करा रहा है और पहली बॉल पर इसने छक्का मारते हुए बोल्ड हो गया है जडेजा अच्छा हाँ प्रेशर वापस या टीम पर आ गया टीम पे आ गया पांड्या ऐसा प्लेयर है जो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा प्रेशर सिचुएशन में मेरे खिलाफ टीम में हो हार्दिक पांड्या हाँ क्योंकि बिकॉज़ ही एंजॉयज दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन एक आपको he gets the fun out of it. वाइज भी लगता है कि यार इसने संभाला है धोनी का और युवराज का भी सेम सीन था कि आपको लगता था सिचुएशन जितनी मर्जी बुरी हो ना ये दोनों खड़े हैं ना तो ये उनको ना वो सॉर्ट ऑफ चस्का लेने का वो वाला मजा था उनके अंदर वो लेते थे एक मजा था पाकिस्तान इंडिया हमने तो दिन पता नहीं याद है कि नहीं एक मैच देख रहे थे सीरीज हो रही थी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और इनको कोई तब क्रिकेट तब 6 रन पर ओवर से भी ज़्यादा चाहिए हो तो होता था कि बड़ा प्रेशर सिचुएशन है वनडे गेम्स में और धोनी और युवराज थे और उनके नीचे टेल शुरू हो जानी थी और बहुत ज़्यादा जो कमेंटेटर्स का था कि वो पाकिस्तान फेवरेट बट मी सिटिंग एट होम never thought that Dhoni and Yuvraj because they are such strong cricketers and such strong minded very calm handles the situation वो हर ओवर में चौका निकाल रहे थे विदाउट एनी क्या नाम लेते हैं प्लेइंग एनी रैश और अननेसेसरी शॉट और वो दोनों ही एंड तक चेस करके ले गए तो हार्दिक पांड्या में वो चीज मुझे नजर आती जडेजा अनफॉर्चुनेटली आई सी के तो he's a very senior player and he's a very senior player he is a very good batsman as well but pressure situation also what's the reason of Indians calling him Sir Ravindra Jadeja I don't know there's this notion in India कि they always call him Sir Ravindra I have Jadeja no I idea. don't know why I don't even know the कोई उनका आपस में inside joke वगैरह होएगा I really don't know बट मुझे ये पता है कि एक दफ़ा इंजमाम हंस गया था पाकिस्तान इंडिया सीरीज हुई राना नवीदुल हसन मैन ऑफ द मैच था अच्छा तो इंजमाम से पूछा कि यंगस्टर राना नवीदुल हसन लाइक आपका यंग प्लेयर आया है और उसको मैन ऑफ द मैच दिया है तो इंजमाम ने कहा मेरे से भी उम्र में 3 साल बड़ा है यंगस्टर इसको ना कहो तो इंजमाम क्या है इंजमाम क्या इंजमाम बड़ी बड़ी फनी बातें कर चुका है मैं 3 कोर्स में एक बार ICL एक चीज़ होती थी इंडियन क्रिकेट लीग मुझे पता है ICL में होती थी एक बनी थी रेबल लीग कि वो इंडियन बोर्ड से सैंक्शन नहीं थी अच्छा ये एक प्राइवेट लोगों ने शुरू की थी Didn't that convert into PSL? नहीं PSL तो IPL नहीं IPL उसके बाद शुरू की तब इंडिया ने
T20 क्रिकेट को फुली अडॉप्ट नहीं किया था, इवेंचुअली डाइड आउट। उसमें लाहौर से भी काफ़ी प्लेयर्स नेशनल टीम कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़ के उधर खेलने गए थे, जिसमें इंजमाम और बड़ी अच्छी टीम वहाँ पे गई थी, जिसमें इमरान नज़ीर वगैरह, और ये पहली बॉल चौका चौका चौका। ऊपर निकल गया। So 7.2 runs in the first 10 overs. Drinks break हो गई है. They're going at 7.5. They will try and accelerate that. They want to get a total between at least 160 and 180. 180, like yeah. 160, 170 उनका वो होएगा target. 170, like higher 170s में. But I think minimum 8 runs per over भी तो end up करेंगे if they want to compete in this game. Do you Anyway, think Pakistan kind of taking it easy towards Afghanistan team? यार मैं वही बात कर रहा था ना, इंडिया होती है तो हम बहुत ज़्यादा जोश में आए होते हैं। अभी ठीक है, ठंड है, कुछ नहीं होता, नॉर्मल T20 मैच है, हाँ, चलने दो। एंड विच इज़ फाइन, लाइक आई रियली डोंट माइंड एज लॉन्ग एज दे एंड अप doing great. विनिंग। Yeah. दैट्स लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर अ विन टुडे। बट इंतज़ाम ने ICL में कहा था देयर वाज अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर इन द एयर। आई थिंक ये उसकी, या उसने ये कहा था, उसने कहा था इट इज़ वेरी हार्ड टू फिंगर वन प्लेयर। इस तरह की ना बाद में से पूछा था कि किस प्लेयर की गलती है भाई, इट इज़ वेरी हार्ड टू फिंगर वन प्लेयर। What is science? Science is the man. तो उस ज़माने में प्लीज़ वाइड ना नहीं, प्लीज़ वाइड, वन फॉर दी ओवर दी, गुड 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 गुड। अच्छा, उस ज़माने में, अच्छा ये भी चीज़, अच्छा मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ, डू यू अग्री विद, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट होता था पाकिस्तानी प्लेयर्स को जी अंग्रेज़ी नहीं आती, इंडियन प्लेयर आते हैं और फर अंग्रेज़ी बोलते हैं, भाई उनका काम क्रिकेट खेलना है कि अंग्रेज़ी लेकिन बोलना अब ये चीज़ बदल गई है ना, it's changed पूरे ओवर दीज ईयर्स। अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है हर प्लेयर, और उनको लगता है कि बल्कि हम अगर किसी चीज़ को एड्रेस करें किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी वैसे किसी आफ्टर मैच इंटरव्यू में, तो हम उर्दू में बोलें ताकि हमारी सारी जो आवाम है पाकिस्तान की वो समझ सके उसको। आई थिंक उर्दू, बिल्कुल उर्दू में बात करनी चाहिए, उर्दू में बात आई थिंक थ्रू आउट करनी चाहिए थी, बट एट द सेम टाइम डू यू थिंक दी वो एक एडेड अनड्यू प्रेशर है प्लेयरों पे अभी भी शायद थोड़ा सा हो? यार आई डोंट थिंक, अब आई थिंक उस ज़माने में थोड़ा ये भी था कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस उस तरह की नहीं थी ना। द रीज़न अभी भी, इट्स नॉट लाइक हमारे प्लेयर्स शायद अटैम्प्ट नहीं करते हैं, अभी भी दे मे बी से सम स्टफ जो इनमें मिसहैप्स हो सकते हैं, बट अब उन दे आर नॉट लाइक नोबडी इज पॉइंटिंग फिंगर्स एट देम। दे अभी रिसेंटली आई सॉ अ ट्वीट, समबडी वाज मेकिंग फन ऑफ वन ऑफ आवर प्लेयर्स, इन सम इंडियन गाय मेकिंग फन ऑफ वन ऑफ आवर प्लेयर्स, वो बात करते हुए, तो उसने कहा यार बात जैसे मर्जी करे, मैच तो जीत गया ना, मतलब परफॉर्म तो करता है ना जाके, तो इट डजंट रियली मैटर। सो दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। आई थिंक जब प्लेयर्स जो काम वो करने आए हैं वो ठीक तरह कर रहे हैं, तो बाकी एवरीथिंग एल्स इज सेकंडरी करनी चाहिए ना। आई एग्री विद दैट 100%। और एक अजीब किस्म की कॉलोनियल मेंटालिटी भी आई थिंक इससे ना सामने आती है कि जी आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे, और वो आपका फिर क्लास सिस्टम भी सामने आता है कि जी these guys, like again their job is to perform on the pitch, on the ground, not in the press को। लेकिन वो बड़ा कूल लगता है ना, फिर विराट कोहली ने वाह क्या जवाब दिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के उस तरह करके। जवाब तो अभी भी मतलब बाबर आजम भी बड़े अच्छे दे रहा होता है, फिर उर्दू में दे रहा होता है, उर्दू में दे रहा होता है, देना भी इनको बात भी आई थिंक उर्दू में ही। आई थिंक जनरली पाकिस्तान टीम की एक ज़माने में हरकतें ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन इन लोगों की जो है ना बहुत ज़्यादा, लाइक आई थिंक मोर देन चौका खाने के बावजूद 11वें ओवर में सिर्फ 5 रन हुए, एक 4 चौका हुआ और एक सिंगल हुआ। 77 for 2 after 11 overs. If you're not watching the game and just watching us live, which you probably are because we are much more entertaining than any cricket that's going on. Oh my God, love the confidence. Yes. और ये मेरे कहते हुए एक 1% watching, और वो भी I think हम में से कोई देख रहा है। Oh, I'm watching myself, so it's technically just me talking to myself. Wow, what a void we live in. We haven't shared the link, so. I don't know, मैंने तो नहीं किया इस दफ़ा, but कर दो मेरे स्टोरीज, मुझे दे दो मैं अपनी स्टोरीज में। WhatsApp? Can you hold this for a bit? So tomorrow is India versus Afghanistan. हाँ, अफगानिस्तान ने वन टुडे तो कोई जान रहती है मैचेस में, वरना मैचेस में जान बिल्कुल ख़त्म है। लाइक मुझे सिर्फ क्या ये सॉरी कैच, और मुसा साहब ने स्क्रीन हमारी छोटी कर दी, नहीं छिक्का होएगा प्रॉब्लम। नहीं कैच शुक्र है फखर ने कैच पकड़ा ऊपर से। ओए होए Fakhar is back. क्या बात है। शान शाहिद आपने देखा, शान देखा कैच पकड़ा फखर ने, देखा चल तेरी
यार इसकी छोटी छोटी क्लिप्स बना के ना बाद में इंस्टाग्राम पे जूम लगा इन देना। करते हुए सिंपल कैच बट अ ग्रेट कैच अगेन नवाज स्पिनर्स विकेट मुश्किल कैच था, काफी देर तक बॉल ऊपर थी, लाइटें भी जली हुई हैं लेकिन आराम से पकड़ लिए। फंस रह जाएगा, कुछ भी बेचारा बहुत ज्यादा और है, इसको पता है। आज चलेगा ये, आज चलेगा। यार हो जाता है, एनीबॉडी कैन हैव अ बैड डे। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका एक रोल है टीम में, इसने एग्रेसिव खेलना है, इसने आपको पता है एक लड़का हिट मारने में भी अच्छा है, रन भी तेज करता है, रनिंग Fielder भी अच्छा, decent है। फील्डर भी अच्छा है। आप अनड्यू क्रिटिसिज्म क्यों करोगे अगर आपको पर्सनल कोई प्लेयर अच्छा, जिस तरह फर्ज करो मुझे हारिस रऊफ, आई डू नॉट, मुझे इतना आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ हारिस रऊफ बिकॉज आई फील ही कैन लीक टू मेनी रन समटाइम्स, और उसके साथ आई थिंक होता दैट्स रहा भी है। अनफेयर। बट मेरी एक पर्सन, बट ओवरऑल लेकिन मैं उसको कभी ये नहीं कहूंगा कि ही डज नॉट डिजर्व टू, यार भाई 150 प्लस एक जो बॉलर करा डेप्थ रहा है। बॉलिंग करता है ना वो, जिस तरह उसने लास्ट मैच में आखिरी ओवर में, आई एग्री 100%। मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ हारिस रऊफ टीम में हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे जाती तौर पे एक प्लेयर नहीं पसंद, उमर अकमल फर्ज करो नहीं पसंद, फॉर गुड रीजन, आपको शायद अगर उमर अकमल नहीं पसंद ना पसंद हो, बट अगर वो नेशनल टीम को सर्व कर रहा है और वो खेल रहा है, और टूर्नामेंट के दरमियान क्रिटिसिज्म करना ना, ये ना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है उनको ट्वीट्स नहीं पहुंचती। हाँ यार आई होप ना पहुंचती हूँ। नहीं पहुंचती, ना, ऐसी पहुंचती नहीं, है। नहीं, हाँ ना आप रोक नहीं सकते ना आजकल, किस तरह रोकोगे इन्फॉर्मेशन पहुंचने पे? हर जगह न्यूज़ मीडिया, मैंने फ़खर जमान ट्वीट शान शाहिद लिखा है, 400 आर्टिकल आ गए। बट आई स्टिल थिंक कि कोई ना कोई प्रोटोकॉल टीम्स वगैरह भी लेते हैं मैच वगैरह से पहले, कि आप अपने प्लेयर्स को बोलें कि स्टे ऑफ सोशल मीडिया, डिस्करेज स्टे किया ऑफ, जाता है यार, रोक नहीं सकते आजकल। यार आपको पता है आपके बारे में लोग बकवास कर रहे होंगे, आप जाके पढ़ोगे तो सही। या अग्रीड। एंड बट स्किन भी बड़ी थिक हो जाती है आपकी, आपको फिर मैं ये भी कल देखा था जब इनका वो आया था यंगस्टर इंडिया का फास्ट बॉलर, उसकी कल एट द स्टार्ट ऑफ द गेम एनर्जी से नज़र आ रहा था दैट ही टुक सम ऑफ दैट यू नो पर्सनली, एंड वो उस तरह से उसकी जो बॉडी लैंग्वेज था दैट कुड टेल कि ही वाजंट यू नो कंप्लीटली फीलिंग। यार वो जान भी निकल जाती होगी, पता नहीं घर ना पहुंच जाए, कुछ तोड़ फोड़ ना कर रहे हो, मेरे पुतले बना के ना जला रहे हो। इंडिया में ये भी तो बहुत ज्यादा गंद है। इनसाइड एज। अच्छा ये भी आई थिंक, या इंडिया में ये, या एक और पाकिस्तान में कभी इतने माइनॉरिटीज खेले नहीं ना कि हमें पता हो कि ऐसा। हमारे दानिश कनेरिया बहुत देर खेला है। यार क्या बात है, यूसुफ यूहाना खेला था उसको हमने, लेकिन मोहम्मद यूसुफ भी तो हो गया वो, लेकिन कभी भी ये मुझे नहीं लगता कभी ये बात एटलीस्ट पब्लिक उस लेवल पे पाकिस्तान में नहीं, पब्लिक फिर सबको ब्लेम करती थी, उनके लिए सबको वो ब्लेम करती, बट ये कहाँ, ये मैंने वैसे पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं देखा कि आई रिमेंबर मोहम्मद यूसुफ, जो यूसुफ यूहाना, दानिश कनेरिया एक वो था, और अल्लाह का शुक्र, मैं कुछ नहीं कहूँगा बस आगे। बट अगर आप ये देखो पॉपुलेशन वाइज भी पाकिस्तान में भी ये बहुत होता है, पीपल डू बैकलैश आपको मिलता है। इंडिया में बिकॉज देयर सो मेनी मोर पीपल विद सो मेनी मोर वॉइसेस, you know, it's harder to block that out. Pakistan में there would always be a lesser number of people saying, you know, जो backlash आपको दे रहे होंगे। यार हाँ, बट पता है काफी दफा ये जो मजाक भी उड़ता था, टायर जलाने वाला, टीवी तोड़ने वाला, मतलब हम सारी जिंदगी क्रिकेट देखते रहे, मुझे मतलब गलती से जो हमने एक टीवी तोड़ा था एक्साइटेड होके वो मैच में, हाँ मैंने तोड़ा था, मुझे मार पिटी थी सारी यार। मुझे एक तो मुझे तार दी, अच्छा मैं बताता हूँ स्टोरी एक सेकंड। उसके अलावा मुझे नहीं पता अगर टीवी टूटते हैं या इस तरह कोई लोगों के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और लाइक टायर जलाते हैं या कोई इस किस्म की, आई लाइक नॉट दैट आई नो ऑफ। सेलिब्रेशन के लिए गन बड़ा पड़ता है। अभी ये एक पाकिस्तानी ऐड था शायद कि इंडिया वाले लेके आए हैं, सारे फायरवर्क्स लेके आए हैं, वो वेट कर रहे हैं, आखिरी बॉल हुई है और इंडिया हार गई है, बेल बजती है, पाकिस्तानी वाले खड़े होते हैं बाहर के यार जो आपने ख़रीदे थे वो हमें दे दें, हम ख़रीदना भूल गए थे, और फिर वो जाके वो फायरवर्क्स चलाते हैं। सो दैट वाज अ वेरी क्रिएटिव ऐड एंड Yeah, but I'm glad that mauka culture's gone. नहीं, वो तो इंडिया वालों ने खुद बंद किया। Spirit of the game, this team, especially Babar Rizwan leading from the front, ये बड़ा ही बहुत ही भाईचारे वाला कल्चर ले आए हैं। नहीं भाईचारे वाला कल्चर ठीक है ना, बट आई डू नॉट इवन माइंड द मौका बैंटर होना चाहिए, बैंटर से थोड़ा मजा आता है, और वो एक एथलीट ऑल्सो ये जो पुराने दौर का शुएब अख्तर वाला ये जो क्लैश चलता होता था ना कि बैट्समैन को डराना, और वो जो मैच के बीच में, आई मीन अब बहुत अच्छा एथिकली माहौल बड़ा फिट हो गया है, बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नहीं आई फील ये वर्ल्ड कप में मिलेंगे, माँ बहन करेंगे एक दूसरे की, ये वर्ल्ड कप में मिलेंगे, कोई स्टेक्स आए होंगे ना तब करेंगे, स्पेशली हमारे बॉलर करेंगे।
बैट्समैन का रिजवान फिर भी जाके झप्पियां झप्पियां लगा रहा होगा। रिजवान माहौल को बहुत चिल कर देता है, ही इज वेरी शाहीन अभी भी करता है, अभी भी करता है। शाहीन अभी भी करता He है, is शाहीन अपने उसमें कर लेता है, नहीं, लेकिन PSL में कर लेता उसका है। ही कैन ना, बिकॉज ही कैन, क्योंकि और एज अ फास्ट बॉलर उसका वो रोल सूट करता है, बिकॉज व्हेन यू आर यार, अ आपने फास्ट जब बॉलर यू obvious- नीड टू हैव द अदर वन एट द कॉर्नर ऑफ हिज सीट. Catch You it! also get better doing it. Like I feel like your performance is also better. Yes. You Now- have that kind of energy and adrenaline. One more thing that I would like to point out, इब्राहिम साहब आए हैं, ये तीसरी विकेट को कैच आउट हुआ फखर ने जो किया है। हाँ, तो इब्राहिम साहब आए हैं, ये 26 बॉलों पे इन्होंने सिर्फ 25 रन किए हैं, कि 25 बॉलों पे सिर्फ 26 रन किए हैं, और इनकी अभी जो बहुत ही गंदी एवरेज, बहुत गंदी एवरेज है, और दूसरा इनकी ओवरऑल रन रेट भी 6 रन पर ओवर पर आ गई है अभी। तो अब हम, तो आप जब भी नोटिस करेंगे, लोग, एक और भी चीज़ मैं देखता था क्रिकेट में कमेंट्री में, अक्सर पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी, काफ़ी स्लो खेलती थी पाकिस्तान, तो वो क्रिकेट के अलावा ना और चीज़ों की बात करने लग जाते थे। तो अभी भी हम जिस तरह और चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैच में कोई कुछ हो नहीं रहा। एक्शन 6.5 की स्ट्राइक रेट से भी, वो रन रेट से भी खेल रहे हैं। तो अभी बहुत मैच काबू में कर लिया पाकिस्तान ने। नहीं, मैच काफ़ी हद तक काबू में है। अगर इस पॉइंट पर एक विकेट एक आधी और और गिर गिर जाती है तो वो प्रेशर और I बढ़ think जाएगा, अब- फिर शायद 140 के अंदर अंदर पकड़ लेंगे। आई थिंक वही बात है, अभी ये किसी पॉइंट पे एक्सेलरेट करने का उनका यही होएगा कि हम 15th ओवर के बाद या 14th ओवर के बाद जब भी एक्सेलरेट करने की कोशिश करें, तब विकेट्स भी गिर सकती हैं और रन भी काफ़ी। हो सकते हैं, दोनों तरह जा सकते हैं। एज अ पाकिस्तानी फ़ैन आई वुड वांट के इनसे तो 100 रन भी ना हो, बट एज अ क्रिकेट फ़ैन आई वुड वांट के एटलीस्ट 150 रन, 160 रन का। सेकंड हाफ थोड़ा एंटरटेनिंग तो ना। या बट वही बात है, आई रादर हैव अ बोरिंग मैच दैट पाकिस्तान विंस देन अ एंटरटेनिंग मैच दैट पाकिस्तान लूजेस, स्पेशली एट दिस स्टेज। इसलिए इंडिया वाला मैच ना, मैं इतना जो हारे थे वो माइंड नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था हांगकांग को हरा के वो एक तरह से लो स्टेक मैच था। उन मैचेस में ठीक है, एंटरटेनमेंट हो, मज़ा है, हर चीज़ अच्छा लगता है। इन तरह के मैचेस में इजी विंस एज अ पाकिस्तानी फ़ैन आई प्रेफर। अभी भी जिस तरह पिछले दिनों सब बात कर रहे थे कि यार इंडिया हार गया, मैंने इनको फाइनल में देखना था पाकिस्तान के साथ, मैं उनको ये कहा था कि क्यों देखना है, टेक द विन, कोई आसान मैच लो, श्रीलंका के साथ लो, बट वही फिर अफगानिस्तान ब्रो, श्रीलंका के साथ मैच आसान नहीं होने वाला, ये देख लेना। हाँ, लेकिन इंडिया के साथ जो आप प्रेशर खाते हो वो आप श्रीलंका के साथ नहीं खाओगे। नहीं, एक श्रीलंका के साथ नहीं खाओगे, एक और मसला भी है, श्रीलंका के साथ बैक टू बैक 2 मैच, अगर आज पाकिस्तान जीत जाता है, बैक टू बैक 2 मैचेस होंगे, एक आपका डेड रबर होएगा, विच इज़ जस्ट, और अगेन इनको कुछ करना चाहिए, इस तरह के डेड रबर ना कराओ, वैसे ही पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। यार हाँ, I didn't really appreciate the Super 4 वाला पूरा चीज़, they could have just gone into like नहीं, चलो जो भी सेमीफाइनल्स करके फाइनल करा देते, पाकिस्तान इंडिया एक हो जाता, एक श्रीलंका अफगानिस्तान हो जाता, और आज श्रीलंका पाकिस्तान फाइनल हो रहा होता। तो यस, आई एग्री विद दैट, ये होना चाहिए था, बट आई थिंक वो चाह रहे थे कि 3 पाकिस्तान इंडिया मैचेस निकल आए किसी तरीके, वो पैसे कमाने के चक्करों में ना। डू यू थिंक कि बीसीसीआई हैज अ बिग रोल इन ऑल ऑफ दीज, जिस तरह आपका एक for टूर्नामेंट sure. बनता For है, sure. एक आप टूर्नामेंट क्रिएट Yeah. करते हैं, दो 6 runs. 6 runs. It wouldn't have been a 6. Probably wouldn't have been a 6 in the Dubai stadium. But इसमें हाँ छिक्का ये बनेगा, और yes, and I think they have broken the shackles a bit. लेफ्ट-हैंडर को यूजुअली कंसिडर किया जाता है, आसान होता है लेग स्पिनर खेलना, अगर बॉल वो, मुझे नहीं पता उसने रॉन्ग वन कराई है कि दूसरी कराई है। ये अब रॉन्ग वन कराई है, और तेज़ भी कराई है, 90 पे कराई है। अच्छा, so the wrong one, if I'm not sure, is what picks up pace after वो फ्लिपर होती है जो पिक पेस करती है लेग स्पिनर की, वो होती है जो ठप्पा खा के सीधी निकल के एकदम से लगता है ठप्पा खा के तेज़ निकली है। जो दूसरा अगर आता है, that's also a googly, no? गूगली नहीं, गूगली अंदर की डिफरेंट साइड पे स्पिन करती है। फ्लिपर होती है जो सीधी निकलती है, तेज हो जाती है, सीधी तेज हो जाती है, वो ठप्पा खा के तेज हो ठप्पा जाती खा है के तेज हो जाती है, ठीक है। वो एयर में लगता है कि इतनी तेज नहीं आ रही, पर ठप्पा खा के एकदम से तेज निकलती है। जो उनकी रेगुलर होती है वो राइट हैंड बैट्समैन से दूर जाएगी, जिस तरह मैं तुझे उस दिन करा रहा था गली के अंदर, ठीक है ना, और आप सीधा खेल रहे होते हो और बाहर की तरफ जाती है, और रॉन्ग वन बंदे की तरफ। बचपन में खुद क्रिकेट खेलते हुए ना काफ़ी ये नोशन होता था कि एक ओवर में
एक शूटर अलाउड है. आई थिंक दैट्स द फ्लिकर. शूटर नहीं, फ्लिपर फ़र्क होती है. फ्लिपर अच्छा ये बहुत टेक्निकल चीज़ है. इसमें बहुत अच्छी शेन वॉर्न की वीडियो है, उसने तीनों चीज़ें सिखाई भी उस May he पर. rest in peace. में ही रेस्टोरेंट. शूटर जो तू कह रहा है ना वो फ्रीदी कराता था. हाँ. वो सीम अप करके सीम अप करके सीधी मारता था. वो फ्रीदी कराता था. वो Flipper लेग्स वो है जो इमाद कराता है. फ्लिपर नहीं, इमाद तो करा ही नहीं सकते. इमाद तो लेग स्पिनर है ही नहीं. Sorry, not इमाद. What's his face? ये एक और कैच या एक और छिक्का. एक कैच. कैच फिर से फखर ने पकड़ा. अल्लाह मियां फखर ने पकड़ाओ. अल्लाह मियां फखर ने पकड़ाओ. फखर. एंड आमना ही कह रही थी कि अगर अभी विकेट गिर जाए तो फिर मैच फंस जाएगा. एंड उम्मीद है कि मैच फंसने लगा है. मैच बस बस कंट्रोल में आ ज़्यादा आ जाएगा. जाएगा. एक सेकंड शान भाई देख रहे हैं. फखर ने एक और कैच पकड़ा. एक मैच में 2 कैचेस. इतनी आपकी कोई पिछले 10 साल में हिट नहीं हुई जितने उसने कैचेस पकड़े. पिछले मैच को आई थिंक अब फखर जो है ना बहुत ही सेफ हैंड से उसने. पिछला मैच उधर ही कवर किया है कि नहीं किया. पिछले मैच अगेन मैं जो इंडियन पर्सपेक्टिव की बात कर रहा था, कल पूरा दिन 10 शदाब लुक लाइक ड्रिग. नो मुसवा जफर आप पता नहीं कहाँ इधर हमें गोरों के साथ जोड़े हैं. गोरा तो चलो नहीं, बट आई डोंट थिंक ही लुक्स लाइक ड्रेक. या मैंने ड्रेक को इतने गौर से नहीं देखा. It's the beard. I It's the think. beard, yeah. He does look like. So wherever ये you नबी are, आया ना. it could be. ये नबी है ना. ये इनका कैप्टन है. आई थिंक यस. हाँ नबी कैप्टन है, मुझे पता नहीं है कि ये इनका नबी है. कैप्टन. आई थिंक ये इनका नबी कैप्टन है. मुझे अच्छा. आई थिंक 14 ओवर्स डाउन इनको राशिद खान को भेज देना चाहिए था. ही इज अ नाइस. Yeah, he is a cricketer, but again, I think 14 overs are next down वही होगा. 6 overs, like 6 तीन over खेलने हैं, या 36 तीन. बॉलें हैं, they want I think राशिद खान ऐसे 3 ओवर के लिए ना ideal, 3 overs के लिए ideal. Even someone like आसिफ मोहम्मद जो हमारा जो हिटर है, आसिफ अली. आसिफ अली. हाँ, I would आखिरी हाँ 3 खेले, 3 से ज़्यादा ओवर में. जिस दिन उसने 6 ओवर खेले ना उस दिन 200 उसने 6 ओवरों में पूरे करने. कैप्टन कौन था उनका? मोहम्मद नबी था. मोहम्मद नबी ही था उस मैच में कैप्टन कौन था मुझे बताओ. मोहम्मद नबी होगा. जिसने आसिफ अली को ओवर कराया था और बहुत ज़्यादा छक्के खाए थे वो करीम नबी था. कैप्टन कौन था? कौन सी? ब्यूटीफुल इनसाइड एज. ब्यूटीफुल. अब तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और आई थिंक अब राशिद खान प्रॉब्ली आ जाएगा. सो अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑल अफगानी फैंस जो हमें हज़ारों और लाखों की तादाद में भी देख रहे हैं, मोहम्मद नबी वाज द कैप्टन. कैप्टन भी वही होएगा या नहीं कोई और नहीं कैप्टन था मोहम्मद उनका? नबी था बिकॉज़ आफ्टर मैच स्पीच मुझे उसकी याद है. एक और बंदा था इनका. Oh, he looks. Devastated. And for all the thousands and thousands and thousands and probably millions in by now because wicket गिर गई है of Afghani fans watching us, I feel really bad because of this. Like I feel your pain. I feel your pain. But I feel out of all the teams जो अभी सीन पर आई हैं, एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को शायद ये ना पता हो, श्रीलंका was also not an old cricketing nation as old as probably Pakistan and India. So they really developed really well and won the 96 World Cup और वहाँ से they have become a formidable force. उसके बाद से Bangladesh team has improved a lot, but A lot. Yeah, Bangladesh has invested so much in cricket, but उसका कोई return नहीं नजर आ but रहा मुझे. again उस तरह करके कि बांग्लादेश पाकिस्तान सीरीज हो, I wouldn't expect Bangladesh to win that series or with any top 6, top 8 team. No, actually I would because in the last 2 or 3 years बांग्लादेश ने अपना जो लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया को अभी बांग्लादेश ने हराया रिसेंटली. ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने हराया. बावे ने हराया. That was a surprise. Zimbabwe. उनका तीसरा मैच था एंड उसके अंदर पूरी टीम ही नहीं खेल रही थी उनकी. Still यार अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बी टीम को भी हराया इसका मतलब है जिम्बाब्वे. अग्री. और एक और चीज़ है जिस तरह हम इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलते हैं उस तरह अफगानी हमारे खिलाफ भी खेलते हैं थोड़ा सा. तो ये भी बंगाली. हाँ. So they do seem a bit disappointed, Yeah, I these don't guys. know if they play इतना बुरा है. I think because अभी PSL की वजह से नहीं, थोड़े थोड़ी सी ताल्लुकात team बेहतर वगैरह में हैं. हर चीज़ है ना, हम भी- I think बांग्लादेश ज़्यादा खतरनाक तरीके से खेलता है हमारे खिलाफ. Is there a Bengali player in PSL? Maybe शायद खेला हो. I'm not sure. कोई मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छा वैसे एक्सेप्ट फॉर उनका लेफ्ट आर्म शायद एक फास्ट बॉलर है जिसको शायद रखा हो जो बड़ा अच्छा एक टाइम पे बॉलिंग करा रहा था. उसका नाम मुझे नहीं आता. ऑल द बंगाली फैंस वाचिंग प्लीज़ कमेंट करें उस बॉलर का क्या नाम है.
शाकिब जो है शाकिब खेला था, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेला था, बट अगेन few and sparse talented enough players to even play in the PSL unfortunately. Even with Afghanistan, जजाई खेलेगा, राशिद खान को आप खिलाओगे और इनकी टीम में से प्रॉब्ली आप किसी को सेलेक्ट नहीं करोगे, मे बी दिस अदर ओपनर जो ओपन कर रहा है उसको शायद आप खिलाओ, नबी को खिला लो शायद आप, नबी का अगेन मुझे नबी को एज एन ऑफ स्पिनर खिला सकते हो, एज अ बॉलिंग, एज अ मिडिल ऑर्डर, बट अगेन आई नेवर सी नबी विनिंग अ गेम. मुझे वो लाइक मेरा वो पर्सनल एक बायस हो सकता है, जिस तरह मैं राशिद खान को रेट करता हूँ उतना मैं नबी को रेट ना करूँ. एक्चुअली बैटिंग स्टैट्स नबी के राशिद से बेहतर है, बट राशिद क्या एक all-round नबी को आप शोएब मलिक की जगह खिलाओगे टीम में, नॉट एट ऑल, है ना, वो आप फिर उसको कर, बट आप राशिद खान को शादाब की जगह खिला लोगे. तो उस जब मैं उस तरह सोचता हूँ ना, तो मुझे राशिद खान, बिकॉज राशिद खान इज प्रॉब्ली इफ नॉट the best and one of the best spinners in the international circuit right now. Right. आफ्टर सुनील नरेन ऑफ कोर्स. सुनील नारायण खेल रहा है अभी भी या वेस्ट इंडीज, या he's still playing. ही स्टिल प्लेइंग. उसका लेकिन एक्शन का मसला नहीं हो गया था उसके बहुत? एक्शन का बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आया था, लेकिन वो रिजॉल्व हो गया था. प्लस वो वाहिद आई थिंक स्पिनर है जो डेप्थ बॉलिंग में उसने मेडन ओवर निकाले. आईपीएल खेला अभी? आई थिंक यस, क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों ही देख रहा था, उसकी कोई रीसेंट वीडियोस भी आई हुई थी, तो उसका वो कॉन्फ्लिक्ट जो चला था वो समवट रिजॉल्व हो अभी चुका हुआ था. पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई है, उसमें तो नहीं था वो, जो ये कितने अर्से पहले की बात है? काफ़ी देर पहले की बात, अच्छा. 2-3 साल हो गए आई थिंक. लास्ट जब पाकिस्तान आई थी वेस्ट इंडीज़ की टीम, तब तो उसका वो नहीं आया था काफ़ी देर से. वैसे मैंने उसको इंटरनेशनल सीन पे देखा नहीं, आई डोंट रिमेंबर. मुझे सुनील नारायण का ज़रा चेक करके कब उसने आखिर, ही वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, और वो ही उसका था सिंपल एक्शन, बट कैरम बॉल दूसरा वगैरह बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी उसके पास. मेंडिस भी था एक श्रीलंका का बॉलर, अजिंता मेंडिस, उसको भी लेकिन जब एक जब पकड़ लिया ना बैट्समैन ने उन सारे बॉलर्स की वेरिएशन. लेकिन सुनील नारायण को नहीं पकड़ पाए ना आज तक. वो मुझे नहीं पता, सुनील नारायण को मुझे अब नहीं पता, क्योंकि काफ़ी देर से सुनील नारायण सीन से बाहर हुआ है. अच्छा, एक और चीज़ मैं कहूँगा, पाकिस्तान ने कोई ऐसा बॉलर नहीं निकाला. सर कैसे? सईद अजमल. नहीं, सईद अजमल अगेन कैरम बॉल नहीं कराता था सईद अजमल, ठीक है. कैरम बॉल एज अ पाकिस्तानी मुझे पता भी नहीं एग्जैक्टली कैरम बॉल होती है हमारे, कैरम बॉल ये होती है, ये होती है हमारा कोई बॉलर ये नहीं कराता, हमारा कोई बॉलर ये नहीं कराता, हम नहीं कराते. हमारा 2019, so that's been आईपीएल खेला होगा. हाँ, रीसेंट टाइम्स में खेला है ये कहीं, बट वेस्ट इंडीज के लिए 2019 से नहीं खेला, सो आई एम नॉट श्योर इफ ही इज गोइंग वेस्ट इंडीज के लिए, बट आई डोंट थिंक ही इज इन द वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज के भी वैसे पता है एक और चीज़ भी है, इनके बोर्ड वाले बड़े इश्यूज होते हैं, तो कुछ अक्सर प्लेयर्स इनके नहीं खेल रहे होते बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द. अच्छा, वेस्ट इंडीज़ का अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये नेशनल लीग्स होती हैं, आईपीएल, पीएसएल, इनमें इनके प्लेयर्स बहुत प्रोमिनेंटली बाहर आते हैं, ब्रावो, पोलार्ड, लेकिन अपने एज अ टीम ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते. डू यू थिंक T20 वर्ल्ड कप जीती हुई भी है वेस्ट इंडीज? वैसे हाँ, यू कांट डिनाई दैट दे हैव वन अगेंस्ट इंग्लैंड, जिसमें आखिरी ओवर में आई थिंक 3 छक्के 3 बॉलों पे मारे थे. उस साल वुमेन्स टीम भी जीती थी उनकी, आई थिंक. विमेंस टीम का पता नहीं, बट दे आर अ फॉर्मिडेबल T20 टीम. और जो फिलॉसफी हुई है ना, ऊपर से नीचे तक बस मारी जाओ, ये वेस्ट इंडीज टीम ने कल्चर स्टार्ट वेस्ट इंडीज वालों ने किया था. और उनका लेकिन वो चीज़ ये कर भी सकते थे, उनका एक बैट्समैन ऐसा था जो वेरी पावरफुल, यस, कि बस मारी जाओ, किसी ना किसी की तो लगेगी. ये कल्चर से वो लोग खेलते थे, विच हाँ, ब्यूटीफुल शॉट, 6 रन. But this is something that will always happen with a leg spinner in your team. A leg spinner will go for runs if a leg spinner is red. और इसमें अनफॉर्चुनेट तो हमें स्टैट्स ये निकालने चाहिए. स्टैट में ये निकालो कि जब शादाब अपनी लेग स्पिन कराता है तो किस रन रेट पे रन खाता है, और जब रॉन्ग वन कराता है तो किस. हमें ना हो चुकी है. स्टैटमैन डेव. That's news. हमारी स्टार्ट टीम ने नहीं यार, बट देखो फॉर अ लेग स्पिनर आल्सो शादाब इज प्रीटी इकोनॉमिकल. he is very economical because he But bowls just strike and he has a very simple action, which is good. और काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं इसका ज़रा ऑफ स्पिनर टाइप एक्शन लगता है, which I disagree with. A lot of people think he has an off spinner's action. क्लियर लेग स्पिन एक्शन है, yeah, but a lot of हाँ,
इट द रिस्ट रेस्ट वाला वो पूरा, बट आई गेस जिस तरह दानिश कनेरिया या अब्दुल कादिर ऑफ ओल्ड या फिर इवन शाहिद अफरीदी का जिस तरह आई थिंक ओपन चेस्ट एक्शन था उस तरह करके नहीं है. मे बी दैट्स अ ऑफ पीपल लाइक मैंने सुना था कहीं कह रहे थे. आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड. कौन कह रहा है? Like one Ramiz Raja. That's a good question. Ramiz Raja types. I really don't remember, but someone said it has an off-spinner-esque action. I can understand where they're coming from, especially from his अभी जो approach मैंने to the देखा. crease. Yeah. जिस तरह सकलैन या कोई नहीं भागता उस तरह का क्या. क्योंकि आपने जो ज़्यादा ऑस्पिनर्स देखे हैं उनका जो स्टार्ट ऑफ द रनअप है ना, वो उससे ही पता चल जाता है कि ये ऑस्पिनर ऑफ-स्पिनर उसका थोड़ा सा मैच करता है. a bit subtle. But when 27 from 4 with 1 wicket. Brilliant. yeah, that's has been excellent. economical across like through this tournament. Yeah, like Shadab that, is and, an- like also a wicket taker. Yes, Shadab, but I feel again Shadab needs एक दो चीज़ें पाकिस्तानी टीम को जो करनी चाहिए. They should hire someone like a Dale Steyn to train a Naseem Shah and Hasnain, especially Naseem Shah. Ooh, Dale Steyn. Dale Steyn because Naseem Shah का action Dale Steyn से बहुत मिलता है. If you look at it, Yeah. जिस तरह उसका action और Dale Actually Steyn no, नहीं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सी resemblance हो सकती है. रिजेम्बलेंस है बिकॉज डेल स्टेन और नसीम शाह का भी ये वाला जो ना बॉलर्स कुछ जो बाजू अपना बेंड करते हैं उस पर दोनों का वो चीज़ आती है. स्टार्टमैन अगर दोनों के हम एक्शन साइड बाय साइड प्ले कर सकें लाइव ऑन स्क्रीन. मैच चल रहा है. अच्छा अच्छा मैच की वजह से नहीं कर रहा. ओके सो इफ वी कैन गेट द सिमिलैरिटीज इन दैट, बट आई फील डेल स्टेन वो नसीम शाह कोच बहुत अच्छा होगा. एंड शादाब खान ऑल्सो नीड्स टू वर्क विद द लेग स्पिन कोच. Not in terms of skill development या कोई उस तरह करके चीज़, but I feel he's not. अभी टीम में कौन है हमारा? सकलैन मुश्ताक है. सकलैन कर रहा है coach. Off spinner. Sean Tate is bowling coach, I think consultant या कुछ इस तरह करके आया हुआ है. अच्छा उमर गुल का recent comment कि वो ethically और morally अफगानिस्तान को support करेंगे in this match because he's the bowler. हाँ तो करना चाहिए. वो coach है. करना चाहिए भाई, जो अगर पैसे दे रहे हैं आपको कोच करो प्रोफेशनल. Also I think मतलब उमर आपकी गुल हमारा भी वो performance है उसमें. था, क्या नाम लेते हैं अभी जो कोच गोरा, क्या नाम है उसका, आर्थर मिकी ऑर्थर. मिकी आर्थर. वो ऑस्ट्रेलियन है, साउथ अफ्रीकन था, ऑस्ट्रेलियन था. हाँ तो वो अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया होता था, तो अगर वो कहता है कि जी मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा हूँ. नहीं उसके बीच में वो भी तो आया था, the other Australian जिसको थोड़ी देर के लिए उन्होंने रखा है. Right after they got rid of Misbah and ये कौन था? क्या नाम है यार? Hayden था. Matthew Hayden को हाँ, Hayden also came in, but he was a batting coach, came in for a short time, but I think ये कल्चर इनका ठीक है. छोटे छोटे कोच रखो, टीम आपस में ना इनकी कोऑर्डिनेशन वगैरह होनी चाहिए. एंड बाबर देसी, बाबर आज देयर लीडर. But वही है ना, अच्छा Out, area. out, out. Yes. And guys, that is what pace does. That is what pace does. Yeah. You will not. Just talking about Haris Rauf. हरीश राव या मुझे कह रहा था कि फारिग इसको नहीं खिलाना चाहिए, और देखो इसने शान देख रहे हो तुम, ऐसे होता है फिर ऐसे ही होता है. अच्छा मेरा जो कहने का हमारे एक व्यूअर में से शान भी हैं. शान आप देख रहे हो? शान गेट आउट. हमारे पास लाखों लोग हैं. वी डू नॉट नीड योर व्यू. आउट ऑफ It's a हियर, beautiful ball. आउट ऑफ हियर. It's a beautiful pace ball. जो मैं बात कर रहा था, इंडियन जो सारे पंडित्स वगैरह हैं वो यही बात कर रहे हैं कि ये जिस लाइक वो प्रॉब्लम्स निकाल रहे हैं उनकी बैटिंग कॉम्बिनेशन में. इंडिया की असल प्रॉब्लम जो लाए करती है वो उनकी बॉलिंग में करती है. बुमराह अगर नहीं है उनके पास तो अगेन विद बुमराह इट मेक्स अ टन ऑफ डिफरेंस. आई थिंक 99% उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है विद हिम इन द साइड. अच्छा अर्ली 2000 से अब तक बोर्ड मोनोपलीज जो हैं, ये जिसके बारे में आके आमिर ने भी बोला ऑन स्क्रीन, और भी प्लेयर्स. एक वो विकेट कीपर था जो छोड़ के चला गया था. ही प्लेड रियली वेल इन हिज फर्स्ट मैच. कौन ये जो पाकिस्तानी पाकिस्तानी विकेट कीपर था, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, थोड़ा लंबा सा था. मैं समझ इसका भी ऑपरेशन वगैरह भी हुआ हाँ है, वही बेचारा. हाँ एग्जैक्टली जिसका भी ऑपरेशन भी हुआ है. तो ये जो बोर्ड मोनोपलीज आपको लगता है इसमें अब आगे कुछ उस तरह से बेहतरी? अच्छा नहीं, अच्छा एक दो चीज़ें. सार ग्रेव्स वाली भी कहानी होती है अक्सर, विच इज़ दैट प्लेयर की जब उमर अकमल कंप्लेन करे बोर्ड मोनोपली की, तो आप क्या कहोगे? यू नो व्हाट आई मीन, लाइक अगर Irrelevant. यू कैन नॉट लाइक अभी डू यू थिंक देयर इज एनी प्लेयर इन द टीम जिसकी जस्टिफाई नहीं होती पोजीशन इन द टीम? प्रॉब्ली शायद अगर मैं ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड इफ्तिखार Agreed. थोड़ा सा बिकॉज गॉन
And guys, we are still live with you, but there has been a shortage of electric power as it happens in Pakistan. बहुत ज़्यादा international viewers हैं, शायद उनको ना पता हो. पाकिस्तान में एक चीज़ होती है, load shedding कहते हैं हम उसको. जैसे आपके कुत्ते शेड करते हैं, हमारी बिजली शेड करती है. समझ रहे हैं? उसका मतलब क्या होता है कि दिन में क्या होता है कि 4-5 घंटे हमारी बिजली नहीं आती. और गोरे देख रहे थे तो मुझे समझ नहीं है, मैंने उर्दू में क्यों समझाया. अच्छा, आपको पता है रिसेंटली अभी ये लोड शेडिंग की आपने बात की, दिस शो फैमिली फ्यूड स्टीव हार्वी वाला, उसमें पता चली गई. नहीं उसमें एक्चुअली हुआ ये कि किसी एक एशियन लड़की ने जवाब में ना लोड शेडिंग बोला और इसको समझ ही नहीं आया था व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट. तो फिर उसने पूरा एक्सप्लेन किया तो कहता हाउ ऑफन डज दिस हैपन. तो शी इज लाइक एवरी डे एंड एवरी अदर आवर एंड ही वाज very shocked कि यार ये क्या सीन है दुनिया में. season I was watching, I don't know what show it was, but it was some like British show. I love how किस तरह इफ्तिखार से हमारी टॉपिक ना इफ्तिखार को. मलेरिया नहीं पता था, सॉरी, डेंगू एंड मलेरिया, like what diseases these mosquitoes. डेंगू की फिर भी समझ आती है. मलेरिया नहीं पता था ब्रो. खैर बैक टू इफ्तिखार. इफ्तिखार, अच्छा मैं इफ्तिखार का मैं एक और कहता हूँ. इफ्तिखार की सिलेक्शन जस्टिफाइड इसलिए क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. एक सेकंड, राशिद. अच्छा मुझे I don't know why you're cheering for Rashid. Because I because just love the guy. I really like the guy. I Yeah. really like the cricketer, but with again मुझे मसला होता है जो क्रिकेटर्स में पसंद होते हैं ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ जब आते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस होती है. Because I feel Rashid Khan will score runs today. That is my Rashid Khan, I I have believe feeling. will I take think पहली wickets बॉल today. छक्के के लिए लेग साइड पे मारने लगा ये या ऑफ साइड पे. Yeah, that's great. Beauty. Great. और ये करेगा और राशिद रन स्कोर करेगा. अच्छा इफ्तिखार. यस. इफ्तिखार आई थिंक डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है इफ्तिखार. लाइक काफ़ी देर से खेल रहा है. ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर. इट्स नॉट लाइक अभी अभी लड़का कोई यंग सा आपने पकड़ के डाला हुआ है और उसने काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को बाहर बिठाया हुआ है. जिस तरह आपका वो हैदर अली बैट्समैन है, शान मसूद. Heather Ali is I another think- topic. Heather Ali had a lot of fitness problems. फिटनेस प्रॉब्लम. यार आई फील लाइक इस टीम में शान मसूद की जगह है. मुझे अच्छा मेरी बस एक बात, जवाब इस बात का दें. अगर आपका कैप्टन कहता है नहीं मैंने इफ्तिखार को ही खिलाना है, बस फिर इफ्तिखार को ही खिलाना है. बिकॉज आई थिंक इफ्तिखार इज बाबर सिलेक्शन Really? मोर देन, बिकॉज हाँ 11 में खिला रहा है ना बाबर. एक अगेन अगर आपका कैप्टन वीक हो ना तो वो सिलेक्शन की उसको इजाज़त नहीं मिलती. कैप्टन आपका बाबर जितना स्ट्रॉन्ग हो, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, टीम को लीड कर रहा है, टीम मैचेस जीत रही है Of उसके course, उसकी अंदर. say होती है. हाँ. अगर वो चाहे तो इफ्तिखार को हटा सके, चाहे तो इफ्तिखार को डाल ले. और ये देखा मैंने That's कहा a था great ये ball by Rashid Khan and it's वो अच्छा four. गैप में चला गया. इधर फील्डर ही नहीं कोई, फील्डर ही नहीं कोई. और मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि राशिद आज रन करेगा. तो चेक करते हैं कि रन करता है कि नहीं करता. प्रोजेक्टेड स्कोर इज एट 127. Not a lot. Not a lot, but with an increase in run rate, they can definitely take it above With Rashid 150. being on the crease. Yeah, being on the crease, I feel Rashid is going to score some runs today. I have a very instinctual feeling नहीं होती आपकी, वो एक vibe आ रही होती है, तो वो आ रही है राशिद से आज. So Rashid is also a player who has played all of these bowlers. T20 खेल चुका है. And I think he's सबसे ज़्यादा exposure किसी अफगानी player का है टीम में, तो उसका बिल्कुल. है. अभी बात हो रही थी इमाद वसीम की, जो आपने कहा कि इमाद वसीम जैसे प्लेयर काम आता है. जो मैं रूमर्स की बात कर रहा था वो ये है कि इमाद वसीम टीम के कल्चर को सूट नहीं करता. Yeah. And Because he of his- also, I think जब ये PSL हो रहा था उसने बाबर को टीम से बाहर रखा था. या नहीं, रिजवान को टीम से बाहर रखा था. रिजवान को रिजवान टीम से बाहर रखा टीम था. से बाहर रखा था. वो अगेन वो कैप्टन था, उसकी मर्जी थी, वो रख सकता था. उससे यही सवाल पूछा गया था जी कि नेशनल टीम में एक प्लेयर है, उसको आप उसमें नहीं खिला रहे. उसने कहा था भाई कि जो परफॉर्म करेगा उसको I- खिलाऊंगा. and I दैट should माइट बी be टेकन, दैट माइट बी टेकन. That's a great- शादाब Great होएगा. attempt by That's a great Shadab. नहीं बस अपना सर ना मार दिया. अब शान शायद की ट्वीट आएगी, देखो फखर होता तो कैच कर सकता, तो वो पीछे उसके भाग रहा. चल चल Nothing इजी against इजी Shan इजी शादाब, over here. गुड जॉब गुड जॉब. यार इमाद का मेरा दूसरा है कि अब आप वीक फील्डर्स हैं खिलाओ टीम में. मतलब आई फील लाइक इफ यू आर मैं तो नॉट पकड़ ही नहीं सकता. ये जो हमारी उस दिन बात हो रही थी कि अगर आपकी फिटनेस नहीं है आपका टीम में जगह नहीं बनती. नहीं, कौन ऐसा लड़का जो फिट नहीं है जो टीम नहीं, में अगर खेल आप इमाद को खिलाते हो इमाद- लाइक इमाद इज अ डिसेंट फील्डर. इमाद की फिटनेस का मुझे नहीं पता इश्यूज वगैरह हैं कि नहीं. आई एम नॉट श्योर इमाद की उस तरह करके, एंड ही माइट नॉट बी द बेस्ट फील्डर, बट ही इज. This is brilliant bowling by the way from. Yeah. यार वही बात है ना, अभी आउट हो गया था टेक्निकली.
मिस्टेक तो उसने कर दी, फील्डिंग थोड़ी डिफरेंट होती, बॉल कहीं भी जा सकती थी, वो हो जाता था. दैट इज़ व्हाट पेस डज. ये ऐसे फखर को लेंगे. अब वही है, वो I was शादाब just भी about to फ़खर say को ये कि- कह रहा है कि तू तो भाग ब्रो, मुझसे नहीं पहुंचा गया. तो वही बात है, जिधर शादाब भाग रहा हो आई थिंक उधर लोग फिर कहते हैं कि ये नहीं पहुंच सकता तो मैंने पहुंच के क्या करना है. शादाब इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट फील्डर इन दिस टीम राइट नाउ. Between Fakhar and Shadab, Who's the better fielder? I think शादाब I ब्रो, think Shadab for sure. हैंड्स डाउन ब्रो. वो कंप्लीटली वो देखा है ना वो? एथलीट है पूरा पूरा ब्रो. शादाब पूरी पूरी जान मानता है. बाबर अच्छा फील्डर मैं तो एक ज़माने में जब फवाद आलम का टाइम होता था, लाइक अभी टेस्ट में कहता Big fan of फवाद फवाद आलम, बिग फैन ऑफ fan. फवाद आलम. सिर्फ फील्डिंग की वजह से उसको टीम में होना चाहिए था. और उसके रन आउट्स अमेजिंग रन आउट्स. कैचेस तो एक और बात है, लेकिन उसने बहुत फिट रन आउट किए. रोहित वो भी जमाना होता था, हम कहते थे स्लिप में कोई कैच पकड़. इंजमाम वाज ऑलवेज अ गुड स्लिप फील्डर. safe hands. सेफ हैंड्स. मसला सबसे ज़्यादा हुआ था जब कुछ प्लेयरों की जिनकी टीम में जगह नहीं बनती थी या बनती थी आज, लेकिन उस पोजीशन में नहीं बनती थी. वो एक कामरान अकमल ने जब बहुत ज़्यादा गलतियां करनी शुरू कर दी थी वो तो बिहाइंड द स्टंप्स. उसने तो शुएब अख्तर के बहुत कैच छोड़े थे. बहुत ज़्यादा कैच छोड़े. तब मुझे था कि कामरान अकमल एज ए बैट्समैन खिला लो. टेक्निक खिलवा लो, कीपर कोई और ले आओ. अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी ये जो फिटनेस के लिहाज से जो सब प्लेयर्स के साथ हो रहा है, इसमें दुबई के वेदर का या ग्राउंड का क्या रोल है? जिस तरह अभी पिछले मैच में कमेंटेटर भी कह रहा था कि अगर विराट कोहली जैसे प्लेयर को एक क्रैम्प पड़ सकता है ना, बिकॉज ही इज़ द फिटेस्ट प्लेयर इन द ग्राउंड, तो किसी what को do भी you हो think सकता इसमें क्या है. आई फील यार वही बात है, बहुत ज़्यादा गर्मी है. गर्मी के अलावा हम ना जो इनका वो है ना सर्किट जो होता है, वो बहुत इन लोगों ने मुश्किल बना दिया है. इतनी ज़्यादा क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं. पाकिस्तानी तो आई थिंक शायद फिर भी थोड़ी कम खेलते हैं. इंडियन क्रिकेटर्स को तो आई थिंक सांस लेने का मौका नहीं मिलता. वन थिंग आफ्टर द अदर आफ्टर द अदर आफ्टर And द their अदर. commitments outside of cricket are also pretty crazy. जैसे कि उनकी commercial commitments भी बहुत ज़्यादा होती है ना, but they're doing a lot of like ads and like campaigns and stuff like that. एंड आप ये भी देखो, अब फुटबॉल जैसे स्पोर्ट के अंदर वेयर योर आजकल फुटबॉल भी क्रेजी हुआ है बिकॉज वर्ल्ड कप भी होना है इस साल. तो फुटबॉल का सर्किट काफ़ी क्रेजी हुआ है. निकाल रहे होते हो, आपकी एग्जर्शन होती है क्रिकेट से बहुत ज़्यादा है आई बिलीव. एंड उसके अंदर इवन इन द कोल्डेस्ट वेदर्स, बिकॉज यू आर स्वेटिंग सो मच, यू आर बाउंड टू गेट क्रैम्प्स. इट्स नॉट पॉसिबल कि विद दैट अमाउंट ऑफ स्वेट यू कैन अवॉइड दैट. सो इट्स टू प्ले दिस स्पोर्ट, इट्स समथिंग यू हैव टू एंड्योर. I just feel कि still watching Pakistan in the first game against India, I thought the team should Take it easy. not take it easy. वापस आ जाओ. Sure. या दैट्स अ 4. That's 4 runs. नहीं, Second last over of the game. So the Afghani team will try and score as many runs as possible. Umar Zai and Rashid are on the crease for them, and I think they will go on all guns blazing. What do you think now the projected score is? 140. 140, 135, 140. अभी क्या हो गया स्कोर? राशिद खान पेट बैन Around करते हैं. 117, 18. Yeah, 117. 117. 4 और 6 10 बॉल हैं. 10 बॉलों पे you expect them to score 20 runs. Good ball. Yeah, they should. These such good. नहीं slow यार, deliveries. that's good slow deliveries, but single every ball at least. ये तो कोशिश like वो तो होएगा ही होएगा, and then they will hit a couple of boundaries. आखिरी ओवर कौन करा रहा है? Like मुस्तफा जरा आखिरी ओवर कराएगा चेक करें, ओवर हमारा- किसका रहता है? I think Rauf या हसनैन. नहीं, ओवर एक का ही रहता है. रऊफ हसनैन दोनों के नहीं रह सकते. हाँ, या Rauf का ही हसनैन, रहा of course, उन है. दोनों नहीं. में से कोई एक का रहता है. नहीं, बट मैं कह रहा हूँ ओवर एक का ही बचा होएगा. अभी तो 2 के बच ही नहीं सकते ना, 5 एक ही बॉलर का है ना बचा टोटल. तो एक का ही एक ओवर बचा होएगा. किसका एक ओवर बचा हुआ है? अभी इसने नहीं ओए होए 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 होए. Rauf, हाँ. रऊफ का रहता है. रऊफ आखिरी करेगा. रऊफ आखिरी ओवर में रन खाएगा. नहीं खाएगा, नहीं। नहीं खाएगा, खाएगा. नहीं खाएगा. हारिस रऊफ आखिरी वो ओवर में आखिरी रन ओवर खाएगा. पे उसके स्टार्ट्स कुछ अच्छे चल रहे हैं कुछ मैचेस से, तो ना कर मुझे मुझे यार. ऐसे मैं कह रहा आखिरी हूँ. ओवर मैं में चाह रहा कोई रन खा हूँ सकता मैं चाह है. रहा हूँ थोड़ी जान आ जाए. हाँ. okay, let's hope they take it up to 150. नहीं, let's not hope that as a Pakistani fan. For Afghani fans, please hope all you want. Because But for an interesting match, interesting we match can for a hope cricket that, match, but yeah. I just feel कि ये ना हो कि 118 भी कि कभी भी किसी पिच को जज नहीं करना चाहिए जब तक दोनों टीम्स की बैटिंग ना हुई उस पे. Maybe it is a difficult pitch to bat on, but something like इस तरह का total you would expect Babar Azam to play out the Yeah, The entire match. the openers the basically. openers match, because you don't need 10 runs per over or even 8 runs per over. You need 7 runs per over approximately. So
और आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है राशिद को, जितनी आप ऑफ पेस कराओगे ना बॉल उतना बेहतर है. बट ऑल द बैट्समैन फाउंड इट रियली हार्ड टू स्कोर एट अ हाई स्ट्राइक. एक्सीलेंट, वंडरफुल. Excellent over. Look at the average, 1 for 19 in 4 overs. Excellent, excellent, excellent. Under 5 runs per over. और ये जो बात होती है ना पेस का फ़ायदा और उस चीज़ का फ़ायदा कि ये देखो यार भाईचारा, ये हमारे कल्चर में है सर भाईचारा. ये अब आया ना कल्चर. ये अब आया, ये ये- शोएब अख्तर करता था ये. शोएब अख्तर के फक यू फक मी फक 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 फक. लोग कोनियां शोनियां मारे होते थे एक दूसरे को. कभी भी जिस तरह वहाब रियाज होता था. इनफैक्ट शायद फीडी में ये थोड़ा सा ये वाला टच था कि वो थोड़ा सा ठंडा रखता था, ठंडा नहीं, गरम वो रखता गरम था, रखता था गरम माहौल. रखता था. लेकिन रखना भी चाहिए. द कैप्टन वो थोड़ा ठंडा रखने लग गया था. नहीं मुझे नहीं पता इतना ठंडा रख रहा था नहीं रख रहा था. आई थिंक आई एग्री विद हिम. शायद अफरीदी का आई थिंक स्पेशली इन मैचेस में तो चलो नहीं, आपको इतना नहीं करना चाहिए, इजी लेना चाहिए. बट इन मैचेस इन विच स्टेक्स आर हाई आप टेक वॉट एवर एडवांटेज पॉसिबल विद इन दी रूल्स ऑफ क्रिकेट. आई थिंक ऑस्ट्रेलियन जो फिलॉसफी है ना कि अच्छा ये असूलों में है तो हम अंडर आर्म भी करा देंगे. समझ रहे हो, क्योंकि रूल्स अलाउ करते हैं. एज लॉन्ग एज रूल्स ब्रेक किए बगैर आप जो मर्जी कर लो उसकी वो चीज़ जायज़ है, स्पेशली इन हाई स्टेक गेम्स. राशिद खान माइट बट तुम लोगों को पता है ऑस्ट्रेलियंस इंटरनली अलाउ नहीं करते दूसरा अच्छा. अपने बॉलर्स को. उन्होंने किया हुआ लेकिन क्यों? बिकॉज दे थिंक दैट इट इज इलीगल. आई थिंक आई एम नॉट श्योर. ये जरा इस पे रिसर्च अगर हमारा स्टार्टमैन दूसरा करता क्या? क्या दूसरा बेसिकली ऑफ स्पिनर का जो दूसरा होता है जो ना, सही जजमेंट इसमें कहते हैं वो हाथ सीधा होता है, आपको बोले कि वट्टा कंसिडर किया जाएगा. इसलिए तो सही तब ये जजमेंट बहुत release क्रिकेट कर खेल नहीं पाया था. ये होता है थोड़ा सा. लेकिन आपका हाथ अगर पीछे से आ रहा है, पीछे से भी आ रहा है तो आप बेस्ट एंगल वो है ना. पता नहीं उनका, मुझे कभी याद नहीं आता कोई. बेसिकली जो आपकी हाथ की मूवमेंट है ना वो बिल्कुल कहीं पे भी रुकनी चाहिए. वो बचपन में क्रिकेट खेलते हुए कहते थे ना कि खिंच नहीं मारनी, मतलब लाइक रिस्ट से भी आपने ये नहीं करना. अब उल्टा कहते हैं, अब कहते हैं रिस्ट मारो. हाँ अब वो अफरीदी की याद है शुरू में 20 रन हुए थे और सारे कितना परेशान हो गए थे. हाँ भी हुआ. और मैंने कहा था ठंडा 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 ठंडा. If any Indian fans are watching, Many तो of them are watching. या स्टार्ट आ रहे हैं हमारे पास 75% इंडियन फैंस, तो कम से कम 1 लाख इंडियन फैन अभी मैं देख रहा है. सॉरी यार होंदा ही है, होंदा ही डोंट है. इवन वॉच क्रिकेट येट. तो आगा सरमद साहब का आया डोंट इवन वॉच क्रिकेट येट, आई एम वॉचिंग दिस लॉल. तो मतलब उन्होंने इरादा किया हुआ फ्यूचर में वो क्रिकेट देखेंगे येट. Clearly. माशाल्लाह. माशाल्लाह Thanks माशाल्लाह to Mr. माशाल्लाह. Aga साहब. बट आई एम वॉचिंग दिस वेरी गुड. आगा देखते रहे. आगा last over आ गया जी. आई होप यू आर हैविंग फन वॉचिंग दिस. There is no article on doing the wrong one, but Australian leg spinner Hogg says that Australian bowlers usually have fast arm actions. They more have wrist control actions. It's not warrant के basis पे होता. इसलिए आज के spinners आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कल्चर भी ना मुस्तफ़ा, इनका एक डिस्करेजिंग कल्चर है क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रही हैं विद मुरलीधरन, विद हरभजन, विद सईद अजमल ऑन द बेसिस ऑफ कि यार ये तुम यू आर थ्रोइंग द बॉल. समझ रहे हो, तो इसलिए मे बी शायद कल्चरली वो डिस्करेज भी करते हो. And they also feel that it's easier to pick the wrist, like for a bowler to read the wrist as compared to the arm. So they say that they don't have quick action, but batsmen pick up the wrist a lot easier. So that's why they believe in quick wrist actions. I don't know, but I have a feeling, like again, I don't remember when and where I got this information from. But I remember, वो बेचारा तब का घुमाने की कोशिश कर रहा है. So like not even one. ये क्या आहिस्ता 30. करा रहा है? Let's see where they end up. So far Soft cutters मारे. अच्छा एक और चीज़ जो हम उसका सारे soft बात कर रहे करने थे की 130 कि जी राशिद को बड़ी आदत है पाकिस्तान के वो करने की. आई थिंक पाकिस्तानियों को भी आदत है अब राशिद को बॉलिंग कराने की. आई एम श्योर इन सारों ने एट सम पॉइंट कराई होनी है इसको. दो लाहौर कलंदर्स which is the defending champion of PSL, which is like the current champions of PSL. Lahore, yeah, we all support Lahore.
एंड शाहीन हमारा हीरो है और रिजवान भी हमारा हीरो है जो हमारे से फाइनल में खिलाफ टीम में था ना. व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट. That's a six. That's a six. And that is what pace can also do sometimes. The Afghanis have a lot of Pride. energy right now. वो रिजवान फिर भाईचारा करने निकल गया राशिद के साथ. हाँ ठीक है, करने दो करने दो करने दो. अभी इस बार 3 छक्के भी लगा ले, 18 रन नहीं पड़े. But what a shot by Rashid, what a shot by Rashid. Beautiful balance, middle of the bat, didn't try to hit it too hard, used the ball space. It's a small ground and I feel all the Afghani batsmen could learn some lessons from Rashid. हमारा अगला ये कब है लाहौर के अंदर मैच, कराची के अंदर सॉरी, किसके साथ है? I have no idea future series का क्या. What a shot. What a shot, what a shot, what a shot. Beautiful. मैंने क्या कहा था? पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज है ना. पाकिस्तान इंग्लैंड Yeah. सीरीज है, yes. 10 runs so far on End 4 of balls. this month. इधर आ रहे Let's हैं. see. And कराची में पहले with someone like Rauf, you always have this. 3 मैचेस. Yeah. ये होएगा कि This run here and there वाला factor. हो सकता है. 31st को शायद. अगर Because अब ये again how tickets easy खुली हैं. was that कि उसने शॉट मारते ही Look at the एकदम से signature he did. हाँ पीछे भी हो गया. ये I think He इसको did not हाथों have पे to लगी. hit it too hard because of the pace. I think उसको शायद हाथ पे ना लगी है, बैट पे जब लगी है ना कुछ हुआ है. और अगेन मैं हारिस रऊफ को सिर्फ यही कहूँगा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम नहीं वो सारा ठीक है, बॉलिंग हुई कि आखिरी भी बॉल इंशाल्लाह डॉट होगी. 130 कर गए, 140 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड लव टू सी हारिस रऊफ बोल 6 यॉर्कर्स इन अ रो. और ये पाकिस्तानी बॉलर्स की पुरानों की आदत होती थी जब ये 6 के 6 बैक टू बैक यॉर्कर्स अनप्लेएबल. अभी भी शाहीन की अच्छा, शाहीन, अच्छी मैं- I was अच्छा about to खासा say ये this, खेल yeah. देता है. शाहीन का ये यॉर्कर कराते कराते फुल टॉस करा देते करा देता है या कभी कभी नो फेंक देता है. कुछ ना कुछ हो जाता है. आई थिंक वो उसकी जज्बात में से भी निकल. जिस बात हो भी चाहे ये जो practice वाली मर्जी, चीज़ बट है ये और प्रैक्टिस time वाली की चीज़ है. और आई होती थिंक इन सारों को इस चीज़ की प्रैक्टिस करानी चाहिए कि 145 पर अगर आप यॉर्कर करा रहे होगे ना, दुनिया में बहुत ही कम प्लेयर हैं जो Beautiful आपको ball. खेल भी सकेंगे. वेल डन रऊफ. आई थिंक 2 बॉलों में इसमें राशिद जीता है, 4 बॉलों पे जीता है. Still limping. रिजवान. रिजवान लिप करके हमें इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जिताएगा. So 130 basically. Not that much. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू दी मिड ब्रेक शो with Pakistan and Afghanistan. Let me update you on the situation right now. Afghanistan has scored 129. That means Pakistan has 130 runs to chase in 20 overs at 6.5 runs per over. Thoughts on the game? I feel like the game was a little slow. Power play was really good, and I was expecting a lot more from Afghanistan. Since उनका जो start था, especially हजरतुल्लाह ज़ज़ाई, very nice player. With them the opening partner जिसका नाम हमें शायद ना आता हो तो हम pretend नहीं करेंगे हमें आता है. Yeah. उसका क्या नाम है opening
एक और चौका मारा है, हाँ समझ रहे हो? उस टाइम पर उसका बनता है छिक्का चौका मारना, और शायद एक आधी हिट लग जाती, एक चौका छिक्का और हो जाता, समझ रहे हो? बट आप राशिद खान जैसे प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 16वें ओवर में आके वो मैच कंटिन्यू करे. यू एक्सपेक्ट हिम टू प्ले 4 to 5 balls maximum. How many balls did Rashid Khan play in this game? 18, 19. 18 balls. That is too many balls for a Rashid Khan. 15 balls. Yeah, that's 15 balls. 15 balls. Yeah, that is, I feel, uh, 10 balls too many or 9 balls too many for a Rashid Khan to play in this game. So again, in terms of approach, would you like Pakistan to take this to the 15th, 16th over, or would you like Pakistan to finish this off in, let's say, the 12th or 13th over of the game? यार बाबर आराम से खेले. आई थिंक उसका पिछले 2-3 मैचेस में जरा ही इज बीन अनलकी एंड ही इज बीन आई थिंक आई थिंक इवन दो हमें रन रेट की ज़रूरत नहीं है उस तरह से, बट इट वुड बी गुड अगर ये 10-12 ओवर तक ख़त्म कर सकते हैं. फील गुड फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होएगा अगर आप जल्दी ख़त्म कर दोगे. हम भी घर जल्दी चले जाएंगे. ये है हम घर जल्दी We are- we not- बाबर का हाथ बैठ जाए. इतने आराम से पैसे नहीं खेले, मिल कोई रहे कि हम जल्दी पूरा नहीं. दिन बैठ के ये बकवास करते रहें पूरा दिन. कोई तो कैसे मिलता है. This is too difficult. अच्छा गाइस, आई एम What? गोइंग टू टेक अ ब्रेक. Yeah, let's all take a break for 5-10 minutes. We will be right back, ladies and gentlemen, with the mid-innings show. We'll take a short break.
Ladies and gentlemen, welcome to the watch along for the Pakistan Afghanistan game. This is PCFC, Pakistan Cricket Fan Channel. And just to update you, Babar Azam goes cheaply without a run on a golden duck. One first ball getting LBW. Continues his bad run in this Asia Cup, unfortunately. Fakhr has come on and edged the second ball that he has faced for 4 runs. At least this makes it a bit interesting, Mustafa. Yes, it does. Mustafa has joined us, by the way. Yes, Mustafa, an expert in cricket and stats. आप वही मुस्तफा जफर तो नहीं है जो कमेंट भी कर रहा था? नहीं 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 वो कोई और है bro. हमारे क्या तेरा कहने का क्या मतलब है? ओके बाबर की फॉर्म वापस नहीं आनी अगर ये because this was the match that he was supposed to This was his opportunity to अग्री बट मैं ये मानता हूँ कि पहली बॉल पे आउट होना is something else than playing bad because you can never tell के what the outcome could have been if the man had stayed on the field. Did you see a highlight? How did he get out? LBW pitched just on, like within the wickets, and got out LBW. Opposite arm bowling या वो I think इतनी rise नहीं की जितना वो expect कर रहा था. I think it came in too quickly. उसका तो बैटिंग नहीं पहुंचा था. अंदर की तरफ उसने आना था, but yes, plumb in front, and Babar knew. the feet didn't move the way he wanted either. So bat form Babar का continue कर रहा है. Again, I wouldn't mind him. Like again, Babar would have to come into form eventually. He is too good not Much to. needed. But I was expecting today to be his day. Hopefully he's saving it for the final. Hopefully saving it for the final. और इससे पहले जो पाकिस्तान की नेदरलैंड्स के साथ सीरीज हुई है उसमें बाबर सीम्ड इन ग्रेट टच जस्ट बिकॉज ही वाज मिडलिंग द बॉल इतना अच्छा ज़बरदस्त किस्म का. आई एम स्लाइटली सरप्राइज्ड. Did But Babar again, do well against Hong Kong? I think Babar did play well against Hong Kong. If you can see कि Hong Kong के खिलाफ बाबर के कितने रन थे, तो we'll be able to. No, judge. Babar was also out early and against Hong Kong as well. Yeah, I remember. Yeah, But मुझे लगता है शायद Hong Kong spin पे पकड़ा गया था वो. Got caught Yeah, I out. think first time Caught balls. caught bowled. Caught bowled. So Hong Kong के खिलाफ भी बाबर ने इतने कोई runs नहीं किए. Let's see in the final और अभी इंग्लैंड के साथ भी हमारी सीरीज आ रही है T20 की. श्रीलंका के खिलाफ एक मैच भी है अभी इसके बाद. तो एक श्रीलंका के खिलाफ वैसे भी मैच है ग्रुप सुपर 4 का और फिर फाइनल भी अगर पाकिस्तान जीत जाती है तो श्रीलंका के साथ ही होएगा. You know my handshake theory? कि बाबर ने बेसिकली कोहली से हाथ मिलाया टूर्नामेंट से पहले और वो फॉर्म 9 स्कोर किया था which is again like he hasn't had the best of tournaments in terms of batting Had Rizwan been run out in his career ever. I bet he has in been. recent years? नहीं, I haven't seen. I think उसने दूसरे को probably करवाया होगा because of his fast running. खुद मुझे नहीं लगता खुद अभी तक हुआ मुश्किल होगा. है. We'll have to see Rizwan and Inzamam on opposite ends. बड़ा मजे का competition होएगा. रन भागना है नहीं. वो फैंटेसी सिमुलेशन को चीज़ें करनी पड़ेगी. बट आई थिंक इंजमाम का काफ़ी अनफेयर भी था वो रन आउट वाला स्टार्ट. अक्सर इंजमाम आउट होता था अगले बैट्समैन की गलती से और मोहम्मद यूसुफ भी वाज इन सच अ बैड रनर. बहुत गलतियां देखी थी हमने उस फेज के अंदर बिटवीन मोहम्मद यूसुफ एंड इंजमाम. इंजमाम वो अलग ही एक ना सीन चल रहा होता था. रिसेंटली मैं एक देखा था हाईलाइट देखा था. धोनी वाज बेसिकली विकेट कीपर एंड ये हो गया क्रॉसिंग हो गई एंड जैसे ही द बैट्समैन स्टेप्ड आउट ऑफ द फील्ड धोनी ने सिग्नल दिया आउट करने का तब उसने विकेट मारी. एंड जो प्लेइंग बैट्समैन था ही गॉट आउट इंस्टेड ऑफ द वन हु क्रॉस्ड ओवर. सो दैट वाज समथिंग यू नो व्हिच आई सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम एवर कि इस तरह धोनी वाज वेरी स्मार्ट एंड यू माइट कॉल इट अनफेयर कि उसने वेट किया वो बैट्समैन आउट ऑफ क्रीज जाए. बट वही बात है जिससे हम पहले गए थे इफ इट्स इन द रूल्स If it's in the rules and if it's a big game, या ये तो गली में भी होता है ना कैच ड्रॉप करके रन आउट कर दो. हाँ बट मुझे पता है player को out एक करने और के चीज़ भी लिए. होती है कि मैं अगर धोनी की जगह होता तो मैं भी यही करता. लाइक मैं थोड़ा कमीना हूँ इन चीज़ों में. लाइक आई वुड डू anything and everything possible to win
within the rules of the game. Abu Zar se पूछना चाहिए. टैक्टिशियन प्लेयर जरूरी If होता Sri Lanka and Pakistan will qualify, if Pakistan win tonight, India will stay in the race if Afghanistan win tonight. Okay. So Afghanistan is not only playing for their life in the tournament, but they're also playing for. Ooh, good ball. So Rizwan is batting a bit outside of the crease. Maybe he thinks the ball is not coming at a pace that he would like it to. Is Nabi still playing for Afghanistan? Yeah, Nabi is the captain. ये नया बॉलर अच्छा है इनका. Yeah, but left arm. अभी तक तो इसने spot on bowling कराई है. Having a left arm quick in your side against right-handers, angle difficult हो जाता है. Something unique left-handers का हमेशा ये होता है, just because it's something a bit alien, more difficult to face left arm bowlers, especially अगर अंदर की तरफ swing हो रही है ना ball late, it becomes very difficult for a right-handed batsman to pick that up. Afghanistan's team seems charged up and ready for a fight, which is good. I think जो उनको विकेट मिली है बाबर आजम की, that has really boosted up their spirits. और चाहेंगे तो यही आउटकम कि अब अगला रिजवान को निकालें. And let's see how the power play goes. I mean the only अगर way ये they आउट could हो defend. जाता, अगर ये विकेट पे लगती तो ये आउट होता. अगर अपील करते तो हो सकता था. But he's the one who technically kicked the ball But towards. पाकिस्तान को आउट भी हुआ था ना against ऑस्ट्रेलिया कि उसने बॉल थ्रो की थी, उसने छलांग मारी थी to get away from the ball and he got out. तो I think out होता है. I think out होता है. We had some of the funniest run outs Pakistan as a has. nation. Yes. 6 runs. shot. No doubt about it. All the way for All 6. the way. ये इसकी This is- शॉट पे बहुत आजकल बात हो Yeah. रही है, especially against the Indian team. And Indian strategy भी उसकी वजह से change हुई थी in the last match, even though that didn't work out for them. But that is his go-to shot. That is where he is very good at. और His- कल भी ये बहुत देखी थी जो श्रीलंका ने ये शॉट बहुत खेली थी. Yeah, Sri Lankan team ने भी कल ये बहुत ज़्यादा shot खेली, which is the flick, the risky flick that you go for a six. Unfortunate not to find the gap with that one. यार रिजवान को इंजरी से बचाओ, बस हमेशा ही हर बॉल पे लगता है कि कहीं ना कहीं से उसको बॉल. Do you think Shaheen Afridi could have made a difference in this tournament? Anush is asking. Shaheen Afridi, I feel Pakistan will qualify for the final, so I don't think you can say that he would have made a difference per se. अगर आज अफगानिस्तान से हार भी जाते हैं तो it would be a batting mistake, not a bowling mistake. So luckily Pakistan hasn't missed Shaheen Afridi so much, but you would definitely need him for the bigger tournament. He's a tighter first over compared to all of our. It's a tighter bowlers. first over also with the left arm in swinging delivery. A lot of players all over the world have an issue और शाहीन का especially ये है कि जितनी वो बॉल स्विंग करता है ना, इवन मैं चेक कर रहा था ऑस्ट्रेलियन बैटिंग जो ओपन करता है, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग कौन ओपन करता है, वार्नर के साथ कौन करता है, फिंच करता है, फिंच करता है. फिंच का स्टार्ट था कि वो जिंदगी में सिर्फ एक दफ़ा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पे आउट हुआ है, तो उसका था कि अच्छा इसको मसला नहीं होएगा. एंड शाहीन अफरीदी गॉट हिम बोल्ड और LBW in that game as well. So he has this thing against right arm. And with older PSLs and the last World Cup, Shaheen has made a दुबई में उसकी presence है. आई थिंक वो एक और भी है ना, आपकी जितनी वो एक हाइप भी बिल्डअप हुई होती है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क करता है कि जनरली एक वो 10% ऐड कर देता है द फियर फैक्टर. डर लगना चाहिए जब उसने batsman कोहली को. की विकेट ली थी तब वो नजर आया था that factor. That was well played. I think that will go for 4 runs. Slower one? Yes. Good gap found. 6 and 4. So 10 runs from that over. After 3 overs, Pakistan are going at 6 runs per over with 18 at 1. And Wasim Akram जिस तरह कहता है, they have to play normal cricket just to win this game. Yeah. Do you think if you win this match, anyone should sit out the next game as a rest? I think उनको जितने प्लेयर रोटेट करा सकते हैं करना चाहिए अपनी बेस्ट 11. They should save for the final. First 3 players that you would definitely rotate though.
I would मैं पूरा बेंच जो आपका स्क्वाड साथ में गया हुआ है नहीं, but who would leave the starting 11? Because आपकी bench पूरी 11 आप तो अपने नहीं टॉप होगी ना? प्लेयर्स को बाहर करो. Babar should play so that he can get some form. I would take out Rizwan I think needs to sit out a game. Yeah, that might be out. That might be out. That looked a bit tricky. If That looked a bit Rizwan tricky. is I running think to he the took. other end, Then it's bad omen have I coming from you. commentator's curse. Commentator's curse. ये हो जाएगा. But that is Fakhr, and I think he might be struggling because he took it a bit too casually, and Fakhr also doesn't look too confident. Adi says love from India, all the best for the tournament. Who is Adi. Thank you so much, Adi. And Fakhr is out. Fakhr's out. Fakhr's out. Fakhr's out. He took it a bit too casually. I feel if Fakhr had run a little harder, things might have been different. And Fakhr is out. So yes, Pakistan 19 for 2 after 3.1 or 3.2 overs, and the fans look a bit worried, as they should be. Like we said earlier, with Pakistan, you can expect a gain. He ran hard initially, but ये देखो यहाँ पर जहाँ पे easy हो गया ना, Yeah. should have continued. It could have put a dive in. Yeah. But I thought, Does he go for this run if Rizwan's not on the other right? yes, he called for the run. He would have gone for the run. उसको बीच में लगा कि वो safe है, पहुंच गया. I think you should totally clip this game. Mustafa predicts. Mustafa predicts, but शान खुश हो गए आप, फकर फिर out हो गए हैं. Are you happy? Are you happy? Has Shan tweeted about this match? अभी तक? अभी तक I don't think Shan is even watching this match. I think he's so pretty experienced in terms of his domestic career. Stability के लिए I think और किसको भेजते? We need to hold the wicket, but other than इफ्तिखार coming in, और कौन आता? नवाज आता, खुशदिल आता, आपको इफ्तिखार type ही player चाहिए. Now this is going to be a test for the middle order as well. Yeah. If they can one sustain. T20I career, again you guys are questioning his selection. 30 runs की average है इसकी T20I में at a strike rate of more than 130. So you can't deny the facts. I think he's a closer. He's a closer. He's a closer. Also, I think the same unjust criticism उसकी भी होती है इमामुल हक की. If you look at his stats, he has excellent stats, and still people call him Parchees, Farsi, and all those things just because he is related to Inzamamul Haq. But again, stats prove that he deserves this spot in the side. Shan did tweet about Fakhr an hour ago. He said, "Well done, Fakhr. That's how you play like a pro. Good catch. Welcome back." So let's see if he says anything. Shan सुन रहा था फिर मुझे. Shan, I appreciate. But let's say कि अब फखर की विकेट के बाद क्या tweet आता है? वो क्या tweet आता है, and also you see how charged up the Afghani fans are. This was the same enthusiasm Pakistani fans used to show. It's a bigger match for Afghanistan than it's for Pakistan. अफगानी फैंस जब अभी पिछले इनके इनिंग्स के अंदर भी जब ये इतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे, टीम कॉन्फिडेंट लग रही थी लेकिन फैंस कॉन्फिडेंट थे. Those cheers were there, the energy was there. So And this will also help the team. To the fans. I think, and this I think also helps the team. Yeah, if you yeah, know that the 100%. fans are behind you, it really helps. It really helps. Well played. So one thing I've noticed, T20s में यॉर्कर्स का सीन बड़ा कम हो गया है. अच्छी यॉर्कर अब कराने वाले कम हो गए हैं या इतना बैट्समैन आउट ऑफ वो निकल रहा है क्रीज कि he's almost At playing one every point यॉर्कर as a full toss. तो ब्लॉक होल और वो जो लास्ट 5 ओवर्स वाली बॉलिंग एज कम्पेयर टू लाइक ODIs में एटलीस्ट जिस तरह की होती थी वो वाली T20 में बिल्कुल भी नहीं होती इन द डेथ 2-3 Yeah, I ओवर्स. think ऐसे bowlers वगैरह नहीं रहे. Like if you remember the World Cup Pakistan won, उमर गुल used to bowl Yorkers अपनी मर्जी से इतना swing करते हुए swinging Yorker आ रही है. It's highly unlikely anyone could put that away for runs. और जब वो run करने की कोशिश करते उस पर या bold होते थे या catch out हो जाते थे. If you have a good Yorker bowling bowler, it becomes really hard to get him away. At one point when you had Asif, Umar Gul and Shoaib Akhtar, जो आपके all of their wickets predominantly bowled Especially from in the death, and they used to reverse swing the ball as well. जो इन पे मैं इन swing की बात कर रहा हूँ,
उमर गुल 14वें ओवर से लाइक उसका होता था एक ओवर शुरू में करा के 3 ओवर उससे एंड पे 14th ओवर 17th ओवर 19th ओवर इस तरह करके उससे कराते 14th 16th 18th करवाते थे उससे और वही चीज़ के वो 14th ओवर से वो रिवर्स करवा लेता उमर गुल का तो ट्रिपल एच फेस था ना, इज गोटेड, उसके लंबे बाल, हाँ फ्लाइंग इन लॉक्स इन द वही एयर, टाइम है जब ही वाज लिटरली इम्पॉसिबल टू प्ले एट दैट टाइम उसकी मैं मेजॉरिटी well fielded वीडियोस भी यार। देखता हूँ तो उसके लंबे बाल ही होते वो क्योंकि तब उस टाइम पे पीक बॉलिंग अपनी ना वो करा रहा था बट आई थिंक बेस्ट फिगर्स दैट ही गेव फॉर पाकिस्तान वर ड्यूरिंग हिज आर्मी कट डेज, जब वो थोड़ा सीनियर बॉलर बन गया सीनियर था बॉलर ना। बन गया था With age, I think you can stop depending on your pace and start depending on your experience. I feel Amir did that at the end of his career, but especially if a pure fast bowler loses his pace and if he has very little to offer otherwise, तो बहुत मुश्किल हो जाता है. Yeah, but even Glenn McGrath near the end of his career, Glenn McGrath was never fast. Even but he was faster than when he was near the end. but Glenn McGrath was never. Even earlier in his career, he was never an out-and-out fast bowler. Someone like maybe a Waqar Yunus, उसका काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ था when he lost pace. Wasim Akram again never relied completely on his pace. He could swing the ball both ways. And Wasim Akram even coming to bat was still an option. Excellent pinch hitter. And Wasim Akram also, I think, underutilized as a batsman as well. I think उसने थोड़ी मेहनत की होती batting में. He was very good. He was very good. He would have been the Flintoff prototype before Flintoff. Oof, what a beauty shot. Same shot जो उसने last time शायद might not go देखो all the कैसे way. भाग रहे हैं boys. But yeah, वही ना उनको ज़रा जोश चढ़ा हुआ है. At least Afghanistan knows कि like They want it. वो अभी भी ऐसी जगह में रोक सकते हैं मैच. Yeah. रन रेट टाइट नहीं है, जान पूरी लगाएं, थोड़ा प्रेशर डालें. If they make a match out of it, which they have in the first 5 overs, I think that tells you a lot about the team itself. I think the spirit itself, I think underrated होता है थोड़ा सा, which you rarely see with an Indian side or even a Bengali side. But Pakistan and Afghanistan, you see that spirit coming. Shah, do you remember when we watched the Afghanistan match in Islamabad in a random Pakistan-Afghanistan, I think T20 World Cup ही चल रहा था, इमाद वसीम ने जिताया था मैच और हम इस्लामाबाद की किसी उसमें थे रैंडम मरकज़ में देख रहे थे बैठ के, क्योंकि कहीं पे हमें मैच नहीं मिल रहा था. Either side that would have been full. और वो उसने इमाद वसीम ने जिताया. इमाद वसीम ने जो जिताया था मैच. We do. Amra, do you want to join? Okay. Diet Coke. हमारा दूसरा स्पॉन्सर आ रहा है. Getting any more questions? Adi adds Malinga and Bumrah also. I think when we were talking about great fast bowlers who could go into Good shot. Yorkers. If that, oh no. Oof. But वही बात है, like you can see Afghanis because they know it is do or die for them. They're putting in a fight. They're putting in excellent fight, which I really appreciate. Was the Afghanistan-Sri Lanka match close? Yeah. नहीं, but that level of commitment for the keeper कि उसको पता है कि वो देखो आना है, मारो नहीं देख जाएगी, क्या पता लग देख जाए जाए ना लग लगे. जाए. और वही चीज़ फखर ने वो चीज़ लैक की है. He took it easy. Yeah. He thought he had made it. If he had put in a dive or ran a little harder, he would have made it to his crease. But all Pakistan needs is one partnership. Swing and Swing and 4 runs Yeah. off Iftikhar's bat. हमने पहली इनिंग्स में बात की थी 6th बॉलर वाली फॉर टू कट यू ऑफ वो, एंड आई फील लाइक विद द लैक ऑफ हफीज और शोएब मलिक हमारे पास वो 6th बॉलर था एंड आल्सो एन एक्सपीरियंस्ड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन. या वो चीज़ लैक करती है बिकॉज जब भी लेफ्ट हैंडर होता था ना, हफीज़ के इतने क्रेजी स्टैट्स हैं अगेंस्ट लेफ्ट आर्म आर्मर्स के, आपको होता था बस हफीज़ को ले आओ. अब हफीज़ क्यों नहीं बॉलिंग करा रहा लेफ्ट हैंडर के खिलाफ. बहुत ज़्यादा विकटें उसने ली हुई हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ. तो वो आपके हमेशा आउट होता था. शोएब मलिक वुड ऑलवेज पुट इन लाइक इवन वनडेज में 2-3 ओवर easy. And it solves two problems. You have a middle order batsman who can
slow the pace of the game as well. बिल्कुल. And Iftikhar in bowling is not a good not sixth a option. good, not good enough sixth option. और with even शोएब मलिक बहुत ज़्यादा हमारे बॉलर्स की कुछ लाइक शोएब मलिक की एक बॉल जो दूसरा वो कराता था अपना वो बैन किया था उसका बाजू बहुत ज़्यादा सीधा हो रहा था. He had become troublesome for. Did you know Shoaib Malik Entered as a bowler, not as a batsman. Even Shahid Afridi entered as a bowler, not as a batsman. So all these Really, Afridi as well. was selected as a leg spinner. Very interesting. ये जो again I think Mujib is someone that they highly rate. 2.2 overs and just that is outstanding. Trust Pakistan to make the game interesting. ना वो मैंने कहा था मसाला तो हम डालेंगे हो नहीं सकता. Oh, good ball. Wickets आपके paces ने लिए? एक रन आउट हुआ है और एक यस पेसर ने लिया. बट अगेन दे आर नॉट चेजिंग अ बिग टोटल. Yeah. So It's still close to like. What, again, but 97 how overs. charged up the Afghanistan team is. Yeah, a partnership can bring that down. Na? Yeah, The partnership second can you bring have like a अगर 30, settle down- 35 की partnership होगी, ये जो energy level नजर आ रहा है ये आधा हुआ होगा. ऐसा वो seep away उससे करता बड़ी रहता है. पार्टनरशिप लगानी चाहिए. 25 मतलब 30 भी नहीं लगानी. 35 पे भी अगर partnership चली जाती है ना तो energy level उधर से नीचे आने लग जाता है. But let's see what they do. इनको पकड़ो. हमजा पकड़ो. 1 second guys. Hold on. Thanks. Straight to the fielder. That's the end of the power play. Under 6 runs and over in the power play. 35 for 2 Pakistan with the loss of 2 wickets. They need 95 more runs from 84 deliveries. Interesting. And just the last over again मुजीब का सिर्फ 3 रन के लिए गया है और राशिद खान के भी 4 ओवर पड़े हैं. पाकिस्तान ने लेकिन 6 and over किया बड़ी अच्छी बात है तकरीबन. तकरीबन 6 and over किया बट अगेन राशिद खान को भी मारना बहुत मुश्किल है. इतना आसान नहीं होएगा. Won't I'm be easy really to score sorry for runs. Rashid Khan though, by the way. Has a lot of variety. He bowls at that pace which is neither slow or fast. So it would be very interesting to see him, and he is someone who does really do well in terms of putting up a fight and 116 wickets. creating trouble for 70 the batsmen matches as with a well. 6.2 Also, probably the record. only leg spinner with a lot of variation, like the number of tricks up his sleeve. Who? Rashid Khan, like वही पाकिस्तान किस टीम के लिए खेलता है? लाहौर. और उसका मतलब रिजवान वगैरह ने फेस किया हुआ है. नहीं बट वो जो तुम वार्न और राशिद खान का हैव यू सीन दैट वीडियो ऑफ वार्न एंड राशिद खान डिस्कसिंग द डिफरेंट तो राशिद खान ये मेरी 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉलें 8 डिफरेंट वार्न में भी 3 मेरी बॉलर 3 मेरी बॉल फ्लिपर कराता था, लेग स्पिन कराता था, रॉन्ग वन कराता था और ही अगेन वो मॉडर्न बॉलर में यही फर्क है उसने बिकॉज ऑफ the kind of cricket you play these days, he has to have multiple varieties. starts off with the wrong को लगी है Keeper भाई. is starts with the wrong one. और ज़्यादातर wrong ones ही कराएगा. But there is some sort of wrong Also, one guys, in if the you're way. watching Adi, please do like and subscribe. We would really appreciate it. Adi is saying, "Love from India, all the best for the tournament." Mangala Bhumra also for Yorkers. I mean, yes. Malinga, excellent Yorker bowler. Bumrah also excellent Yorker bowler. Why is Bumrah out? Injury? Bumrah is out because of injury. Bumrah Very few Indian bowlers that I would rate highly, but Bumrah is right up there. बहुत देर बाद इंडिया से like एक crazy level fast bowler. Outside the off stump, massively outside the off stump. Please take that review. Reviews आया करो. हाँ रिव्यू लेना बनता है हाँ, फिर review लो, रिजवान review लो। स्पेशली बनता है. क्यों बनता है भाई? ले नहीं लिया बट जाया किया. from Afghanistan point of view I think just review का mental pressure I feel like बहुत है. You think it's out? 100 रुपया लग गया चलो. You have a small bet on the side. By the way TapMat पे betting कर सकते हो आप. The fuck. Yeah. But in TapMat currency. In TapMat currency, ever but converts into real money. TapMat currency you can buy with actual money. No, but you can We are buy, also watching you on. You can buy. But you TapMat can't currency, convert but it you back. can't convert your No, but- TapMat money into real money. No, but listen. USA.
ब्रो अभी चेक तो करना टैप भी मैट रहता बैट लगी थी I think दोनों की. आई स्टिल फील इट माइट जस्ट बी आउटसाइड द ऑफ स्टम्प और वो अंपायर्स You कॉल have हो 3 Hamza coins now for 100 rupees. नहीं बैट तो नहीं लगा बट आई स्टिल थॉट दैट वाज आउटसाइड द ऑफ स्टम्प मे बी स्लाइटली देयर इज नो बैट Umpire's call इन्वॉल्व होगी. अंपायर्स कॉल हो जाएगी बट आई स्टिल फील आउटसाइड द ऑफ स्टम्प शायद हुआ अच्छा अंपायर्स कॉल किस तरह होती है सर? अगर नॉट आउट दिया हो तो नॉट आउट रहेगा अगर आउट दिया हो तो नहीं आउट बट किस बेसिस 50% पे? से ज़्यादा बॉल लग रही है विकेट को तो अंपायर्स कॉल नहीं होती है. अगर 50% से कम लग रही है बॉल तो फिर अंपायर्स कॉल होती है. But with if Rizwan gets out here, I think the pressure would escalate to another level for this game. Become even more. And the India-Afghanistan game also becomes much more important. Haseeb, you'll have to drag the mouse towards the left. Full left पे लेके जा. Full left पे हाँ अब 3 finger swipe right. Yeah. वापस फिर से. हाँ और अब drag the mouse back. Not out. Not out. So, see, 100 रुपए बाद में दे दूँ. ठीक है? हाँ चल. बट किस केसेस पे हुआ है Haseeb अगर तुम देख रहे थे? अंपायर्स कॉल पे Umpires call not probably out. हुआ ना. मुझे नहीं पता. तू नहीं, बता. आप तू लोग देख देख रहा रहा था था। ब्रो. हम तो देख नहीं रहे. हमारा तो हमारा तो टीवी बंद हो गई. हमारा टीवी बंद हो गया था भाई. ये सब कुछ बंद हुआ जनरेटर भी नहीं बंद हुआ. जनरेटर अब बंद होएगा. स्विच ओवर हुआ है ना. स्विच ओवर हो गया लेकिन तो जनरेटर 2 सेकंड बाद बंद होता है हमारा. Iftikhar on strike. Rashid Khan is a dangerous man. राजस्थान इज डेंजरस और वही बात है दे ऑल दे वांट टू डू इज नॉट गेट आउट ऑन राशिद खान. जब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जब बैट्समैन डिफेंसिव हो जाए तो ये बॉलर्स और चढ़ाई करते हैं. अटैक करते हो तो विकेट देने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है. बट आई डू नॉट माइंड देम गेटिंग इवन 5 runs फ्रॉम राशिद खान ओवर एंड मेकिंग देम अप लेटर समहाउ. उनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उस पर आपने बहुत ज़्यादा आई थिंक थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी. इतनी देनी चाहिए बट आई थिंक राशिद खान डिजर्व्स दैट. बट अभी ज़रूरत भी नहीं है ना ज़्यादा अग्रेसिव होने की. यू टेड सी आउट हिज फर्स्ट ओवर. अभी विकेट लूज करने की वैल्यू इज मच वर्स देन अ गंदा लाइक देन अ लो स्कोरिंग ओवर. Is it raining outside? आई डोंट थिंक सो. I don't think so. What's this sound? AC. Excellent over by Rashid Khan, just 4 runs from it, almost got the wicket off Haris is Rizwan. saying that we are struggling against Afghanistan. It's always a close game. It's always a close game against Afghanistan. Not all games have been close against Afghanistan. I feel there have been few close ones. But I think again, the way we play against India, Afghanistan plays against us, so they always make a match out of it. I'm glad they weren't able to get in 20-30 runs more than what they did. Then this would have been a little more worrisome. And now Nabi comes in, and Nabi is again. Isn't Nabi a fast bowler? Nabi is a spin bowler, and he has so much variety. Like अफगानियों का यही मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है. इतनी वैरायटी है इनके अटैक में. एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है जो इनके पहले 6 में कराता है. मुजीब शायद नाम है उसका. उसके बाद ये और राशिद खान दे टेक अप द bowling during the middle overs. And after this we have Khushtil and Asif Ali. Oof. नहीं ये तो रुकना ही था. बहुत स्लो पेस पे हिट हुए थे. The dive. But Afghanis are charged up. Afghanis are definitely charged up and by all rights अभी तक मैच किसी के हाथ में नहीं है. यार देखो. And rightly so. 90 runs off 76 balls. With bowlers like these, I mean. नहीं वो इस तरह again it's not the total on the board that's difficult, but with let's say again either he could have put in a dive, Yeah. he could have extended himself more. Good fielding. I do not mind the Babar wicket because चलो अब LB हो गए, बॉल उतनी बाउंस नहीं की जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. आई थिंक it was more the bounce than anything, but Fakhar should have tried to get in. ये भी आप रिकवरी मोड में खेल रहे हो. आपने
उनकी थोड़ी सी जो जान चढ़ी हुई है उसको हाँ, आपने रोकना उसको है। किल करना, उसको राइड दैट वेव वाला सीन है, Yeah. बट किल देयर स्पिरिट बिफोर द गेम। हाँ, बट T20s में होता है उस बड़ा कम टाइम होता है आपको ना रिकवर वगैरह करने का। Yeah, but इसमें recovery है नहीं ना कोई, at the end of the day you need Yeah, 88 again- runs from 12 overs. again, Any yes. other game, if we were looking at these numbers, ना like, वो I just feel like कि unnecessary किस्म का हम pressure, वो भी आराम से खेल रहे हैं यार, सिंगल डबल निकालो अभी मारते हैं। नहीं वो कर लेंगे बट ऑल आई एम सेइंग इज इनके 12 ओवर स्पिनर्स के हैं, 8 ओवर फास्ट बॉलर के हैं। हाँ। जो फास्ट बॉलर उसमें से 3 ओवर ये लोग करा चुके हैं, 5 ओवर पीछे रह जाते हैं फास्ट बॉलर्स वाले। अगर पता नहीं चेक कर ले कि दो कितने फास्ट बॉलर्स के दो फास्ट बॉल 2 फास्ट बॉलर करा चुके हैं ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर उसने मुजीब ने 3 कराए हैं, So each footballer gets 4 Four overs. overs, yeah. और fast bowlers आप क्या पूछो? मैं कितने पूछ रहा हूँ fast कि bowlers fast के over bowlers हो के गए? अगर नबी, मुजीब और राशिद खान के ओवर निकाल दें, और अभी तक फास्ट बॉलर्स ने कितने करा दिए फास्ट हैं? बॉलर्स ने ओवर कितने कराए हैं टोटल? 4 4 कराए 4 हैं। रहते हैं। तो मतलब करते हैं ना 2-2 का। हाँ, तो नहीं तो 4 ओवर रह गए हैं पीछे, क्योंकि मुजीब ने 3 कराए हैं, तो मुझे लगता है शायद 5 ओवर रहते हो देख फास्ट स्कोर बॉलर्स स्कोर के। पे चेक उनका कर। स्कोर कार्ड अगर तू चेक करेगा ना बॉलिंग का, तो 5 ओवर होंगे आपके फास्ट बॉलर्स पे, जिन पर आप एक्सेलरेट कर सकते हो अगर आप अंडर 6 रन पर ओवर जा रहे हो स्पिनर्स पे। Those are the overs that you cash in then, and if you aren't able to cash in on those overs, then it becomes आप एक किसी स्पिनर को भी टारगेट कर सकते हो, नबी को भी इन्होंने ना नबी को भी आप कर सकते हो। Nabi is probably the easiest over out of the three. Also leak runs. Rashid Rashid can also leak runs. इसको बड़े छिके पड़े हैं PSL के अंदर। Rashid solely based on the fact that he's a faster spin bowler ना। Fastest spin थोड़ी bowler सी आपस उसका- स्पेस आती है to आपका एक work और with. भी होता है कि यार इस टाइम पे मैं राशिद पे रिस्क ना ना लो। अभी देयर आर नो, मतलब आई फील लाइक ऑब्वियसली वो भी प्लेयर हैं, वो उनका काम ही है, तो वो भी कोई किसी स्ट्रेटजी के तहत ही खेल रहे होंगे अभी वो। Do you think Indian fans are supporting Afghanistan in this match, or do you think they've given up? Obviously, Do you, but no, but do you think I think that, they've given up. or have they like given up? in the sense I'm not I think अब शायद देख I'm sure रहे they हो, must इस have वक्त given देख up रहे हैं। after the game as well, but deep down they must be like यार कोई Let us know, Indian fans, if you're watching, have you given up or do you have hope? Also, I feel like जो match pairings हुई थी ना for the Super 4, वो बहुत गंदी थी because the same people from the same group played each other in their first पाकिस्तान leg. इंडिया गारंटी करना था ना, पाकिस्तान इंडिया आप गारंटी सेकंड उसमें कर सकते हैं, so जो इनका basis संडे को था नहीं बनना था फिर। oh हाँ weekend match, yeah, I feel like that. श्रीलंका वाला मैच कब है? परसों तो फ्राइडे को दे देते मैच. संडे फ्राइडे को But the working day like होता है। the main issue that like if Pakistan India had played the second game जो अभी अफगानिस्तान वाली, it would have been a much more interesting center. Umar Gul sitting in the Afghan dugout. Too high, going down. too high. Oh, Probably review going it. down. Probably going down. I think he will review it. He will कर review it. He कर will सोच review it. मत कर दे. Take it. ले ले. हाँ. हाँ, उसने कहा है कि नहीं है भाई, नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है। Probably going down. Probably going down. Let's see what happens, guys. I'm going to take a short break and I'm not. सी बाजो. I would not want this to be a wicket. I think it could also miss the leg stump. I think it was missing. मुझे लग रहा है ऊंची जा रही है. करेगी बैग नहीं बहुत down. I think it I would think miss the direction leg बहुत stump. leg जा रही है. Yeah, yeah. Because I just feel बैट नहीं है, नहीं जहाँ पे पहला पैड हुआ है वो बहुत डाउन जा रही हाँ, थी. बहुत down. ball wicket के ऊपर से नहीं जा रही। ऊपर से नहीं जा रही, but it could go towards the leg side. हो सकता है Yeah. umpires call clipping the wickets पर आउट होगा, सकता है। कंप्लीटली मिसिंग स्टंप्स ना हो शायद ये। One second, guys. एंगल पे देखा उस पे 2 स्टंप नजर आ रहे थे। Okay, so honestly, if this wicket goes down, it's trouble for Pakistan. Really not. Yeah, Flipping. Oh no, it's out. it's hitting. Yeah, that's out. That's Rizwan. Rizwan is now out. That's 45 just sad for for 3. Pakistan because, I mean, I mean, now we have a game on our hands. It's Definitely, going to be an definitely. interesting. this is what we were 12 talking about overs. earlier, but I think we have no one to hold the wicket right now. The Afghanis have a game on their hands, and Pakistan is done riding the wave. I think it's time to start hitting.
अभी आपका आएगा जो आपका है स्पिनर. So Umar Gul's really happy because, of course, he's the bowling coach. ठीक है यार, अभी 12 ओवर पड़े हैं, आपके आगे नीचे वाले सारे आगे वो क्विक 20 शादाब Shadab को Khan, what do you भेज guys दिया think third down. of Shadab Khan coming 3 down? I think playing Shadab Rashid, I तेज think it's खेलेगा आई good. थिंक. Yeah. हो गया कि कम से कम 2-3 अच्छे ओवर निकल, एक आधा भी अच्छा ओवर निकल Yeah, जाए तो it's प्रेशर better for एकदम the से run कम हो rate. जाता Yeah, है. yeah, yeah. विकेट भी बेशक फिर चली जाए. For sure. Losing wickets is not a problem when you're scoring runs. जी. So वही बात है, हम काफ़ी दफ़ा पहले बात कर चुके हैं स्पिनर्स विकेट की. अभी तक Yeah. जो विकेट्स जा रही हैं एक रन आउट के अलावा, इट्स ऑल. I mean, expected था. Rashid Khan is Rashid Khan in the end of the day, and you can't, avoid the fact कि आपकी एक major wicket राशिद खान ने गिरानी है. ठीक है यार, मतलब also पता है some part of me like अगर major एक upset होना है, because I was expecting one upset for Pakistan, but I was expecting Sri Lanka. Yeah. The Sri Lanka match. But this could also be interesting because this could also lead to a Pakistan-Afghanistan final. Yes, that's true. A possibility of that is also there. No, technically, only if Afghanistan defeats India in the next Yeah. match, yeah, then we can have a हाँ, final. possibility तभी होगी ना, दो Yeah. लोगों की तब बनती है. वरना तो simple Pakistan-Sri Lanka. I still think somehow or the other they're going to chase this. Oh, Because I would be like पता कुछ नहीं होता कभी भी. कुछ भी हो सकता है. I mean, this is where Iftikhar has to play his role of being a very senior player in the team. यार नहीं, अभी आपके पास इसके आगे you have We have Nawaz, we have Asif we have Ali. Nawaz, we have Asif Ali is a Asif great Ali. hitter, by the way. जिस दिन मारना होता है हारिस रऊफ भी कुछ मार देता है. Oh, very great shot. That's a sweep. It's for 2 runs. Okay, now we're sponsored by McDonald's. Not really. We Thank you, McDonald's, for sponsoring us for I our mean- live session. Yeah. And आज क्राउड में ज़्यादा लोग हैं compared to yesterday. I think the Afghani crowd, yeah. You take, was your mic on? That would have been fun. Would have been funny. सिग्नल लगता है इतने दूर तक. हाँ, मतलब नीचे तक तो आराम से. In fact, जब कमरों के दरवाजे बंद हो, so the other day, not the other day, the other month we were shooting with, I think, किसके साथ हम वो कपड़ों वाला ब्रांड था, लकीरें. Yeah. So I was over here और दोनों दरवाजे बंद थे, and she accidentally went inside और उनका mic on था. And then I went over and knocked and she was like, please अपना mic off कर ले, I'm not. खतरनाक काम है भाई माइक वाला. पहले कैमरों का इशू था. नहीं, वो जो इंस्टाग्राम में तुम लोग सुबह दिखा रहे थे वो 360 वाला है. That's crazy. That's man. crazy. That's और आपको पता है बट कि बहुत सब की और obviously नजर आ जाता है, लेकिन कैमरा Yeah, but लगा like हुआ अब तो जो ये स्पाई कैम्स दराज शराज पे मिल रहे हैं, they're also insane. ooh, that was close. बहुत टाइट बॉलिंग करा रही है अभी अफगानिस्तान. सी अगेन अभी अपने वो फास्ट बॉलर्स को नहीं लेके आ रहे लाइनअप में क्योंकि स्पिनर्स विकेट हुआ है और बहुत ज़्यादा स्कोर जो उनकी वजह से ना होल्ड हो रहा है. जो why not send नवाज? नवाज बात वही है end पे ना, आपको पावर हिटिंग हाँ, चाहिए होगी, power उसके लिए hitting रख चाहिए. लो. बट जिस तरह उसने पिछले गेम में शो किया that he can come in and play a couple of ऑल्सो आई overs. रियली थिंक कि वो वो हर जो दफा नहीं करेगा ना. हाँ जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला कॉम्बिनेशन है ना, इट रियली होल्ड्स द विकेट.
तो अभी वो भी काफ़ी काम आ सकता था नवाज के लिए अगर वो नवाज को भेज देते क्योंकि I अभी तक suppose, but like अब इस point पे वो ही है कि वो I think contingency उन्होंने प्लान की हुई है कि कोई विकेट शिकेट एक आधी और गिर जाती है हो सकता तो है एंड पे नवाज वो फिर Is Shadab your strongest batsman out of the four? Asif, Uh, Iftikhar. no, not really. Not. No, I think Asif. No, in fact, Nawaz. Yeah. आसिफ नवाज एक ही बंदा नहीं है नहीं, Nawaz is the spinner. आसिफ अली Nawaz is the left-handed batsman, and Asif Ali is the right-handed batsman who कल scored. किसने स्कोर की है Nawaz, Nawaz. the left-handed batsman. Yeah. End and पे then या शुरू Nawaz में? is the stronger stronger. batsman Yeah. is what I was saying And he's the all-rounder. आसिफ अली इज द हिटर जो बल्ला घुमाने वाली बात मैं होती है। अभी मैच के स्टार्ट में आपसे बात कर रहा था कि will it come down to Asif Ali hitting 3-4 sixes right at the end of the match और मुझे वही वाली फील आ रही है अभी. Yeah, but वो इन आसिफ अली को आप 17वें ओवर से पहले भेज रहे हो तो फिर उसका मतलब है कि आपका मिडिल ऑर्डर collapse कर गया. But look at that shot from Shadab, pretty great shot for 2 runs. Ooh, that was close. सही है आराम से सिंगल डबल निकालो ओवर निकालो 4-5 रन That's how to do it. Yeah, but you can't deny the fact that he looks a lot like Drake. No. I mean that's Like another बहुत शक्ल debate. मिलती है उसकी ड्रेक से देखो यार ये तुम बता नहीं सकते और बीच पे ना वो गोल्ड चेन भी पहनना शुरू हो गया था अगर किसी को याद है तो आपने जब चेन शुरू की थी ना तब तो पूरा ही वाज लुकिंग लाइक वो अर्ली सीजन्स ड्रेक. Okay, so we have. Oh, we totally forgot about Khushal Shah. I don't rate him as a batsman. I don't think Khushtil is He's in the Pakistani team as a I batsman. still What do you? don't, I don't rate him. I feel like there is a better option, especially if you have an Asif and Iftikhar, then you don't need a Khushtil. Why do you guys think they sent Shadab over Khushtil and Asif and Nawaz? you want to give Shadab some more time And Shadab, I think, better at playing spin compared to this. Yeah, 100%. Because Khushtil was in Multan, right? PSL में. Multan में था ना. Khushtil का काम से था आगे लड़ाई करता था वो बॉलर से. हर and he मैच had में that उसने sort बॉलर of से लड़ाई की attitude, थी. yeah. ठीक है, अक्कड़ थी. But बहुत रेयरली उसने आगे 1-2 मैचेस में I admit Sort of like उसने- Imad Wasim. I admit उसने 2-3 मैचों में बचाया है हमें अच्छी बैटिंग करके. But अगर आसिफ है और इफ्तिखार है दो हिटर्स हैं आपके पास एंड इवन नवाज खुशदिल की जगह यू कैन हैव अ थर्ड लाइक और अ फोर्थ कंप्लीट बैट्समैन. Khushtil apparently is a complete batsman. But he's a hitter. He's not a good middle order. Like अगर So what do आपकी- you suggest? Like यार शान मसूद के Shan अलावा Masood honestly is great. He's left-handed, which we need in the team because of that. Again, I think Me- Shadab also has more experience, so I think right now they just sent. who is वो पेशावर जल्मी का या क्वेटा का कीपर वन डाउन बैट्समैन जो बहुत पतला है हारिस सुहेल हारिस नहीं इस तरह का किसका? क्वेटा का है या पेशावर का है जल्मी का वेरी थिन ही इज आल्सो देयर विकेट कीपर. Okay. Stat guy. स्टार्ट का है वो खुद ही I है. wish we had a stats guy behind the lens. वो बहुत ज़्यादा हमारी कमेंट्स आ रही हैं हम तब से. Oh, देख what's नहीं the रहे cost थे. of Guys, this? let's look at the comments because थोड़ा सा. आलू वाले चिप सेट के कोई स्नैक्स रख लो गाइस. ऊ डॉम्स द वॉल्यूम इज लो Yuppie. बॉयज. Oh, Okay, that's किसकी volume low है guys? Please हमें बताएं. या चलिए, ये refresh. आई थिंक मैं जाके वो एडजस्ट कर लूँ. Let's just turn them up 2-3 points so that you Who's guys can Aloo hear. wale chips? Is it someone we know? आई हैव नो आइडिया. I hope not. Aloo wale. हो सकता है. Yeah, guys, not bad. That's a great cut shot by Iftikhar. Some experience he's trying to show. I mean, so we hope. So yeah, we've had a lot of comments, some fun ones, some from Taha. ये जो है ना
amazing pull shot for just 1 run. अच्छा, whenever I hear Taha's name मुझे सिर्फ एक चीज़ याद आती है. मेरा ऑफिस में पहला दिन था and I was on that video. Hi, I'm Taha Tariq and I'm the chief strategist officer at CBM. बस ये मेरे ज़हन में फंसा हुआ है क्योंकि मैं इसके लिए वो elements ढूंढ रहा था for this video. तो Edit बस कर रहे थे? हाँ, मतलब पहला दिन था और मैं बस ताहा को देख, और उन 2 हफ्ते ताहा आ नहीं रहे थे. So I was like, who is Taha? यही सवाल रहता है, who is Taha? हमने And इसको where एक is कहा Taha? ताहा 30 साल का है, उसको he looks young but he's actually like 40 or something. We did that with a lot of people. I remember मैंने तुम्हें कहा था ये एक दफ़ा. But I don't know if you believed us or not. Probably not. Taha's, how old is he? He's Taha's not. like He's 34. Like around about my age. he's a bit older. हाँ, मतलब yeah, couple of years. Okay, so you both look around like 28, 29. Nice, thank you. I mean, honestly, no. ताहा और आमना Hirali या use मैं और करते हैं. आमना? Taha around. Shout out to Hirali. यार मैच स्लो हो गया है. Very slow, very slow. Kind of boring for us and for the people who are watching us. जो बैट्समैन याद नहीं आ रहा कौन था. कौन सा वाला? यार वही जो यंग. Hyder Ali. Peshawar Zalmi's keeper and यार जो thin बीच में उसने opening आके- batsman. नहीं वो आई थिंक बीच में टेस्ट मैच भी खेला है हमारे लिए. नॉट अब्दुल्ला शफीक. हाँ, वही दिमाग में आ रहा था मेरे तो. Fawad Alam, Haris Sohail. They हारिस both were not. सोहेल. Haris Sohail was not a keeper. Was it For Haris sure. Sohail? No, not at all. Oh, was he? He was. He I was, think. but लेकिन वो Actually, हम लोगों ने इतनी क्रिकेट नहीं देखी कि हमें पता नहीं ये आएगा. हम ये कर रहे हो यहाँ पर बैठ के. Oh, good ball. surely 2 runs, no 1. जैसे हो सकता है मैं अब्दुल्ला शफीक की ही बात कर रहा हूँ. Abdullah Shafiq keeper था. तुम हारिस सोहेल की बात तो नहीं नहीं मैं अब्दुल्ला शफीक की ही बात कर रहा था आई थिंक. Abdullah Shafiq, I don't know if this format of the game. He was very good for whichever team, Zalmi or Quetta it was. I'm still a big fan of Fawad Alam in terms of fielding and his batting stance. I mean, जिस not तरह for से T20. yeah, not for T20, but I think Yeah, sometimes but वो जब इस ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे उसने रियलाइज वो हो गया था कि नहीं टाइम रहा अब कि उसका. अब निकल गया उसका हाँ. time. But he's making his acting debut, so. Really? He is? Yeah, wasn't he in like some TV drama? He already did that. I mean, great He for made him an then. acting debut. Mohammad Haris. Mohammad Ali. That's a Mohammad great Haris shot. is who I'm talking about. And it's Straight just to the one. fielder. Feels like a Thor teaser. Ooh. पीका शो क्या है? उनका स्पॉन्सर देख रहा था मैं. ये बाकी टोला कहाँ गया? पता नहीं. हमें छोड़ के सारे चले गए. I know मैं मतलब अकेली ही बैठी हूँ. Technically you guys are technical support. Hybrid people. Two hybrid people sitting over here. Yeah. In front of and behind the camera. बट कुछ दिल मिस है ब्रो. क्यों? आई स्टिल मोहम्मद हारिस के लिए मैं बहुत लड़ रहा हूँ. That's a great shot. It's surely a gone. 6. It's surely a 6. Yes, it is. It's out of the stadium. It's on the road by Shadab Khan. Amazing shot. Okay, so the reason for sending Shadab up was this. This quick singles that they got. शादाब from spinner lack खेल of सकता है. The pressure. energy. स्पिनर खेल सकता है शादाब. Yeah. 97 meters. Oof. Wow. Drake यार. Drake.
बात वही है ना, स्कोर इतना कम है, वो जितना मर्जी बॉलिंग अटैक स्ट्रॉन्ग कर लें, हर ओवर में 1-2 बाउंड्रीज उनके लिए प्रेशर। T20 में कुछ भी नहीं है ये स्कोर, और ये हो हाँ। जाना है भी, मतलब हल्का फुल्का, मतलब as good as Afghanistan is, I don't think they have the capacity to get Pakistan all out. But fair, I thought the same about India also, that India didn't have the capacity to get Pakistan all out. पाकिस्तान हैज़ द कैपेसिटी टू गो ऑल आउट. Yeah, sounds so true. अफगानिस्तान करे ना करे, हम खुद कर सकते हैं. Oh, good ball, good comeback. शादाब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खेला था. Another And one, that's his guys. 4. That's a great shot, a full toss. Yeah. एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, जिस एरिया में छिका मार रहा है ना ये. हाँ. कैमरा बड़ा इंटरेस्टिंग, इंटेंस कैमरा दिया हुआ है बड़ा. लगता है भी कैच होएगा. अच्छा, आप लोगों को लगता है कि एक स्पिनर का क्रीज पे होने से उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है एक अगले स्पिन बॉलर की जो उसको बॉलिंग करवा रहा है? I've honestly always wondered. Like, I really don't know. Yeah, because, but- like, इस तरह तो फिर फास्ट बॉलर्स को टेल एंडर से बॉलिंग पे होनी नहीं चाहिए. नहीं, but like fast bowlers, I guess I really don't know. उसमें variation नहीं है ना. I feel like आई डोंट थिंक देयर इज अ बेरली होएगा बट Because नॉट एक बाउंड्री डिसर्नेबल. पड़ने के बाद एक स्पिनर को पता हो सकता है कि कमबैक क्या हो सकता है. because tennis players काफी कहते हैं कि यार, मतलब जब वो ऐसे लोगों के खिलाफ खेलते हैं जो जिनके उनकी साथ तरह उन्होंने का है. train किया हुआ है. अच्छा. Like the people that they've trained Yeah, with, the people the- they've grown up playing with in like different formats, because उनका तो pipeline एक defined ही होती है type. हाँ. So they know exactly how the other player is thinking. So a lot of the game is also, this person knows I'm thinking this, so I'm going to play like this, so I'm going to play like this, so he thinks that I'm not thinking like this. Yeah. If that तो makes इसी sense. तरह ये PSL और IPL एक्ट करते हैं ना, ये इंटरनेशनल Yeah. प्लेयर्स का नेट्स में प्रैक्टिस और एंड ऑल दैट. So I wonder if फिर तो हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया को खाली कर देना चाहिए था. हारिस रऊफ ने सारा अपनी ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया में की हुई है ना. Really? जो लाहौर के लंदर्स थे, दे सेंट हिम टू द बिग बैश. या बिग crossover. बैश में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग रही है इन But- टर्म्स ऑफ बॉलिंग. हारिस रऊफ का काफ़ी मार्कस रैशफोर्ड एक फुटबॉल प्लेयर, उसका सीन हुआ कि जो उसकी जिस टीम में था वो, उस टीम के कोई 6 बॉलर इंजर हो गए थे और फिर उनको खिलाना पड़ा था कि ये उनका अकेला फास्ट बॉलर रह गया. तो फिर इसने आई थिंक लकी फॉर हिम 2 मैचों में 2 हैट्रिकें की थी, या उसने बहुत ही अच्छे फिगर्स कराए थे. बस यार, फिर जब आपकी किस्मत चलनी होती है हाँ. तो चलनी होती है. ये बट सीधा वो मुजीब को वापस ले आए हैं. Yeah. को पता है कि बट लाइक इसी तरह वो, आई थिंक वही जो हम सुबह ही बात कर रहे थे, बाबर की जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो आपके थोड़े मिडिल ऑर्डर को चांस मिल रहा है खेलने का, उनको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है. सिमिलरली बाय वर्चू ऑफ शाहीन एंड दहानी एंड वन मोर, हु एल्स? हसनैन. हसनैन नहीं, आउट क्यों है ड्यू टू इंजरी? हसन अली. हसन अली, हसन अली आउट ऑफ इंजरी तो नहीं, आउट ऑफ फॉर्म है. हाँ. आई मीन, या बेसिकली आउट ऑफ टीम है बिकॉज़ ही इज नॉट. हाँ नहीं उसका, बट ही हैज हैड अ फॉर्म डिप फॉर द पास्ट 2 इयर्स ना. हसन अली ने पीएसएल में भी नहीं कोई अच्छा किया खास. ऑल्सो मुझे वही लग रहा है कि उसका एटीट्यूड ग्राफ बहुत जल्दी ऊपर गया है, बट हिज परफॉर्मेंस ग्राफ वाज, जब उसने वो नहीं चेन यार, बनवाई थी ना, द चेन वाज द डाउनफॉल. आई थिंक उसने एक ही अपने मैच था नाम की जिसमें chain शादाब बनाई और थी. हसन अली ने मैच सेव किया था और उधर से बड़ा दे वर विदाउट बियर्ड गाइस, बहुत नए नए आए थे. दैट्स अ ग्रेट शॉट, इट श्योरली अ 6 अमेजिंग शॉट. सो लाइक स्पिनर को समझ सकता है स्पिनर क्लियरली क्लियरली, या क्लियरली. सो गाइस, मतलब हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे 12 ओवर मैच फंसा हुआ है, कपल ऑफ गुड ओवर्स, या And- इट्स ऑल गॉन. इट्स ऑल गॉन. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मेट. सो इसमें इतनी जल्दी टेंशन नहीं लेनी चाहिए. अच्छा अगर ये वो फॉर्मेट है जिसमें आखिरी 2 ओवर में 50 रन भी हो सकते हैं. अच्छा शादाब काफी हॉकी शॉट्स मार रहा है, अगर देखो ना फ्लैट आर्म, जो आपका बैक आर्म फ्लैट हो है ना, काफी ये गोल्फ खेलता रहा है. हॉकी स्वीप है अच्छा ये. देयर इज दिस अनदर थ्योरी के जो बॉलर्स होते हैं ना, वो इन टर्म्स ऑफ हिटिंग बाउंड्रीज वो बैट्समैन से ज़्यादा अच्छी बाउंड्रीज मार सकते हैं बिकॉज उनका बॉलिंग करवा के ना उनके हैंड्स बड़े वो उस हाँ तरह वो से. ऑब्वियसली वो Yeah. फोर आर्म स्ट्रेंथ की वजह से, सोली ऑन द स्ट्रेंथ. यस, तो सब another try but failed. शादाब की बॉल के पीछे भागे. बॉल को राइट करने के लिए. आई एम ग्लैड camaraderie और Yeah. पूरा लग रहा है. अब देखो जस्ट 1 बाउंड्री ऑफ द ओवर. 7 रन का ओवर भी अभी बैड है अफगानिस्तान के लिए. हाँ यार प्रेशर की बात है ना, जिस ओवर में एक मतलब एक 6 या बाउंड्री लग गई है तो वो
आई रियली थिंक दैट इफ्तिखार शुड पेस इट अप. 25 किया उसने 24 बॉलों पे, और मतलब ठीक है विकेट रोकना इज़ ओके, बट आई डोंट नो, T20 फॉर्मेट है थोड़ा सा. यार हाँ, बट वो ये दूसरी साइड पे बंदा मार रहा है, पीछे 50 रन रह गए हैं, ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्या है, बिला सही वजह है, का हाँ. प्रेशर क्रिएट करने की. What do you guys think about आमिर? अगर आमिर का ये वो ना हुआ होता मसला बोर्ड के साथ, एंड आमिर एंड शाहीन प्लेइंग इन द टीम एक साथ, और वही यार वाला मेरा बड़ा बायस है आमिर के बारे में, मुझे बहुत पसंद है. सेम. तो या आई वुड लव टू सी हिम, लेकिन राइटली पॉइंटेड आउट बाय मल्टीपल पीपल दैट आई हैव स्पोकन टू अबाउट दिस कि आमिर की परफॉर्मेंस में भी इन द लास्ट डिप आया था, या जस्ट लाइक हसन ईयर अली. और सो डिप आया था. तो ऑल्सो आई थिंक इट्स ऑल्सो गुड कि एक लेफ्ट आर्म अगर फास्ट बॉलर है तो दूसरा राइट हैंड हो जाए फॉर द वेरिएशन, तो दोनों. और ये कि यार पता है बेहतर है कि आपके यंग प्लेयर्स को चांस मिल रहा है. हाँ. आमिर का लॉन्जेविटी ऑफ करियर नहीं है ना इतनी, तो मतलब वो यार आमिर could have done the Jimmy Anderson and stayed on as a test bowler. उसका सबसे ज़्यादा यस वैल्यू यस टेस्ट बॉलिंग में होनी थी. वो टेस्ट बॉलिंग खेलना कराने में मसला ही उसको सारा ये पड़ा था ना कि उसने कहा था मैंने टेस्ट नहीं खेलने, या शायद उसने कहा था मैंने क्या कहा था, टेस्ट नहीं खेलने शायद. उसके वो ये भी जो मैं हमजा से बोर्ड मोनोपलीज की बात कर रहा था, उनमें भी इशू थे, उसको चांस दिया जा रहा था या उसकी कुछ इस तरह से सुनी यार नहीं पहले जा रही. उसने कुछ किया था कि उसने कहा था कि मैंने टेस्ट फॉर्मेट नहीं खेलना और समथिंग Ooh, लाइक good दैट. ball. व्हाटएवर इट वाज, बॉटम लाइन है कि अब अच्छी खासी आपकी क्लियरली आपको पता है पाइपलाइन 10 रन का फ़र्क है और बॉलें कोई 40 हैं, रन कोई 50 चाहिए. सो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी टफ मैच. लेकिन इस You दफा have 4, PSL से 5, भी 6 प्लेयर निकला. wickets in hand. नहीं नहीं कोई हमारी जो स्टार्टिंग 11 में कहानी है. धानी है. धानी था काफ़ी देर से, लाइक इस साल के PSL से. इस साल के पीएसएल से फौरन तो नहीं आएगा ना, टाइम लेके ही आएगा. अब्दुल्ला शफीक टेस्ट में गया, लेकिन शायद अब्दुल्ला शफीक पहले टेस्ट खेलता था बाद में. यार जो वो वो था तो ना PSL से मशहूर नहीं हुआ. लाहौर कलंदर्स का तीसरा बॉलर एक्चुअली राउफ था, शाहीन था, फिर जमान था वो. Oh, that guy जिसका थोड़ा सा मलिंगा वाला एक्शन. हाँ, I'm not even remember the he was a good one. death over Yeah, option. yeah, yeah. Because उसने पिछली ज़मान खान. जमान if खान I'm- उसने 3 मैच उसने he bowled the last over और उसने अच्छी डेथ बॉलिंग कराई हाँ. है. But I guess अभी because it's we're moving towards like a World Cup, so अब So we have squads में we आप need to ज़्यादा have yeah पंगे some नहीं sort लोगे. of variation in our squad. But हो सकता है कि maybe you see somebody who's like a World Cup की टीम अनाउंस हुई है squad. No, Not yet. I अभी think नहीं. waiting for the Asia Cup to end. हाँ. But I think you'll also see more players now migrating nations, especially from Pakistan now. Yeah. There's a Hong Kong की team, you have a lot of expats in there. Yeah. I think soon enough आपके बट ये दुनिया में हर स्पोर्ट में होता है. अभी क्रिकेट में नहीं हो रहा. अच्छा है अगर किसी को मौका मिल रहा है जाके लाइवलीहुड अपना बनाने का, और यहाँ पर अगर उनका प्लेइंग 11 में नहीं बन रहा काम, तो ठीक है, दे शुड. What's up guys? We are okay. आ जाओ. The match is kind of slow right now. Yeah. Not. हाँ मतलब By the way, 10 बजे एप्पल का इवेंट भी है. तो हम उसकी अपडेट्स भी दें. iPhone 14 अनाउंस होने लगा. I think हम लाइव वॉच अलोंग उसका भी कर लेते उसका भी हैं कर सकते हैं साथ साथ. घर ना जाए बस. हाँ. घर ना जाए बस. थैंक्स. Short. That's one. Yeah. अब वो शादाब के साथ फिर अपनी चीजें. good to see Our you main guys host Hamza actually. Zafar is back. Almost. But why? डेथ ओवर्स के लिए हमजा आना चाहता है. Your championship rounds. Amna, can you please speak? Oh अच्छा. Yeah, they're trying to test your audio. Are you trying to test my audio? Why? एको आ रहा है? किसकी ऑडियो में? Why? Hello.
I think Hamza, if you can switch with me, I can see what's the issue that's been going on. I think A7 S3 या A7 Yeah, I'll 3 see what's going दोनों को on. -2 dB पे ले Over to you, Hamza Zafar. Hello. Rashid Khan, guys, with 2 more overs to go, going at less than 5 runs per over. The match is still on. Do you think it's still on? I mean, 47 from 34. Yeah, I think it's still bloody on, Amna. I wouldn't, like, again, how charged up the Afghanis are. Loss of wickets here and there. But that's how they are in every match against Pakistan. हर मैच में तो नहीं, let's see if they अफगानिस्तान can ने कोई sneak भी 2 extras runs. They नहीं है? should. पता नहीं. अभी तक मुझे नहीं आई थिंक याद अफगानिस्तान ने उस तरह बड़ा टाइट रखा है अब बड़ा टाइट रखा है, बस आप इसके राशिद के 2 ओवर्स निकाल लो किसी तरीके, बाकी ओवर्स में रन करने की कोशिश करो. किए शादाब ने अभी नबी को काफी नबी को एक अच्छा ओवर किया नबी के खिलाफ 2 सिक्सेस और वो भी 96 वाले स्टेडियम के बाहर वाले. शादाब भी कह रहा है इफ्तिखार को कोई जरूरत नहीं थी भाई, क्या हो गया. कर रहा है ये मेरे साथ तू. इज देयर एन ऑफ सीजन इन क्रिकेट? नहीं, बिकॉज पूरे ग्लोबल एक चीज़ होती है, तो वेस्ट इंडीज़ का एक टाइम होता है, वहाँ पे क्रिकेट अच्छी हो रही है, सब कॉन्टिनेंट रीजन का एक टाइम होता है. सो व्हेन डू आवर प्लेयर्स गेट वेकेशंस? आई थिंक इतनी ज़्यादा सीरीज हो रही होती है, बीच में ब्रेक्स मिल जाती हैं. होती हैं. और मतलब आप सारी तो नहीं खेल रहे हो, दिन क्रिकेट चल रहा होता है. इट्स नॉट लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ एवरी कमर्शियल लीग. बट जिस तरह बाबर, अ प्लेयर लाइक बाबर जिसने वो तो कितनी कमर्शियल फारी कमर्शियली हम खेलते खेलते हैं. ही नहीं. और आपका ऑफ सीजन वो होता है जहाँ पर आपके लेट्स सपोज द स्लाइटली लेसर नोन कमर्शियल लीग्स हो रही हैं. I think now there are enough like teams and cricketers in the world. पहले तो सिर्फ वही होता था ना, काउंटी खेलते थे जाके. काफ़ी जगह इंटरनेशनल खेल रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स जो नेशनल टीम के लिए नहीं खेल रहे होते वो भी खेल रहे होते हैं. Again, hugs and kisses and everything, like it's such a positive atmosphere. प्यार बहुत है. अच्छी बात है यार, होना भी All चाहिए. around, it's great to see. यार 5 की रन रेट है. 45 from 6 overs. नहीं, 5 overs. I think this is the over they should take advantage in. So I think इफ्तिखार की भी वही नियत है, बल्ले पे नहीं आई से. This should be at least 12 run over, I feel. इफ्तिखार की आखिरी बड़ी परफॉर्मेंस कब थी? बड़ी परफॉर्मेंस इफ्तिखार की आई थिंक कभी मुझे नहीं याद मतलब आती वो कभी भी हुई हो. इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस बड़ी उस तरह नहीं. ऐसे कोई आई डोंट थिंक उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, बट अभी भी आकर स्टेबलाइज कर दिया, रन पर बॉल पे जा रहा है. ही वुड वांट समवन फ्रॉम द अदर एंड टू अटैक अ बिट. वेलकम बैक. आप भी नगेट्स खाएं. संजय मांजरेकर भी टेंस्ड है. आई थिंक हम इस मैच में हमने कमेंट्री भी नहीं सुन रहे थे बैठ के, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स्ड हैं. या जिसका भी इन्फ्यूरिएटिंग कमेंट्री होती है. ये क्या क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए? आई थिंक इंडियन कमेंटेटर्स ने अभी तक पाकिस्तान को मैच नहीं दिया है. इंडियन कमेंटेटर्स ने तो हांगकांग वाला मैच ही पाकिस्तान को नहीं दिया था. 38 for 9 but anything could happen. बहुत ज़्यादा बायस नहीं है. नहीं 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 कि देने की जरूरत. सुन चल दे दे क्या नहीं आ रहा? कमेंट्री. अभी नहीं हो रहा. 2 और बस. बट ठीक है, बहुत है. यही बैट को 2 दफा लगी है. No, that's out. That's out. Actually didn't make a bad sound off the bat. Yeah. Yeah. He also went for the longest boundary जो I think come like Height नहीं वो मिली. 30 from 33 balls. Run per ball like इस मैच के हिसाब से match ठीक में था. ठीक है. इस मैच के हिसाब से बट ठीक मैं था. वही पूछ रही हूँ कि जनरली उसके क्या स्टैट्स रहे हैं. इफ्तिखार की आखिरी 10-15 इनिंग्स देखो जो उसने खेलनी है. एवरेज इतनी है उसकी. Average इतनी, but 130 की strike rate से खेलता है.
130 की स्ट्राइक रेट से खेलता है? नहीं यार ठीक है, पाकिस्तान के लिए 130। 130 स्ट्राइक रेट अच्छी है T20 कौन आया? नवाज? आवाज कोई आएगा? है मैंने खुशदिल आया, खुशदिल आई लाइक यार। हाँ, 4 Khushdil is not. नवाज भेजा है, खुशदिल नहीं See, भेजा। even the team doesn't rate Khushdil. They don't think he can do much. यार ये मसाज कराने लग गया। Squares भेजो. पहले ही स्पॉन्सरशिप लगवा हुआ है। लतीफ कर रहा हूँ मसाज। सर देखिए सब सही है लेकिन आप ऑफ साइड को थोड़ा सा टारगेट करें साथ साथ. इस तरह के जो क्रैम्प्स होते हैं these tend to last throughout the match as long as you're playing, as long as you're sweating. It's really hard to avoid. डिहाइड्रेशन होती रहेगी और अंपायर्स भी आकर कह रहे हैं जल्दी करें। मैं पिछले मैच में भी ये कहा था कि गेटरेड नहीं नजर आ रहा मुझे। स्पॉन्सरशिप में नजर आ रहा है, उसके अलावा नहीं नजर आ रहा। यार गेटेड वाले सप्लाई दे दें इनको। Can Afghanistan beat Pakistan tonight? I think प्राइम को करना चाहिए रीच आउट KSI से कहते हैं कि पाकिस्तान को स्पॉन्सर करो। ब्रो KSI आए 2 महीने यहाँ पे रहे, इसको नेशनैलिटी भी दे देंगे हम। उसको अर्निंग चाहिए। नहीं इसको दे देंगे हम। वो एक्सेप्ट आई थिंक इसको चंक्स को देनी चाहिए आई फील। चंक्स इज नॉट पाकिस्तानी डिसेंट। ही इज नॉट पाकिस्तानी एनीथिंग। आई एम जस्ट ये सेइंग एग्जैक्टली मैं तो आया था तुम उस नहीं उस पर्सपेक्टिव से नहीं, वैसे कहता है आई रियली लाइक द गाय। KSI कौन सा पाकिस्तानी डिसेंट है? नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि उसका है। वो तो वो भी नहीं है, बिग स्टार भी नहीं है। हाँ बिग स्टार भी नहीं है, आई थिंक ही इज आल्सो विच आर इंडियन विच आर मो इज इंडियन। मो जो उसका वो एडिटर भी है। अच्छा मो सईद। एक शो है वो नेटफ्लिक्स शॉट अच्छी आई है बल्ले पे, बट आई थिंक लंबी बाउंड्री पे थी। आई एम प्लानिंग टू वॉच इट। It's good. The guy basically has a सरप्राइज दैट lean ड्रिंक addiction. हाँ? A lean addiction. वो क्या होती है? Lean is a drink which is made out of Sprite and this medicine. That's वो really cough syrup वाली? Yeah. किसकी एडिक्शन है? Green cup कभी सुना है आप लोगों ने? Green cup. बट व्हाट इज But I had किसको friends एडिक्शन who है have उसकी? like Red Bull and cough syrup and like Yeah, that is basically lean. तो लीन लाइक हु हैज दिस एडिक्शन? There's this show on Netflix about this Palestinian kid, Mo. जो ब्रिटिश बंदा प्ले कर रहा है। Yeah. ओह लकी एज। बहुत lucky. टेक इट। कोई पिछले दफा नमाज का ऐसे शुरू हुआ था, so I mean you know it's good. गुड ओमेंस। Was Sanjay Manjrekar ever a good cricketer? संजय मैं मांजरेकर। संजय मांजरेकर की आज तक क्रिकेट देखी भी नहीं, सिर्फ उसको बचपन से कमेंट्री में देख रहा हूँ मैं। आई थिंक हर्षा भोसले एट दिस टाइम। रमीज राजा क्रिकेटर था। रमीज राजा ने आपका 92 का कैच वर्ल्ड पकड़ा कप का था। फाइनल कैच जिसने पकड़ा। रमीज राजा और आमिर सुहेल की बड़ी फेमस ओपनिंग पार्टनरशिप, लाइक ओपनिंग पेयर होता था उस टाइम पर। आमिर सुहेल वाज अ लेफ्टी एंड रमीज राजा वाज अ राइटी। ये आई थिंक हमारा प्लेयर लेट गया फिर से कोई। इज रमीज राजा स्टिल द पीसीबी चेयरमैन? Yeah, he is. यस स्टिल अ राइटी। उसको उतारा तो शायद असल में ही सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। सिविल वॉर होए ना होए, और रमीज राजा जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई है तो काफ़ी ज़्यादा उस पर भी पूछा जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे, आपको हटा रहे हैं, आपको हटा रहे हैं। उसने कहा हटाएंगे तो पता चल जाएगा सारों को। अभी तक तो वो है। अभी तक तो नहीं हटाया। अभी तो हूँ। अब किसके लिए फिर? इसी के लिए आई थिंक ये कुछ एक्सप्लेन कर रहा है उसे। So मोहम्मद यूसुफ इज द बैटिंग कोच? सारे वैसे ही आई थिंक कोई कोचिंग टीम मोहम्मद यूसुफ इज लाइक द हेड कोच आई थिंक। अच्छा। हेड कोच सिक्लान अभी। हेड कोच सिक्लेन, कैन यू चेक कंफर्म दैट? आई डिड गूगल इट। शॉन टेट आपका बॉलिंग कोच है एंड आई थिंक मोहम्मद यूसुफ इज योर बैटिंग कोच। सिक्लेन सीनियर भी है आई थिंक मोहम्मद यूसुफ से शायद इसलिए। सिक्लान वाज योर ओल्ड कोच एज वेल, फिर उसको निकाल दिया था जनवरी में एंड देन दे ब्रॉट हिम बैक। इंटरेस्टिंग। बट आई थिंक जितने ये नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर्स रखेंगे ना टीम में उतना ही बेहतर है भाई। समवन हु डज नॉट आई थिंक The मिसबा वकार कॉम्बिनेशन was probably वेरी the बैड। very वो ए स्पोर्ट्स पे बेहतर है। हाँ
मतलब वो अच्छी खासी टीम को तबाह जो है ना लग रहा था कर देंगे। But Misbah is too young to be a coach. Like if he's Misbah's played not with players. like I don't know, मतलब ना उसका कोई उस तरह का कोई आउटस्टैंडिंग किस्म का करियर है, ना वो टेक्निकली कोई उसका ऐसा पार्ट है कि वो बट आई थिंक ये टीम भी कोच रिलायंट नहीं है इतनी ज़्यादा। या नहीं, लेकिन वो आई फील लाइक वो जरा मिसबा और ज़्यादा वकारी यूनुस की इंटरफेरेंस ज़्यादा होती थी। पता नहीं शायद। और टीम से बड़े सेलिब्रिटीज तो वो थे। I think पाकिस्तान को भी टेन हाग की ज़रूरत है। किसकी? एरिक टेन हाग जो यूनाइटेड का नया कोच आया ना, he's turned the team around. उसने आर्सेनल को भी रहा है। Listen, अभी it's I think it's too early to ये काम बैठे हैं हम लोग। घर यार इतनी दूर समझ आती है मैच में हो क्या रहा है? हाँ हाँ हम भी इतनी दूर से देख रहे हैं। सॉरी हम भी इतनी दूर से देख रहे हैं। वो तो उसने यार लाइफ पैक्स वो है यार, ये डाइव मारनी चाहिए थी। आई थिंक उसको बेचारे को लगा उसको लगा बट आई फील लाइक उसने इंजर ना होने के लिए किया है कि यार नॉट वर्थ इट। तो नहीं आई डोंट थिंक नॉट वर्थ इट वाली चीज़ थी। आई थिंक उसको तो लग रहा मतलब था वो मसल मसल पुल हुआ नहीं होगा उसको लग रहा था पहुंच गया। जी और क्या है? मेटा स्पोर्ट्स। My bad, mate. It's all good. Henderson ना आया बस। ओए वही तो मैंने देखा भी नहीं। That's crazy. Live on cam. That's crazy. Crazy Packful on cam. It would be very important to see when Pakistan decide to close the game or finish the game, and it could go either way when that happens. 4 overs after this ball. Oof. यार मेरी बात सुनो। हाँ। जो हमारी स्ट्रीम है उसके अंदर अभी जाके अगर हम इसको स्प्लिट स्क्रीन कर दें, कैन वी डू लाइक मीम्स एंड लाइक दूसरे पेज पे लाइक लेट्स सपोज Just 6 runs from that over, and that was a fast bowler's and over. like we can do like memes and all of this like because I'm thinking about when things slow down हाँ ट्विटर फीड हम कर दें साथ कोई एक साथ उस पे हमारी जो हमें भी चाहिए होगा ना उसका एक हम इधर खोल लिया करेंगे। हाँ कर सकते हैं। They would have to eventually accelerate at some point. Rashid का आखिरी over. Let's see if they attack or if they try and play him out. Could we move the mouse a bit to the right? Amna, what do you think? Should they go for it in this over or should they I try think we and just wait for the Rashid over to end and then just take them on। क्या पीछे नहीं Shady all the way, all the way. The leg spinner knows the leg spinner. I Yeah. feel. I We feel were just talking about this. Do spinners have like an advantage playing other spinners or just generally bowlers? I'm really not sure. I think We were really also not sure. Achha, this divides up into two. But clearly, like Shadab seems to be doing a good job. But Shadab is probably the least reliable. Like, you know. Yeah, out here. yeah. That is out. Taken. Steal. That's what he wanted. But I think Shadab came, did his Did part. his job. Did Yeah, his yeah, part. yeah, And let's. मैं बता रहा हूँ अभी आसिफ खुशदिल को को भेजेंगे। I think आसिफ को ही भेजेंगे अभी। They don't rate him. हाँ हाँ लगा लेते हैं बराबर हो जाएगा। तुम देख तो नहीं रहे तुम्हारी स्ट्रीम आगे तो नहीं है? यार नहीं ब्रो मैं बता रहा हूँ खुशदिल का doesn't make sense because जिस सिचुएशन में उसको भेजने का बनता है ना
हर सिचुएशन में कोई बेहतर प्लेयर है उसकी जगह भेजने के लिए. नहीं बट अभी आई थिंक राइट हैंड कॉम्बिनेशन शायद मेंटेन करने के लिए लेफ्ट राइट हैंड करने के लिए शायद भेज दें. बट अदर देन दैट आई वुड रादर हैव खुशदिल कम इन एट दिस टाइम. लेट्स सी हु कम्स इन. Can somebody Google what that is? No idea. We did definitely make ये a वो match. खुशदिल वो खड़ा हुआ है. खड़ा हुआ है, so yeah, so I think you win your $100 back. Yeah, we're even. You win your $100 back. Yeah. Is a streaming app for cricket, TV and movies. Cricket, TV and movies. Yeah. मैं बता रहा हूँ, no one rates खुशदिल. And खुशदिल is a bowler as well. वो उसने मुल्तान के लिए भी कराता है bowling. I think वो, but again, ओवर ही नहीं कराते. उसको ओवर भी नहीं देते. Yeah, but I think खुशदिल is a इफ्तिखार decent टाइप है batsman. ना कि like, but again you have an इफ्तिखार for that role. Let's see what happens. एक dedicated I batsman दे feel दो उसको Afghanistan have their tails up. I feel जगह. Nice. That's why you send Nice. Asif and not खुशदिल. Send Asif every bloody time. I feel दो जंगली टीमें आपस में लड़ गई. सही बात. वो विकेट लिए जा रहे हैं और वो छक्के मारी जा रहे हैं. फिर T20 की बात ही तो ये है, विकेट लो और छक्के मारो. Let's see. राशिद को 2 छक्के पड़ चुके हैं इस ओवर के अंदर वैसे. क्रैम्पिंग अप राशिद खान. नो, और उसके अलावा मुझे खुशदिल से ना बड़ी लोग बिजी डू नथिंग वाइब्स भी आती हैं. लाइक इंडिया के मैच में उसने आई थिंक आखिरी रन उसने मारे हैं. लेकिन खुशदिल ऐसे खड़ा हुआ था वहाँ पे कि बॉयज. यार आई थिंक अगर खुशदिल को अगर थोड़ा PSL वगैरह फॉलो करो, उसने बहुत ज़्यादा मैचेस जिताए हैं. खुशदिल को मैंने PSL में फॉलो किया इसलिए मुझे नहीं पसंद वो. नहीं, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है. सिर्फ ऑल ही डज, I think- वो सिर्फ लड़ाइयाँ करता है. वो I like खुशदिल. I like मुल्तान की खुशदिल. टीम ना बड़ी अच्छी लगती है मुझे. लाइक मुल्तान की टीम को मैं लाइक इफ आफ्टर लाहौर आई सपोर्ट मुल्तान. नहीं, रिजवान शान उनके बॉलर्स भी बड़े टाइट हैं. खुशदिल इज द ओनली प्लेयर इन देयर हु आई एम जस्ट लाइक यार ये क्या कर रहा है. I like खुशदिल. क्या किया खुशदिल बेचारे ने? उसमें एक आकड़ उसने आई थिंक लाहौर वाले मैच में उसने फड्डा भी लिया था. उस आई थिंक तब से मैं उसके खिलाफ हूँ. मैच हम जीते थे. हाँ मैच आई बिलीव लाहौर जीत गई लेकिन होगी. खुशदिल में बहुत बस है कि हाँ क्या मसला है. आसिफ अली मुझे थोड़ा ना ज़रा एयर हेड भी थोड़ा सा लगता है कि बॉयज Yeah, 6 but or Asif nothing. Ali has like a great story. I don't know Asif Ali's story. I don't know what his story is. I'm not sure. Haseeb, can you confirm this Asif Ali story that Asif Ali also lost one of his children right before the World Cup? His daughter passed His away. daughter passed away. Yeah. Man, it's a tough job. And then to do it, also what? Sorry. sold his bike. Yeah. No, that you are. अब आखिरी 3 ओवर किस किस के रह गए हैं? राशिद खान के पूरे हो गए हैं, मुजीब के पूरे हो गए हैं, फारूकी के रहते हैं. नबी का एक है विच आई फील अगेन अब आई दो फारूकी और एक थिंक अभी तीनों ओवर्स ऐसे हैं जिस पे रन स्कोर फ्री. नबी को नहीं देंगे. हाँ, नबी को नहीं देते. नबी को तो अब नबी को देते हैं, जिस मर्जी को देते हैं. देखिए जी, वही बात है कि 4 गेंदों की बात है. लिटरली नहीं अगर देखो वही बात है आसिफ अली का भी कि लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो आपको अफसोस भी नहीं होता बिकॉज उसका काम ही वो है करना. आउट हो गया खुशदिल आ जाएगा. बेचारे मेरे खुशदिल में प्रेशर उन्होंने सही डाला हुआ है. अच्छा खेले ना. हाँ बट आई रेट हिम हाईली. आई रेट हिम. Oh, that was a Yeah, good out. Yeah, gone. Out. बहुत अच्छी बॉल करी है. खुशदिल शाह ने आज मैच जिता देना है मुस्तफा. रिव्यू लेने का फायदा नहीं ब्रो. unless कोई उसको लगा इनसाइड एज इनसाइड एज वगैरह उस तरह की जितना सोच रहा है तो आई थिंक रिव्यू ना ले.
ऐसे ले लिया नहीं इसने के लिए रिव्यू ले लिया दिस वुड बी आवर लास्ट रिव्यू आई थिंक एक पहले ले चुका कोई उसने लिया था रिजवान ने लिया सरप्राइजिंगली उसने बाबर ने नहीं लिया बाबर ने नहीं लिया रिव्यू अपने एलबीडब्ल्यू का या बाबर को पता होता है। बाबर ने मुंह ही मोड़ लिया था कि मैंने देखना ही नहीं है। बाबर यूजुअली स्निकों पे लेता है। गुड स्लो बॉल बहुत स्लो बॉल किस चीज का रिव्यू ले रहे हो भाई रिव्यूज आया करो यार until unless it's an inside edge but I don't think लग it is नहीं रहा कि इनसाइड inside एज edge but yeah I think काफी ज्यादा बैटर का ये दुआओं पे था। या तो नो बॉल गिरा दियो। नहीं नो बॉल तो वैसे वो खुद भी चेक कर लेते हैं there's nothing there यार yeah that's crashing into middle and like या uh, गुड बॉल। he's walking away यार क्यों रिव्यू बिल जाया किया I feel नहीं आगे आगे आ सकता। नहीं 2 ओवर नहीं है कितने 4 ओवर पड़े और 18वें ओवर में 17 ओवर है अभी। 17 पॉइंट को चल रहा है 18 पॉइंट 17 बॉलें 3 ओवर रहते हैं ना 17 बॉलें रहती हैं 17 3 ओवर्स टू गो ना और अभी आपके और बैट्समैन भी पड़े आउट आउट So Pakistan have made this match interesting. I still don't agree. Unless there's like one wicket remaining wala situation and this match is very much Pakistan. यार नहीं अभी it's highly likely Pakistan might not end up as winners in this game. I still feel कि तुम लोग अगर सोच रहे हो कि बहुत ही easy scene होएगा yeah you can I also believe it. I wouldn't have such arrogance at this time. I wouldn't have It's such not about arrogance, it's just that भाई, मतलब आसिफ अली खड़ा है Pakistan will अभी have to play really badly खुश and they दिल के can. अलावा कोई और होता ना तो शायद हो सकता था खुश दिल को हाईली रेट नहीं करते इतना नहीं अब हर बॉल पे नहीं होता। तू भी रिव्यू ले भाई Still has done his job. He's given the strike to Asif. And if Asif finishes this game in the next 4 balls, यार Kursil is going to be like, yeah, boys. नहीं बट एक सेकंड आई रादर हैव अ खुश दिल गिविंग द स्ट्राइक that was a बहुत like why did he take the review I think he's 1000 रुपया लगाना ओवर में और तू कह रहा है 2 छक्के होंगे 2 छक्के 4 बॉलों में तू शर्त लगा रहा है ओवर हाँ हमारा 1000 रुपया लगा हुआ है अब ठीक है डन हो गया इसकी स्ट्रीम हम 10 मिनट आगे थे। 10 मिनट आगे तो नहीं हो सकती। बता दे कौन जीता है ब्रो जब भी स्टेडियम में बंदा तुमने खड़ा किया। I know 262. अरे वहाँ से अब इसने कंटिजेंसी लगा दी है वहाँ से Even Azim is not willing to bet on him. क्या नहीं मुझे एक और चीज़ है कि like I love making these bets अगर 4 बॉलों में 2 छक्के लग जाते तो एक तरह मैं खुश भी होता और मुझे I love these bets कि मुझे खुशदिल ने भी आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जिताया था अभी रिसेंटली। खुशदिल ने इसने कोई मैच जिताया खुशदिल ने एंड पे नहीं ऑस्ट्रेलिया था। इंटरनेशनल भी जिताया इसने एट होम जिताया मैच में एंड पे आके खेला है। नवाज था या खुशदिल था? खुश दिल भी क्योंकि मैं तब हुआ था। खुश दिल पे इसने मैच क्यों जिता दिया? नहीं जस्ट अ सिंगल Keep on taking wickets. वकार यूनुस Asif Ali is here. 2 बॉलें रह गई हैं आपकी 2 बॉलें। अच्छा वकार यूनुस ओरिजिनली वाज फ्रॉम यूएई ही इज नॉट लाइक वकार यूनुस या उसका अगर आप यूएई नेशनल हाँ शायद हो सकता है He's got the Emirati passport. इमराती पासपोर्ट पता नहीं है कि नहीं आई थिंक वो पाकिस्तानी जो उधर सेटल्ड हुए होते हैं उन फिर आई थिंक ही केम बैक टू पाकिस्तान या कुछ तरह करके सी If he has a like कि बचपन इसका आई थिंक यूएई में था यूएई का बड़ा इंटरेस्टिंग रूल था अगर आप वहाँ पे पैदा भी हो आपको नेशनैलिटी नहीं देते वो सिर्फ विद इन फैमिली कैरी करती है नेशनैलिटी आपको वर्क वीज़ा या आपको रेजिडेंशियल वीज़ा दे देते हैं वो नेशनैलिटी नहीं देते आसिफ बैक ऑन स्ट्राइक tries to swing it just a single 20 runs from the last 2 overs. Most days I would bet on the batting side. Sumail is saying he wants in on this bet. The one that It's over now. अजी तू हार तो चुका है नेक्स्ट ओवर इस बॉल में छक्का 1000 रुपए इस बॉल में छक्का 1000 रुपए I think over में 6 बॉलें होंगी और जो पहली बॉल बैठ करा दे
अच्छा ये ब्लैक एंड वाइट क्या है? ब्लैक एंड वाइट का इधर वो जो ये Sponsor? इनकी ब्लैक एंड वाइट इनकी वो विस्की टाइप कोई चीज़ है जिसका ये वो सीडी कैसेट्स का वो प्रमोट करते हैं बिकॉज विस्की कर नहीं सकते. खुश दिल क्या जी. So Musa, No one rates him. no one rates him. आई टोल्ड यू गाइस हमें जो चीज़ सरप्राइज करेगी वो इनके पेसर्स होंगे. नहीं बट अगेन फारूकी bowling 3 or 4 overs जितने भी हुए हैं giving away 19 runs taking 3 wickets is very impressive. या ये क्या था? Inside edge onto the wicket. This was not a सुजान लकी अच्छी बॉल थी यार. Again bad short selection. मैन गॉट 1 ओवर टू गो बाय द वे. 2 overs to go. ही इज जो आपका से विकेट लिए ही इज गॉट 1 ओवर टू गो फारूकी. अब मैच फंसा. यकीन आ गया तुझे? कौन आएगा? इससे पहले नहीं फंसा हुआ था. जब आपकी थोड़ी टेल एक्सपोज हो गई फिर मैच फंस गया. रऊफ ही आएगा. रऊफ ही आएगा. दिस रऊफ फर्स्ट टाइम. Yeah, Asif Ali can end this match in this over. But again, हमेशा नहीं होता. हारिस रऊफ आया. कुछ दिल ने एक से अच्छी की है. उसने स्ट्राइक नहीं चेंज की. चल मुसा actually looking at the bright side at least. तो खुशदिल कैसे करता है वो. Exactly ना उसने एक अच्छी चीज कर दी इनएडवर्टेंटली. कैच आउट नहीं हुआ ना और लॉस्ट क्रॉसिंग कर लेनी थी. Still be a single justice. नहीं डबल तो हो नहीं सकता. तो बड़ा खुश होएगा कि आसिफ ऑफ स्ट्राइक चला गया. बहुत खुश होएगा आसिफ ऑफ स्ट्राइक चला गया. ऑफ स्ट्राइक जो चला गया आसिफ ब्रो. बॉलर खुश होएगा. नहीं बॉलर खुश होएगा ऑफ स्ट्राइक चला गया. क्या शॉट. नहीं सिंगल नहीं रोकेंगे अभी. मिली है इस वाले अपनी इनिंग्स में. पाकिस्तान को नहीं मिली पेनल्टी इनको भी नहीं आई थिंक मिलेगी. इन्होंने भी आई थिंक तेज ओवर कराए. हां 8 wickets down. Again मैच वाकई में फंस गया. inside edge onto the wicket. टॉइट मैच हो गया ये तो भाई. टॉइट मैच हो गया. अब like again The comments are going off on the fact that we are losing and how this is happening. यार कुछ नहीं होता. क्रिकेट का मैच है. कोई भी जीत सकता है कोई भी हार सकता है. जब स्टार्टिंग 11 में खुशदिल जैसा प्लेयर है और उस पर डिपेंड करना पड़ जाए तो फिर ऑनेस्टली अब तू शान चाहे टाइप बातें कर रहा है. ऐसे नहीं करनी चाहिए. But what I feel is that again it's the responsibility of the top 6 to Yeah. score those runs. At this point even if Pakistan loses it is the batting that failed उस मैच में सीधा and it would be a big huge win for Afghanistan and a huge loss for Pakistan as well. मतलब अब उसने थोड़ी तो पता था उसको कि उसने विकेट्स पे मारनी है बॉल. अच्छा नसीम शाह को भेजा इसने नहीं भेजा. और अगर दहानी जैसा हमारे पास लास्ट मैन नहीं हाय तो फिर दैट्स आल्सो कंसर्निंग. वो याद है एक मैच में वो PSL के शाहीन शाह ने आकर एंड पे 2 छक्के मारे थे. आई थिंक वो हमारा सेकंड लास्ट मैच था. हम उठ के आ गए थे उस मैच में से ना. केम बैक होम फिर सुपर ओवर हुआ था फिर लाहौर हार गई थी सुपर ओवर में. या हो सकता है. हाँ ये मुझे याद है. नहीं लेकिन बेस्ट प्लेयर जिसको ऐसी नेशनलिटी दे देनी चाहिए ना डेविड वीसे. डेविड वीसे 100% नेशनलिटी दे दो. आंखें बंद करके दे दीजिए. बेन डंक वो एक उसका सीजन था विद द च्युइंगम बट डेविड वीसे कंसिस्टेंट लाहौर का ना फिट प्लेयर है. That chewing-gum did He wonders. also looks like prime Umar Gul. डेल वीसा को उसके बूम बूम के ऐड में डाल दिया था उसकी वजह से. ओके गाइस अनूश बहुत Sorry अपसेट है. उसको. वी हैव टू वाइड है यार. अब मतलब क्या हो गया है. Will they check it? They will check it. Not run, take the review. ले लो Take the लो. review. Take the review then. ये अभी नहीं कहते. ले लिया. So now it can go either way.
नीचे पड़ा होगा। नहीं ले लो। I was just reading 10 facts about क्या? cricket. आ जाओ इधर आ जाओ। I want to No, please sit. Please. no I have to take a call whenever you I don't want sorry सामने से प्रेशर देखा नहीं जाता। ये अच्छा, अगर इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, रिव्यू में अगर नॉट आउट भी आता है और उसकी बॉडी को हिट कर रहा हो तो वाइड ये वाइड रोक सकते हैं। ओके, बैट तो नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। बॉडी पे चेक करेंगे। बॉडी भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं ये है। उन्होंने वाइट कुछ भी नहीं। उन्होंने उसको कीपर ने काटे के बाद अच्छा। Who's that umpire जो इस तरह करके आउट देता था? Anuj saying we chased 181 but can't 129. I think अफगानिस्तान श्रीलंका फाइनल हमसे नहीं हो सकेगा। अफगान श्रीलंका फाइनल भी थी, इंडिया वो भी हो सकता है। इंडिया कैन स्टिल मेक इट। हमजा who's that umpire? अनुज हिम्मत ना हारो, तो डैरल टफी था, आई थिंक। अभी भी टाइम है। All I did. एज गॉन। नहीं, थर्ड मैन खिलाया अभी इस आसिफ अली, पॉइंट पे आसिफ थर्ड अली। मैन होएगा। नसीम डूइंग आसिफ अली आ गया। व्हाट मोस्ट कांट। What Khushal can't you mean to say? Oh, ये उसने की थी स्ट्राइक तो आखिरी बॉल आउट हुआ था। अच्छा, आउटसाइड द ऑफ स्टंप पेस नहीं है बॉल पे। विन प्रोबेबिलिटी सारी अफगानिस्तान की साइड पे आ गई है। Easy boys. Beautiful shot. follow it. That's why this is send Asif. बेटे लास्ट बॉल थी ओवर की। नहीं नहीं, दो बॉलें हैं। दो बोले रहती हैं और 12 स्कोर ही चाहिए। बस इतना जगह, he knows it when he has hit it well. अब मुझे एक और शो को स्टेडियम से बाहर नहीं कि नई बॉल आ जाती। मारी है शायद आपने एक। हाँ, नई बॉल दे दिया ना फिर उसको। नहीं बट वो ओवर के हिसाब से करते हैं ना, उनकी बॉलें भी पर ओवर होती हैं। पीछे गई। आउट हो गए। Out, take Arsenal is it. gone. 9 down. जरूरत नहीं थी इसको। आसिफ यार Bros. किससे लड़ने के देना था? बैकअप पे आया हसन अली। No. Hasnain and Naseem. अच्छा, बड़ी फीलिंग आ रही है कि हम हार गए। बड़ी जल्दी आ रही है ब्रो। हमजा एक आखिरी बैट हारने या जीतने थे। हाँ, तो लग रहा है पाकिस्तान अभी भी जीत रही है। मुझे लग रहा है जीत जाएगा। अच्छा, कितनी हारनी है? हैं? कितनी लगानी है? थोड़ी कम। मुझे कम लग रहा है। The comments must be. They have lost all hope. Look at those faces. कर सकते हैं बॉयज, ये कमेंट आया हादिया का। कर सकते हैं बॉयज, अभी भी कर सकते हैं। अफगानी बॉयज के पाकिस्तानी बॉयज, ये कंफर्म कर ले। नहीं ये अब नहीं क्या नहीं, तुमसे ना ही होएगा? हमसे ना हो पाएगा। मुझे लग रहा है विकेट हो जाएगा इसको। नहीं अगले ओवर में उसने कोई और भी शॉट मार दिया। उसने भी बैटिंग की? I don't think so. No, I'm not sure. But again, the नहीं, fault, उसने की भी है बैटिंग। you can take out the nitty-gritties, but again, Asif should be better with selection of which balls he decides to go for. But again, you इस तरह के player को आप But I love how first ball he faces, And he's like, ऐसी की तैसी। yeah, let's hit that. Afghanistan definitely. यार उसी के अगर आप स्पॉट में बाहर जाते हैं ना ये अफगानी इन बेचारों थोड़े साइड हो जाएंगे। Slower one. Good change of pace.
इसको बजा देनी चाहिए थी मुंह पर एक, सॉरी नहीं करानी चाहिए, नहीं कोई गाली शाली दी है कोई उसके कान में, ये कोई हरकत तो नहीं ना करने वाली, वो कोई पंगा ना ले रहा ना कुछ कर रहा। ये चीज़ शायद इनको ले डूबे। नहीं ले डूबे ना ले डूबे, बट इट्स अनफेयर कि प्लीज लेट मी हैव माय होप। लेकिन अगला बंदा आपको कुछ कह भी नहीं रहा। एंड नहीं ऐसी भी चीज़ है कि आप अपने क्राउड के अंदर एक नहीं चीज़ आप आउट करने से पहले करो, अनसोलिसिटेड इस तरह की चीज़ नहीं। विकेट से पहले मैच जब चल रहा है, मैच गर्म है, तो आपको आउट कर लिया आपने एक दफ़ा, व्हाई डू यू वांट टू? Everyone can talk when they're up. माइकल जॉर्डन ने कहा था। असल में माइकल जॉर्डन ने कहा था। जी सर आई वांट टू सी इट ऑन वो उसकी डॉक्यूमेंट्री के अंदर Everybody can talk when they're up. Yeah, it's over. We're tight over there. That's six. It's a six. Six. It's a six. It's a six. बॉयज कर सकते हैं Again. बॉयज कर सकते हैं Let's take it easy. Yeah, no, Let's take it easy. nothing happened. Yeah. मुझे सांस नहीं आ रही, सिर्फ नहादार है। जिस बात से खेल रहे हैं सिर्फ आलू वाले चिप्स। Negative as always. Afghanistan will take the wicket. विकेट का हमें सीन ही सारे ये होते हैं, लगती है नहीं लगती। या अल्लाह वाइट बॉल चलो, नो बॉल नो बॉल चिक्का, नो बॉल थ्रो के नो बॉल विकेट पर मारते हैं। Again, it's 9 wickets down. Yeah. That's the stat that you need to look at. That if this was 5 wickets down, it would have been a completely different game. नहीं बट वही है ना, अफगानिस्तान लाइक वी डिस्कस था ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान आउट नहीं कर सकती पाकिस्तान को पूरा 10, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को कर सकती है। लेकिन लॉट ऑफ दीज विकेट्स वर टू एन एक्सटेंट अनफोर्स्ड एरर्स। अच्छा एडिटिंग नोटिस किया किसी ने डिफरेंस? Yeah. कि उन्होंने उसके बैट ऊपर करने वाले पॉइंट से दिखाया है। Out. नहीं that's big पूरी Ladies and gentlemen, Pakistan win it in under impossible circumstances. Pakistan win it. Pakistan. Pakistan win it under. Wow. This is Pakistan cricket. This is Pakistan cricket. This is what Pakistan cricket is all about. And get that bowler, bring him to the pitch right now, who is saying shit to my man Asif Ali. Bring him down to the center and put some words into his ear right now. And I don't give a shit about Afghanis right now because they were unsportsmanlike. What is this change in you? Unsportsmanlike. Anyway, No, listen. Whoever that player was, you can talk back game to when you're up, but listen. There is This a bigger issue here. MJ Who's this? देखो किस तरह भाग के आया है, Look, limelight he's में- at least enthusiastic. वो limelight में किस तरह है? Dude, the boy feels it. Do you think he's doing it for the cameras? Fuck that, sir. We're not talking about that. We're talking about that. Let's not talk about that right now. Ladies and gentlemen, the news is Pakistan has beaten Afghanistan in a last over thriller. Our man, Hasnain has Naseem. Naseem has hit back-to-back 2 sixes. The Just second. like Shahid Afridi. नसीम की स्ट्राइक रेट Against पता है क्या India. लिखी आती है? 0। And ladies and gentlemen, that is what Pakistan cricket is all about. This guy, Naseem, is our hero today. Not What a because just champ. he won a match. He won a match that we all thought was impossible to win at one point in time. Again, Hassan Ali and Bushdil are just cloud chasers. I think we should get over that conversation. I think let's not. That's a conversation for tomorrow. Guy, this guy, the guy with the mustache and mustache. Whenever he is in the team, Pakistan wins the tournament. You need to feel for Faruqi, who bowled really well. Yeah, especially the Yeah, second yeah, last yeah, over. yeah, yeah. I don't care about a single Afghani player right now. Agreed. That attitude against Asif Ali was like, I don't give. That reflects on the entire team. You've gotten a batsman out
Why do you have to talk shit to him? But you have to see that जो अफगानिस्तान का बॉलर है वो भागता हुआ अपने प्लेयर के पास गया कि हाँ नहीं उसने पहले आसिफ को हाथ लगाया, पहले आसिफ को हाथ लगाया. I what? उसने अपने प्लेयर को रोका, उसने आसिफ के नहीं, चाहे जो मर्जी हो, चाहे जो मर्जी हो, एक बहुत अच्छे स्पिरिट में अगर आप you didn't have this energy when we were about to lose. क्या bro, obviously you never celebrate too early, you never celebrate too early, you never celebrate too early, you never. इसने लगाई नहीं तब इसे रेट नहीं डिसाइड हुआ उससे थोड़ा सा काम तूने लगा तब. Come on Asim, you tiger, you're the champ, you're the भाग खुश दिल भाग, तू ही था वो, तू ही था. Go. जज्बात होते हैं ऐसे छलांगे मार रहा है. अब ये चक्कर एक बंदा हमारा गया किसी अफगानी प्लेयर के पास, कुछ कहा है किसी ने किसी को. Bro, come on यार. हम इधर बैठे हुए हमने क्या किया, हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. ठीक है, फॉर द टीम करना बनता है. एंड अगेन 2 दफा हो चुका है इन दैट इमाद वसीम ही नाम है ना खब्बा हमारा. इस मैच में उसमें भी अफगानिस्तान केम वेरी क्लोज एंड इस मैच में भी 2 sixes बैक टू बैक. जो भी हो यार, उस प्लीज उस बॉलर को लेकर आओ जिसने सेकंड लास्ट ओवर कराया. हाँ ओवर चला गया, उसको लेकर आओ, उसको सेंटर में लेकर आओ, उसे को सही हुआ है, ठीक हुआ है तुम्हारे साथ हैं. लेकिन आज के चैंपियंस हमारे यंगस्टर्स हैं Bro, पाकिस्तानी Naseem youngsters shot who have put down on a the show. line, right? Honestly speaking, वो इंसिडेंट हुआ था, I would feeling bad for these guys, but जाओ जाके रो, कोने में रो, अभी स्क्रीन टाइम ना लो हमारे प्लेयरों का. Look at how he's consoling him. Bro, ठीक है ना, आपस में खेलते होंगे, दोस्त यारी होएगी, बट हमारी तो कोई नहीं Beautiful. है. I'm saying beautiful. हाँ नसीम भी यही कह रहा है, नसीम भी ये कह रहा है कि आओ लेकर आओ उस लड़के को लेकर आओ. नसीम भी ये कह रहा है उसको लेकर आओ. Naseem was probably on pitch जब वो हाँ नसीम ऑन पिच था जब ये हुआ है, और लिटरली उस प्लेयर ये बॉय, ये मूंछों वाला बॉय, ये जब भी टीम के साथ होता है ना, टीम को ना कोई टूर्नामेंट जीती. आई थिंक ये 92 में भी था, नॉट इवन जोकिंग, ये 92 में भी था, ये 92 में भी था, ये अफरीदी वाला वर्ल्ड कप जो यूनुस खान कैप्टन था उसमें भी था, और आज भी ये. बट गाइस what this again much like we said earlier, we were discussing earlier, I would have taken an easier victory. तू चाह रहा था मैच में जानो, मैं चाह रहा था मैच में जानो, clearly this was clearly an interesting match. बट वेरी इंटरेस्टिंग. तू चाह रहा था इतनी जानो मैच में. Honestly no. एक तो मैं बैट हार गया, तो मैं इतनी नहीं चाह रहा था, लेकिन और आखिरी इसके बल्ले पे भी नहीं आई. समझ रहे हो, आखिरी we're भी not even sure it's a six. ब्रो ऑब्वियसली ब्रो नो वन शुड. I had a गई है ये दुबई में होता तो छिकाना होता ब्रो. ये वही वाला जो अफरीदी ने जो छिका नहीं मारा था अश्विन को, वो भी 2 छक्के इसी तरह टॉप पैच हुआ था और वो छिका गया. शायद अफरीदी में ब्यूटी. अच्छा मैं वैसे इनकी जगह होता ना, मैं तो आकर सेंटर में ये भी कहता, नसीम जैसा ही मैं को मुझे होता ना मैन ऑफ द मैच का, एक मैन ऑफ द मैच छोड़ो, उस लड़के को लेकर अफगानी को. What do you think the man of the match is gonna be? नसीम शाह ब्रो बॉलिंग भी बहुत अच्छी कराई, और आखिरी मैन ऑफ द मैच अगर कोई Look है at that. नसीम शाह ही है, और कौन है. 14 of 4. बट अगेन फिगर्स वाइज किसने कराई बॉलिंग अच्छी? आई थिंक नसीम शाह ने बहुत अच्छी कराई. और अंडर 5 नसीम शाह जिस जो तू कह रहा था कि इसका 0 स्ट्राइक रेट था, इसका स्ट्राइक रेट अब देखिए. 1 wicket for Naseem Shah for 19. Yeah, in 4 overs. So he's the man of the match clearly. हाँ लगा दे कुछ. या पुट अ पोस्ट पाकिस्तान बीट अफगानिस्तान एंड पुट ऑन 15% ऑफ. मैं तो कहता हूँ 25% ऑफ लगा दे. खैर है लोगों को मुफ्त का दो यार. मुझे इतनी तप चढ़ी हुई है उस बॉय पे, इतनी तप चढ़ी हुई है, तो सोच भी नहीं सकते उस बॉय पे कितनी तप चढ़ी हुई है. Clearly you were controlling it while the match हाँ was ब्रो still on. आई वाज रियली, मैं शारजा में होता भी तो मैं बजा रहा होता उसको, पहुंच होना था उसको, फरीद बाहर अहमद. निकल. बट फरूकी आई फील फिर हम अच्छी बॉलिंग करवा रहा था. Unlucky रहा. Yeah, because this यार 17 नहीं over बस he एक bowled, he अच्छा was- टेक्निकल बात करो. बेवकूफ़ी या फुल पिच यॉर्कर कराने के चक्कर में दो हो. दो यॉर्कर आपने आपने बैक टू बैक नहीं आपने शॉर्ट लेंथ पे बड़ी आसानी आसानी से और विकेट भी ले लेते थे. टॉप पे हो जाता, बट कैच चलो हो जाता. नहीं विकेट गिरानी नहीं गिरानी, बट जो भी चीज़ है, बट कैप्टन इस टाइम पर आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है. कैप्टन शुड हैव कम इन एंड सेड Especially after the first 6 ना, he should have. Naseem Shah is on. Look at the smile. Beautiful. ये Dude, पाकिस्तानी यार, एटीट्यूड, छक्के तो मुझे मारने आते. See the bowlers understand.
किसी ने चैन कुली की मैनकुली देखी है? उसमें उसके पास कपिल देव का बैट आ जाता है जिसमें बिजली होती है। ये आई थिंक मुझे इसका वो पता है, प्रेमिस पता है, ये रिप ऑफ है किसी इंग्लिश मूवी का। वो नहीं, वो लाइक माइक वाला, वो माइकल जॉर्डन के उसके पास वो आ जाते हैं, स्नीकर्स आ जाते हैं, और वो नाइकी स्पॉन्सर्ड होनी है पूरी मूवी आई थिंक। Hello ladies and gentlemen, welcome to the post-match show of PCFC Pakistan Cricket Fan Club. Guys, wow. Unbelievable game. After the first innings, we weren't thinking it's going to be a last over thriller, but it was. Thoughts on the second innings, buddy? I know I didn't play, but I would just like to do a sajda. because मुझे तो लग रहा था कि यार जीत जाएंगे। He was willing to put money on it. Yeah. उसने बताया नहीं कम ही लगाऊंगा मैं, मुझे इतनी strong feeling नहीं आ रही, लेकिन But the last six was very shocking for all of us. I think बहुत second innings जो थी वो then again हम चाह रहे थे मैच इस तरह का इंटरेस्टिंग हो। we've been watching the match for like 4 hours और बीच में काफी dead patches आए हैं। बिल्कुल This was good for us but not for Pakistan Yeah. players and the team. For the Indian fans, because I think between the 18th and the 19th over, हाँ. एक उनको बहुत sense of false hope मिल गया था। 2 सेकंड के लिए False hope तो नहीं कहूंगा मुझसे उसको, वो genuine hope था। False hope अब एंड पे false End पे false hope था। तो बट उनको आई थिंक सही फील आई थी कि यार वैसे ऑनेस्टली रन रेट कोई पता नहीं, बारिश भी हो सकती है, लाइक उनके दिमाग में ना या सारे सिनेरियो आए होंगे। Sharyar, your thoughts about this I've been game? with my team since minute 1. I know that I knew that Pakistan was going to take this one fighting. Outro करेंगे ना। इतनी लड़ाई करनी थी इसका मुझे नहीं पता था, लेकिन आउटकम वही है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और All's well that ends well. all's well that ends well, man. You want to do an outro for us? क्या खत्म कर रहे हैं लाइव हम? I think yes we. पोस्ट मैच होने तो देना, थोड़ी सी बातचीत वगैरह करने तो। हाँ पोस्ट मैच तो करने दो भाई, हमारा प्रोड्यूसर कह रहा है शो खत्म करो, पोस्ट मैच की तो व्यूज आते हैं भाई। ऐसे हमें निशान आ रहे हैं पीछे से। पीछे से हाँ ऐसे निशान। We won this match. The Seam Shah played really well. We're really happy with the bowling. Batting is extremely concerning. It is to a point now where you would not expect a Pakistani team which we have such stars, Babar, Rizwan, Fakhr. I know you do not rate the middle order highly. Shadab played a decent innings today. Iftikhar played, run a ball 20-something or 30-something. Going forward, all of this is practice for the T20 World Cup. If you, as a Pakistani fan right now, are you concerned? Okay, so honestly, मुझे ये भी लगता है कि अभी जो बाबर की फॉर्म की वजह से, सिंस हमेशा से नहीं, जब से ये बाबर रिजवान ओपनर्स आना शुरू हुए हैं तो बहुत ज़्यादा ये होना शुरू हो गया था कि मिडिल ऑर्डर इजी हो गया था। तो आई थिंक इससे इनको ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि अगर हमारी पहली 3 विकेट्स गुजर जाती हैं फ़खर, बाबर, रिजवान, तो मिडिल ऑर्डर ने जैसे शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ संभालते थे ना मिडिल ऑर्डर को, हमें वी नीड दोज पीपल इन आवर टीम फॉर द वर्ल्ड कप, स्पेशली फॉर द वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप में इस तरह शुरू की विकेट्स गिरना। So what you're suggesting is कि हफीज़ और मलिक को वापस बुला लिया जाए टीम में? मेरे I mean we भाई have इधर आकर बात करो ना, उधर से उसको तो बात करना, तो पीछे से voting for Shan Masood. Shan Masood is a good option, but But Shan Masood is someone again who is an opener. फिर आप openers के ही आपके नंबर 4 तक जा रहे होंगे। But the thing is, your Babar Azam can play one down. मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लगता है कि बाबर आजम को वन डाउन आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंट इंटरव्यू में मोहम्मद हफीज़ ने ये बोला है And started कि with should Rizwan also was playing much lower down. नहीं, But Rizwan is a good would opener. you change a combination this late? Would you change a combination? Because Pakistan has been playing with this combination for a long time. Do you think it's the right time to change a winning formula? Yeah, but you can change the winning formula, and clearly the winning formula isn't winning right now. The team is, but the formula isn't working. ना आपकी bowling ने आपको बचाया है मैच, literally batting में भी आपकी bowling ने आपको बचाया है आगे। सी बात हुई है, अगर हम थोड़े टेक्निकल स्टैट्स पे होके बात करें तो बाबर आजम के स्टिल 7 से 15 ओवर तक स्टैट्स जो हैं वो बहुत ऊपर है। उसमें हाई स्कोर्स किए हैं उसमें। ही डिड वेल कुछ अरसा जब तक वो ओपनर आता रहा है, लेकिन आई स्टिल थिंक उसको, क्योंकि फ़खर जब तक ओपनर आता रहा है ना, वो पावर प्ले ओवर्स उसको चाहिए, स्पेशली फ़खर को, क्योंकि वो बाबर आजम से बेहतर हिटर है। बिल्कुल ठीक है।
लॉजिकली मैं बात से एग्री कर रहा हूँ, उसकी समझ भी आ रही किस वजह से आप ये कह रहे हो. मुझे बताओ फिर क्या नाम लेते हैं, एंड शरियार और मुस्तफ़ा यू कैन टेक दिस क्वेश्चन. 1 2 3 4 5 till 6 क्या फिर लाइनअप आप कराओगे चेंजेस करके? ओपनिंग अगर आप रिजवान और फ़खर से फिर कराओगे, फिर किस तरह आगे होएगा? यार रिजवान फ़खर से ओपन करवाओ, या बेशक इफ यू वांट टू इवन गो विद रिजवान फ़खर, रिजवान बाबर फ़खर जो आपका सेट 3 है वो आप रखो. शान मसूद इज एन अडैप्टेबल बैट्समैन. You bring him at number 4? You can bring him in at number 4 because the thing is that issue I feel like जो भी आता है, Fakhar comes in one down, Babar's form is off, Fakhar comes in with some pressure on him, and every time he doesn't perform, that pressure increases. Shan Masood during the entire PSL, one thing I've noticed is that Pressure handler. But Shan Masood then replaces Iftikhar. Khushdil Shah. You replace Khushdil. Khushdil leaves the team. Never comes back. Yeah. You keep your Asif. You keep your. You need क्या Asif. नाम है, Nawaz. You keep your Shadab. I think even Iftikhar, even you mentioned your. I think again, I think it would come down to Iftikhar and Khushdil. One of them would have to One of lose them their have to way. कि Asif को आप like you have that 6 hitter in Asif, you would not want to drop him. Like Pakistani उससे भी. You have a 6 hitter who can also slow down the pace of the game. It's a 129 And वाली also game with है. Shan coming in, then you would have a left-hander for a left-hander coming in. Yeah. 129 वाले मैच में आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो आएगा, अगर आपने 2-3 विकेटें अर्ली लूज कर दी हैं, उसने अगले 10 ओवर उसने स्ट्राइक रोटेट करनी है, उसने रन रेट को इतना क्लोज ले आना है कि even if this mishap happens ना, it's not 12 from the last over, it's 7 from the last over. Which Iftikhar was unable to do. Iftikhar was able to hold the wicket, but वो run rate को बहुत affect कर रहा था. 35 बॉलों पे वो 33 करके गया. But again, I would still make that argument. Honestly, मैंने इफ्तिखार को मैं इतना हाईली रेट नहीं करता वो उस तरह अगर, but he is someone that the captain likes. ठीक है. At the end of the day, I think the question that you need to ask: are you going to play Babar's 11 or what one may perceive as the best 11, right? Then the question comes in कि आप कैप्टन पे रिलाय करते हो या सिलेक्शन कमेटी या बोर्ड पे रिलाय करते हो कि जिनको खिलाना चाहिए. So that becomes a bit tricky. Talking about today's match, we cannot talk about today's match without talking about the bowlers. जिस तरह मुस्तफ़ा ने कहा, बॉलर्स ने बॉलिंग में भी जिताया और बैटिंग में भी जिताया. शादाब की इनिंग्स, वी हैव टू गिव शादाब क्रेडिट. दैट 30 some odd something at a strike rate of 130 140 was excellent. They're about to start with the match ceremony, so we will also see what Babar and the man of the match has to say. Afghanistan and Pakistan, which will go down as one of the great games in T20 cricket, a finish that you'll remember for all your life when you look at this sequence of events. The Asian Cricket Council would like to thank Sri Lankan Cricket, Emirates Cricket. So guys, I think we can wrap up the post-match. I think ceremony हो रही है. Thank you so much for joining us, all of those who have. We will continue to cover Pakistani matches throughout the Asia Cup and also the future series that are coming, and also in the World Cup. I hope we have more exciting games like this, and we hope Pakistan continues to win. That's all from us. Would you guys have any? Please subscribe to our channel. Subscribe, like, and do all that crazy stuff. Anything you'd like to say, Mustafa, to the millions and millions watching at home? I don't think we still deserve this. The team. And that's my only thing I need to do. I think also in the comments you guys should let us know what are the things that we could do to make this. Make this better. Cheers, guys. Have a great day. And thank you for all those who joined us. Cheers. Have a great day. Allah Hafiz.